of this exploration. The Professor and Yes, sir. okay. In philosophy, please come. To the talking about artificial intelligence has emerged or certain perspective. Relationship. From the Indian perspective, from the vision that and uh,
circumstances to replace you could say, especially in the health perspective. Or some transformational word, every that we have stopped using our questions of suspectability. Towards technology that infrastructure handling part. Algorithm has its own limits. It should be limitation. When we try to know anything, we know the substance into it. And in relation to it, Jain is phone it is. Okay. As well is not we see according to the tattva AI from this perspective. Qualities like human being, consciousness also raise, but
and its our material science ruin use of knowledge must be brought to bear in exercise in which also says we mentioned that on place in which situation that is very important. With the potential to change views, not only about the structure of technology of diversity. Okay. I will the consideration of AI. When I'm talking
पे हम वेस्टर्न spiritual to show to address epistemic fragmentation in contemporary education. So first of all, we will start with the problem. Epistemic fragmentation and knowledge presented as disciplines. With it, by this, learners struggle to integrate perspective. इससे बच्चों में confusion आती है. फिर navigate disagreement. वो dogmatism को face करते हैं. Reflect on the limits of knowledge. और why does it matter से क्यों मैटर करता है? क्योंकि जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो it leads to dogmatism. Dogmatism research perspectives सबसे पहले क्वेश्चन नए क्या होता है तो नए इज अनेक धर्म एक क्योंकि उसमें
बताता है कि खाने में क्या दाल सब्जी डिस्ट्रीब्यूट है। वो है एग्जाम्पल भी दिया हुआ नपुंसकलिंग है। मतलब होता है यूसेज स्पेसिफिक, जैसे कि गाय, गाय बोलते ही हमारे दिमाग में आ जाता है धेनु मतलब गाय, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है कि क्यों आता है, क्योंकि हमारी रूढ़ी से गाय कैसे implement होता है। एग्जाम्पल कि नहीं ये हैंडल ऐसा भी होता है, ये ऐसा भी होता है। इसी तरीके से जो सूत्र कि आप डिफरेंट हो जाता है। जो हमारी ट्रेडिशन यही है कि
अकॉर्डिंग क्लास है कि तो अलग अलग को समझ सकेगा। में आप सकते हैं क्वेश्चन। तो स्यादवाद और नएवाद में ये डिफरेंस होता है कि स्यादवाद कि भाई ये पर्सपेक्टिव है, ये हाँ है कि बच्चे को अपने ऑब्जेक्टिव बात क्या है? विकास बात को जानते हैं? क्या है? किस नए में आया कैसे समझ को दिया था कि आप बोल रहे हो जो वाला होता है, लेकिन इसका अर्थ होता है गमन करने वाला। वैसे ही यदि आप सीता बोल रहे हो, रूढ़ी से चला रहा है कि सीता माता है, लेकिन उसका नेम सीता है, तो वो व्यवहार रहे में आएगा। The gender. So that these are different theoretical perspectives. We see them. Yes. Put to the students Yes. when they go to the next class. Again, they will again have to memorize gender. The framework to understand. और उसके बाद सिर्फ आपको कोर्स के लिए नहीं हो, आप जनरल लाइफ अभी भी हम देखेंगे, हमारे सामने एक सिचुएशन शॉपिंग करते हैं हमारे साथ
next paper is Praveen Kumar Yadav. So now invite paper. Is all the team is student. के बारे में कुछ बिल्कुल नहीं पता। When you understand you होता है छोटा सा होता है और आपको वहां रखना पड़ता है, यहाँ रखना पड़ा और स्टडी करने आपको टाइम रखना पड़ता का जो कॉन्सेप्ट है कैटेगरी कैटेगरी क्राइटेरिया उससे करके आप एकदम अलग अन्य कैटेगरी को जज करें। एक कैटेगरी को रूल्स नॉर्म्स वगैरह लेके एक अलग से हट कर जो कैटेगरी है उस पर जब आप निर्णय करेंगे जजमेंट करेंगे ज्यादा कैटेगरी भारतीय ज्ञान ऊपर भी ठीक इससे भयंकर कुछ इससे भयंकर हुआ नॉलेज ट्रेडिशन पूरे राशि के लिए हुआ वो भी में है विश्व
में अंधेरा ही बताऊंगा। लोग आते थे, ज्ञान का संस्कृत सीखा, माध्यम से सीखा, वापस गया। क्या वापस वो के प्राप्त किया तो पूरा विश्व जहां ज्ञान कुछ में केंद्रित है। एकमात्र संस्कृति है या हर क्षेत्र में इन्होंने यहाँ आकर सीख गया, उसी पर उन्होंने आगे मेरी जो भी लेटेस्ट तो ग्रीस है। आपने देखा प्लेटो का जो रिपब्लिक है, डायलॉग रूपेण लिखा है। डायलॉग रूपेण कुछ लिखने का जो प्राप्त कहां से क्यों बने, ज्ञान को
paper. Okay. Right. This is not available to different words. The jet in Bharat and after that informed Vedas and also reacted. Coexistence of we have that the creation there is no competition. It's absolutely and plural. You know, they all go. Namaste. Jai Bharat. Any question for you? Your Every oh, question? So, and thank you. coexistence. Any more questions? उत्तम online paper. श्वेता कुमारी
next Yes. Can we little bit of my paper to orient it towards the education, transformation of education. How does this can be applied to opt out? So what I'll be talking about is Jain ethics can be applied over there. Not as falls under the STEM and social sciences, ethics. Over here, see. Focus function later claim that here's where Jain ethics like why Jain ethics they are I would rather say that it's of about it asks not what can be done or what should be restricted. In principles, I mean, of course, Samyama can fall under
translated stations. Why I believe exams or even how habits may spill over into healthcare, finance, and governance. So, like, beyond physical harm. Of course, Jainism always says educational AI be assessed the nation gap, it should support dialogue. I'm not talking apply this. Syadvad we know. So problem with AI or any computer related, even hardware, it definitely challenges binary logic. So more these are all binary cues on society. Fear ambiguity. The answer will be yes and no only. So Jain require and it should cultivate now this is very relevant. There is no distinction over there. What Abhi rejects defined.
teach us. Samyama is this all learned in education. So we will accept in hospitals and banks. Provides an enabling framework for ethics. Through Jain, NEP becomes an upstream globally, like United Nations, development seamlessly. That's Jain ethics. That's what innovation, Sangeeta technical ma'am, systems. please Jain, conclude your yes, I'll come more slides. Jain ethics provides the normative for India or globally. Complete your 10 minutes. AI governance must be in curricula, not just in codes of conduct, regulation. That AI governance cannot be Do we last at least 5 to 10 Yes. years? So in your corporate yeah. Okay, thank you. yeah. So next presenter. Hello.
Yes, yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Your paper. आप सुन पा रहे हो मुझे? Yes, ma'am. तात्पर्य क्या है? जैन में संदर्भ में किसी के प्रति इस स्वार्थ जाते ऐसी आध्यात्मिक विश्व में विभिन्न प्रकार का मूल कारण आध्यात्मिक से अनिवार्य है। मन कर्म और वचन से पालन ना तो हम पाएंगे कि ग्रंथों में बीच की जो अगर हम धर्मों में पशु जिस देश समाज और संस्कृति में अहिंसा का भी विकास होता है, चाहे कोई धर्म के आवश्यक देखें वाणी भूतानी सभी मित्र से चक्षु सभी व्यवहार करना चाहिए। वेद उम्मीद करते हैं हम आशा ज्यादा जोड़ देते हैं और उनका ये मानना है कि इसमें मतलब हमारे पेपर में हमने इसमें पर्यावरण इसमें जो अहिंसा हमारा जो प्रदूषण हमारे अग्नि वनस्पति जीव का वास होता है ऐसा
अहिंसा सत्याग्रह आदि पर संरक्षण जो है इससे पर्यावरण का संरक्षण होता है, जैसे कि जैन दर्शन में अपरिग्रह के सिद्धांत को अपना विश्व को संरक्षण से बचाया जा सकता है, जैसे कि हमें मनोरंजन और ज्ञान आदि के कारण पेड़ पौधों को सत्य व्यसन और पर्यावरण संरक्षण भी है यहाँ पे, जैसे मांस मदिरा चोरी ये चीजों से हम संरक्षण हैं पर्यावरण और कि जैन दर्शन का पूरा आचरण। थैंक यू मैडम, मैंने अपने पेपर को बहुत थोड़ा समराइज करके बोला कि ठीक है। ओके, one question for okay. आपने कहा है धर्म में जो कहा गया है सत्य अहिंसा को कोई प्रयोग नहीं करेगा, किसी को बाध्य करके तो हम उससे काम नहीं करवा सकते। अगर किसी चीज को बहुत हम लेके आए अपने वातावरण में उसको और उसको थोड़ा समझा के किया जाए तो बात को अभी मैंने जो भी वो लिटरेचर के हिसाब से जो पेपर मैंने रेडी किया था, लेकिन मैं अभी उसमें थोड़ा इंक्लूड करूंगी किया जा सकता है। Okay, thank you so much. Next Mahendra Kulkarni online here. Okay. Yes. For today is learning through Ahiṁsā perspective. Jain positions on ethical book, in its scope from physical non-harm to domains of speech and action, including transmission and reception. We can say this. Can say such in the Jain manuscript culture, which are the manuscripts are written on like Dadapatra or these manuscripts are found in the languages like Shravasti, Mudabidri, Pata and many other languages. On this in a
meditative form. For manuscript is done by a breath, and the violent test of writing on manuscript is completely avoided. Let's say we are system is the so basically production, handling, presentation, and study induce learning with Ahiṁsā, mindfulness, ethical, historical examples, which suggest that working with physical learning materials can help address some problems in learning, can address some problems in education, such as intense competition and constant screen use. The hands-on learning, how the hands-on learning encourages patient concentration is one of the prime aim of this paper and the study as well. So, if we see the manifestation of Jainism is dated back to 2nd century BCE, in Western India with over 1 lakh extant folios in libraries like Ravasti Bhandara. Palm leaves, Bhurjapatra, have served as a foundation which was prepared through eco-conscious rituals. Many a times the scribes who used to write the manuscripts were the devotees all under it is stated that breathing was techniques such as meditation or use of ghoda ensures atmosphere and other things, which was embodying most prominently the monasteries or the pathshalas or the mathas, texts were transmitted. In many traditions, we can see that the interpretation was given on oral that a strong, we can see that a strong as an use of sense of respect for the text. So here I have given a table where I have certificated script production, where you can see that during the liquidation for related to pramana, which is free of mindfulness, no help. Like you can't write anything in help. Everything has to be written in the best manner. So inscription was transferred to ethical discipline by the Jain scribes. Styluses are sharp and without tearing leaves. Without tearing leaves, the styluses were so sharp to have a smooth surface. So writing this was related to the used ensuring non-horizontal circulation. Protocols. Always before handling a manuscript or even touching a manuscript, purification
paste or sandal juice was important while touching manuscript. So, as I've stated in the paper that manuscript handling often began with washing the hands to prevent damage from any dirt or and also symbolic encouraged calm posture and careful page turning, reducing wear and fragile leaves. If we used to turn in a haste, there was a possibility like the page may break or into pieces, but it is very fragile in nature. Lighting and quiet surrounding was supporting reading and reflection. If there was any chaos around in Dara, there was no concentration for reading a manuscript, which is the utmost needed thing. Is needed where digital situation has seen. Also, century long, century long, century long knowledge where we need to take most care of whatever we are preserving. But digital screen is ephemeral files. A focus is needed to writing any manuscript, but digital screening there are multitasking. Like there are many distractions while we are reading anything on the digital screen. Now we are studying the brain, but while studying a manuscript, other things which are needed. Focus. The weight and fragility of material is placed naturally. Theories already learning how material management can support awareness Ma'am, also conclude your also shaped around close Guru Shishya Parampara, which was seen in the manuscript tradition. Today, but not the of that quality which was seen in the earlier days. In contrast, many modern examination systems rely on a trace and narrow learning goals, which was not seen in the manuscript tradition. So, in modern applications, like for the proposals of Ahiṁsā and pedagogy, we can see that elements of Jain can be meaningfully adapted to contemporary contexts. For example, manuscript labs could be used where students experience writing with handwriting, traditional paper, or cultivate patience and develop concentration. In the modern applications and proposals, it is suggested protocols can be adapted by the pilot programs preparation study to reduce anxiety as evidenced by if the student work could be curated community violence. Policymakers should fund maternity labs reviving Ahiṁsā to humanize the
should integrate. So I would like to conclude by saying that study is very useful. Thank you. Thus, I would like it is to be protected. And if you use pesticides, so if we like a thing, would it be strictly a Ahiṁsā? So if there is any way to do something which is called Ahiṁsā, or Ahiṁsā means vicious. Natural resources you preserve to protect it, to preserve it. Only 1% of the manuscript area is used for chemical, because it can be because any application which is applied on a manuscript preserving it should be reversible. Any action we take on that, it should be reversible. So for Ahiṁsā, I guess manuscript. Can be given in today's world, or writing as such with paper and pen, and also preserving that and creating that culture of physical products. So I was wondering, you talked about the Jainism and the methods that are used in writing and as well as preservation. So was this different from other sects? Kind of writing instruments. As of digitization, that it can be protected and also kind of distributed to people who are wanting access the manuscript. Right? So very briefly. Consideration we have many Buddhist manuscripts as well, but most of them are in China, Korea, Japan. We have a lot of Buddhist manuscripts with us. We can get them in Nalanda. Rate of Jain manuscript preserved. So there are many Jain manuscripts which we can find in India. There are Bhandar, name a few big Jain manuscript Bhandar of Jain. We have an institute of Jain manuscript who is working on preservation, translation, transliteration, and digitization of Jain manuscript. So there are many. Rate of a manuscript. So there are digitization is a prominent thing which is being used to preserve the knowledge of manuscripts. But if you want to handle physical state of a manuscript, so there are many other natural preservation things that are going on. You first need to control the atmosphere where the manuscript has been kept. So
so that the atmosphere moisture doesn't damage the manuscript, it doesn't invite any insects or pesticides. And other things like you can keep dried petals of marigold flowers or dried leaves of neem and tulsi around the manuscript, so that it doesn't attract any insects. You can keep the manuscript covered in a red cotton cloth which is starch free, or a cloth which is yellow color, or which is pressed and dried, and then you can attract any insects. And there are other things like or using chemicals in a very small amount in the room where the manuscript has Okay, been thank kept. you. Thank you so much, ma'am. Next presenter is Dr. Swastika Jain. On Swastika Jain. Then next is Shyamlima Borgohen. Okay, namaste. Good morning to the from University of Ahiṁsā and the ethics of commonly occupied a central position in philosophy. While it is often associated with moral discipline, its philosophical significance extends to broader ethical concerns. This paper sees Ahiṁsā as an ethical framework of deep ecology. Although both fields engage with questions about the moral and bioethics an anthropocentric focus, whereas deep ecology emphasizes ecocentric perspective. The paper is an attempt to bring Jainism into a dialogue with thereby exploring the core principles of bioethics and deep ecology in the philosophy of Jainism. At the heart of Jainism is Ahiṁsā, meant to avoid harm to all living beings, not just humans or soil. Pollution of these elements, treating them as protected. Ontological equality of beings forms of gender and environmental ethics. Violence or hindrance is not merely physical but ontological disturbance of another being's existence. Environmental destruction is seen as a form of violence. Deforestation and habitat loss violate Ahiṁsā. The general principle extends beyond human experience to include non-violence and compassion for all, fostering a strong ecological ethics. Bioethics, a Western humanistic discipline, expanded beyond healthcare such as hospitals and laboratories to include environmental mainstream bioethics remains focusing on patients' rights, informed consent, access to care, and fair distribution of resources. Environmental issues enter primarily insofar as they affect human health, example, exposure to climate effects on disease. Deep ecology, by contrast, is ecocentric. It treats species and landscapes as moral subjects in their own right, allowing decisions to limit human convenience and protect non-human communities. Jain Ahiṁsā, which forbids of beings by strictness than to typically bioethical trade-offs. Deep ecology, developed by Norwegian philosopher Arne Næss, the integrity of bioethics, irrespective of the possible benefits to humans that might flow from doing so.
opposing mining projects in agriculture and all other activities, habitats and displaced communities. Deep ecological ethics include the well-being and flourishing of human life on earth have value in themselves, richness of all the and calls for the transformation of human-nature relationship. Jain offers a parallel version through its conception of self or jiva as bounded, vulnerable, and permanently entangled. Protecting the ecology is a spiritual journey, not merely an external moral stance. Human-centered environmental thought yet has its own limitations. It has influenced environmental philosophy, political ecology, and eco-spiritual movement, which while it focuses on repair being occurred, whereas Jainism focuses on ethics based on restraint rather than expansion of the self. Jainism is broader than deep ecology because deep ecology is primarily an environmental philosophy that aims at sustainability, whereas Jainism is a comprehensive spiritual, ethical, and metaphysical system in which ecological concern is only one dimension. Jainism's spiritual framework is complex, distinct, and wider from modern ecological theory. But a relational mode of being, restrained, withdrawal, sustainability models. In nature is romanticized, preventing nature for becoming an object of emotional that despite the availability of extensive theoretical knowledge, why is it so difficult to achieve practice? The answer lies in the fact that ignorance prevents one to see the jiva in the other. The failure to see jiva not only in humans or animals but also in other beings. Every soul requires consciousness and are really alive, differ only in the degree of consciousness which is due to the karmic obstacles. The jiva or soul is inherently pure, endowed with infinite knowledge, perception, and bliss. However, true nature such as anger, greed, and pollution. These passions bind, the cycle of birth and death, leading to the response of Jainism emphasizes that violence inflicted upon others is simultaneously violence against one's own soul, as every act of harm intensifies karmic bondage and further veils spiritual awareness. Succumbing to passions thus results not only in external injury but also in profound self-injury. So, as stated, in Jainism, non-violence and kindness to living being is kindness to oneself, for thereby one's own self is suffering and is able to secure one's own freedom. To arrest this process of Ahiṁsā, Brahmacharya, and Aparigraha, which together function as discipline practices for overcoming ignorance, restraining passions, and advancing. You have 2 minutes. So, this is basically the concluding part. So, Ahiṁsā, which is basically restraint from harmful activities of body, speech, and mind. When we apply this in environmental, is reprehensible, not only for suffering, but also because the session in the part of the killer.
etc. Austere, which is non-sting, in the environmental aspect, clearing of forests, rob them of their residence. Brahmacharya, it broadly means discipline over all senses. Of every other possession. In an environmental aspect, it means on environmental protection, sustainability, interconnectedness, and ecological responsibility reflects an expanded worldview that resonates with Jain Aparigraha Sarvapagraho Jivanam. We are not individuals, but we are interconnected with one another. Parshwanath Jivanam. Call to action emphasizes gender. This can only be achieved when there to ethical choices enables individuals to eat family friends, and this can extend to society at large, gradually improving the health of the biosphere. So, last, to live as a true Jain is to practice environmentalism grounded in compassion rather than fear of ecological collapse, thereby fulfilling the deeper aim of Parshwanath Jivana. Okay, thank you, ma'am, for best paper. Any question? Ecology applying this Jain ethical standards, then individuals here to practice the ethical standards, so that in common we all will practice, and we have the our some people or one person will not will violate and will practice this standards. It will harm others, society, environment. Harming the society, environment, and others means it becomes a legal affair, legal matter. So ethical affair. Ethical affair is or the state has to impose law. It will be violence. Yes. And it becomes the legal affair. Right. So here ethics change to legality, and when it happens, then the state will punish, make the law. So here Ahiṁsā will be violated. It becomes a Hiṁsā because yes, it is imposed from state. It is not coming from the individual. It is imposed from outside of the individual. So it will be Hiṁsā. So regarding Right. this, you may correct. Sir, thank you for the question. So that we don't go into legality, because as you commented that legality may include Hiṁsā, the reason why Jainism is about restraint, Jainism is about controlling, so that हम हिंसा के तक जाए ही ना हम, because whenever we are doing हिंसा on others, हम अपने ऊपर भी हिंसा कर ले. तो इसीलिए सर जो भी जितने भी वेस्टर्न डीप इकोलॉजी हमेशा रिपेयर, हमेशा
सेंसेशन की बात करते हैं, टॉक अबाउट हम कैसे अपने आप को या फिर एक ब्रॉडर हिंसा की तरफ, तो ये बेसिकली हम लिमिट या Okay, thank you, ma'am. Next question. if ideally if you do any kind of hinsa, there will be a hinsa. Of course, to answer your question, it is going to be a hinsa, but that so that we don't go into that area, we don't go into the law, to go into any kind of a punishment that might harm oneself or the other, we have to restrain ourselves, and that could only be attained when we realize that the others also have this jiva, respect and the interconnectedness. So yes, there will be a hinsa. so it has to be left to individuals and Right, sir. and Right, sir. Once individuals make right choices and actions, Right. I might also inspire family, friends, society. In that way, we can protect the biosphere. so left to the individuals and hope that they do the right thing, right? Yes, yes. Yeah. Individual. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your paper. Online paper. Puneet Jain. Yes, sir. in computer. Paper title is Applied to United Nations Goal of Net Zero. So, as net zero, then we will talk about how pluralism can be applied to achieve the goal. So, net zero is reducing the amount of carbon in the atmosphere to such an extent that can be easily absorbed by the environment. So this is the concept. We will have carbon emission, but it should be within a limit that can be absorbed by the forest or our oceans. So this is the concept of net zero. Then we need this net zero goal. So if we talk about the industrial revolution after 1800, 1.2 degree, and this is equal to the amount which was not raised in last 1 lakh year, which we have raised in just 200 years of say industrial revolution without any like CO2 computer, others are all, but CO2 contributes
goes beyond 1.5 degrees Celsius, we will have to create an artificial environment to live in. We have to move to some other habitable planet. Unfortunately, we don't have any till now. So we have to live here only, and to make this planet habitable and sustainable, United Nations in their Paris Agreement in 2015 came with this goal of net zero. Now we will talk about the causes of carbon emission. The causes are consumption of fossil fuels, production of good industrialization and transport, which is a major how this will agriculture processes only. Hazards to the I mean, sorry. Loss of species because have their certain threshold to bear a temperature rise. It will be already 1.2 billion people have, every year are migrating due to warming. So these can be the hazards and so many things like life-threatening diseases and many more things. So this is the part for what are the Jain principles which can be applied to accomplish the goal. The self, real self, identity. And following this part only relates to net zero goal accomplishment. So how it or we can say householder Shravakas. So if we follow the conduct of monks, it will lead to zero carbon emission that I have proved in my research. And if we follow, I mean everyone cannot follow the lifestyle of a monk. So if we follow the lifestyle or conduct of a Jain householder Shravaka, and also the carbon emission can be reduced to a limit which can be easily for environment. Mature or Aparigraha fully, and the Sir, please conclude. oh, it's Very so we have seen that there are so many causes which leads to this
their very essential uses. Like other is production of electricity. So yeah, the monks cannot use at all the electricity under the Ahiṁsā limited. Then this the time is very less. A lot about Jain conduct with respect to environmental generation. Okay, thank you, sir, for your. Next presenter is. And the title of my paper is Jain Epistemic Pluralism and the Ethics of Education. Actually, I was sitting here for the last 2 days, and I have heard many papers, and most of that I have written in a paper has been presented before, so I don't want to repeat the same concepts. For that, I will explain some of the central themes that I wanted to. Contrasting Anekāntavāda with the scientism, and then contrasting the epistemic pluralism of how I contrast with the scientism. Revealed. In the natural science, normative principles don't. Aspects can be viewed from this perspective. At different times and in various places cannot be encompassed by this claim. In scientism, the claims are made about immutable absolutistic truths which are not subjected to cultural differences. Actually, I have made some discussions about the viewpoints of Karl Popper and Thomas S. Kuhn. There has been a great debate between two philosophers about how the method of science works actually. So Karl Popper has argued that in his book The Logic of Scientific Discovery, he has argued that science is progressing very linearly and making more new things and correcting the old ones. And meanwhile, Thomas S. Kuhn argued that science is not progressing linearly, but every time there's a paradigm shift occurs in scientific discoveries. Actually, so for example, in the Newtonian classical mechanics, the Earth is revolving around the Sun in an elliptical orbit. But when it comes to the general relativity theory of Einstein, the Earth is moving in a very possible, the most possible straight path in the space-time curvature. According to the general relativity theory, Earth is not revolving around the Sun, but the space-time is curved because of the mass of the Sun, because of the gravity of the Sun.
So these two opinions are obviously very divergent, because in one theory that is moving in a particular orbit, and in the second theory it is not like that. So here comes the problem of objectivity. So if science is standing for objectivity, in the Newtonian classical mechanics and in the general relativity theory, the phenomena are different, and the equations that are used are very different. So people like, especially the postmodernists, argued that there is no absolute truth in science, something like that. I think the argument of Thomas Kuhn go hand in hand with the Anekāntavāda theory, actually. And at the meantime, the falsification theory of Karl Popper has something to do with the Anekāntavāda theory. I think so, because so if in the Jain context, when the men in the simile of some visually challenged people seeing the elephant, their experience is mostly subjective, actually. So this subjective experience is challenged in the epistemic system of Jainism, actually, because when people see elephant in a different way, this is actually a subjective experience, not an objective experience. Because every person forms an idea about the elephant through their sensory perception or through their subjective experiences. If I take another example, this is the same case with every human being, actually, because if I see a flower as red, it appears as red for me. But for a fly that has vision in ultraviolet rays, it sees in a different manner. So the question still persists there, whether the red is red or something else. Actually, this is actually a subjective experience. So I think the Anekāntavāda or its analytical tool, Mayavada, has some connection with these theories, actually these debates. Actually, I have elaborated these things in my paper, but I don't have time to read that paper, so I'm just summarizing this. So, even with the advent of quantum mechanics, the Newtonian mechanics still persists. The linear progress of science, as rejected by Thomas Kuhn, is very much similar to the Anekāntavāda posed by Jainists, which poses a multifaceted nature where each proposition is valued in a special context, thus rejecting epistemic authority of any knowledge system in the interpretation of the universe. So I will skip some portions here. Yeah. I will skip some portion about falsification theory. So coming to the social science, I will conclude. I think my time is very limited here. So actually, the ethical theories and the moral theories, they are mostly normative, actually. So what is true or what is good in a particular society may be evil in a different society, and what is good and virtuous in a particular time may be evil in a different time. When the society evolves, it can be a linear one, or it can be a revolutionary one. Anyway, the social systems also undergo changes. Our life habits, our technology, our social system, our moral systems, everything is continuously changing. So what I was arguing in my third part of the paper was, if the students are convinced with this scientific temper and also a historic temper, then students will be able to understand that we are continuously changing, actually. So so there is no place for any absolute theory, absolutism, claiming that what we believe is good, or what we say is good, or what our moral system is good. There's no place for such absolutism. So incorporating this scientific temper and the historic temper would help a student to accept the universalism and bring humanity together, irrespective of racial difference and our national boundaries. This was all. Thank you, sir. Any question? Okay, thank you so much, sir. Next presenter is Swastika Jain. Online paper is
Hello. 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 Parshwanath Vidyapeeth, Varanasi.
welcome to all of you for this session. The session title is Pali, Prakrit and Sanskrit Jain Text. So we have scholars and a very great scholar, Professor Ramesh Prasad ji. He is the Dean in Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Head Professor of Pali Department, I think so. Pali Department or Pali, Prakrit and Jain Darshan. And not only this, he has got the financial charges also, and he got sometime VC charge also. So he is the great scholar, and he is the great scholar. First thing is that VC is not the greater than a professor or a scholar. So he is the great scholar, and Professor Animesh ji, the assistant professor in Sarnath Vishwavidyalaya, but only designation is not so important. He is not less than a renowned professor. He is a specialist of Pali, linguistic especially, and Pali grammar, and Pali literature also, and Tibetan studies also, Tibetan language also. So he is also very good scholar. And when I was studying in MA in the Department of Buddhist Studies, University of Delhi, there was one professor. His name was Gyatso. He was not even PhD. So, but he was a renowned scholar, not only of Delhi University, but all over nation. So now they will preside the session. I request them and welcome them to come, Professor Ramesh Prasad ji and Professor Anekāntavāda. We have 6 sessions in this session. Yes, ma'am. First, I would like to welcome Professor Ramesh Prasad ji. So I request to we have 6 papers, 6 or 7 papers. Anita, how many papers? 6 है, हम 3 लोग को छोड़ दो. So here our time is 12 to 1 p.m. Special literary session, and there are 6 papers and 2 minutes for chairman presiding for 2 minutes time, not more than 2 minutes for each, because this is a technical session. And they have to present in 10 minutes and 5 minutes for question answer. And this is, you have to evaluate. Anyway, already know about that, he will let you know. टाइम होगा तो वो कब होगा? हाँ, अभी करते हैं. ये हमारा, इसमें जो है 6 पेपर हैं, तो 6 पेपर में 10 मिनट के लिए इसमें एक्स्ट्रा एक पेपर लेना है. 10 मिनट से जितना टाइम कम से कम लें, मैक्सिमम टाइम 10 मिनट है. सरोज कांता सर जी जो है वो अपनी बात रखना चाहेंगे, है ना? अभी वैलिडिटी से पहले कर देंगे. इससे पहले वैलिडिटी जब होगा उसी समय. ठीक है, तो ठीक है. हो सकता है ज्यादा टाइम मिल गया. 2 लोग हैं, ये है और एक जना भी. बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद और स्वागत है. और मंचासीन गणमान्य अतिथियों का भी बहुत स्वागत और धन्यवाद. और इस सेशन में जो पहला पेपर है वो प्रोफेसर निरंजन जैना सर का है, जर्नलिज्म एंड वैदिक. हाँ, तो वो अभी नहीं है, वो दूसरा करवाएंगे. नेक्स्ट पेपर है डॉक्टर अजिथन PI. सर वो भी नहीं है. What's in? क्या? Audition
distinguished scholars. I have a PowerPoint presentation. First of all, I would like to apologize that my presentation has nothing to do with education. It's about a textual commentary. It's written by a Jain scholar. That is what makes it most important. This is my presentation is about. The title of introducing myself. I am Jain from Kerala. I am a postdoc research fellow. This is the topic of my presentation, Trivida Bhairavi in Jain context, seeing Sri Vidya cut of medieval South India through Somathila Suri's commentary. My research topic is what I am doing now is that my research is on Sri Vidya tradition. There is a Shakta Tantric tradition. So I have written paper related to my research, and I connected this one to this theme of this seminar. There is a pentad of hymns known as Panchastavi, and there are many difference of opinion about its authorship. Panchastavi is Laghustava, Chachastava, Ghadastava, Ambastava, and Sakala Jaministava. These are collectively known as Panchastavi, pentad of hymns. And I am going to focus only on Laghustava because as I have said earlier, a Jain scholar named Somathila Suri has written a commentary on it. So if you look at its textual transmission, where this has been written, where this text has been transmitted, you will find that most of the commentaries on it are written in Kerala. And two of them are written in Kashmir, one is written in Gujarat. And I am focusing on this Gujarati commentary, which is written by Somathila Suri. My presentation is about Somathila Suri's commentary. And before going into the commentary, I will tell you about the hymn itself. And there are difference of opinion about its authorship. Some say it's written by Laghu Acharya. Some say it is written by Kalidasa. As we know, anything is written in Sanskrit is either Shankaracharya or Kalidasa. There is a tradition. So all these pentad of hymns are also attributed to Kalidasa. There is such a tradition, and there are many different authors for this pentad of hymns. So leaving the authorship, because it's a controversial issue, then there are many commentaries. At least 8 commentaries have come to notice. Of these 6 are written in Kerala, and as I have said, one is written in Gujarat and 2 are written in Kashmir. And coming to Somathila Suri's commentary, what is important is that Somathila Suri is a Jain scholar. As you know, he is belonging to 14th century, and international records and books show that he was actually from Gujarat. Then he moved to Rajasthan. I don't know what is the fact is, but however, he was a good Sanskrit scholar. He was a polemic. If you go through his commentary, you see a language of a polemic. He is arguing, he is establishing. Actually, he is writing a commentary on a hymn, but his style of writing is that of a polemic. And he is quoting. You may move to next. These are the details of commentaries. I am not going to read this because of time constraint. You may move to next. Next. Okay. First, about Laghustava. Somathila Suri, first what he tries to do first is he is setting a context. He is talking where this text is being written. Then what was the real context this text has been composed. So actually this is from a Hindu context. Because if we look at the authors list, we may find Kalidasa, Shankaracharya, and the matter of fact, the central point is of a Hindu Tantric. So it's all about Tripura Sundari or Tripura Bhairavi. It's all about a goddess. This goddess belongs to Hindu tradition. So what he does first is that he is decontextualizing the text itself. Then this is the context he has delivered. He has taken this text all to a court setting.
What he says is that this text is written at court upon a comment of a king. The story is like that. Once a scholar comes to a court, he does not specify which is the court, who is the king, who has come to the court. A scholar has come to a court, and the king asks the scholar, you should exhibit your skills. You have to show your skills. Don't say you are just a scholar. You have to show that you are a scholar. Then he told the king that I have a special capacity, special siddhi, that if I place my hand on any child and ask him to repeat or say anything, he will sing a song, or he will sing any study or like that. He will speak immediately, even if he is dumb, even if he cannot say anything, even if he is of 2 years child, he can speak. Then king brought a child and placing on the head, he asked him to say something, and he has sung. That is the study we are talking about. This is how he contextualizes the text. So he is moving the context to different court setting. So we have a tradition that all the kavyas are written court setting. That is what especially Western scholars say. All the kavyas, Sanskrit kavyas are written in a Sanskrit court setting. Similarly, this is also written in a court setting. Second thing is about the citations he has made. He is making citations from Prakrit text, several Prakrit texts. There is no, he is not giving the details of the text. This is the text, this is I am going to cite. He has given details of some texts which are in Sanskrit. So we have no source, we have nothing to trace these Prakrit verses. I have been trying this for last 2 years. I haven't found any of these mentions anywhere. So I am trying, I am working on this. And there are references about Sanskrit text. And the thing is that if you look at the history of Tripura cult, Tripura Sundari cult, it has a history. It has come from Kashmir, and the last destination was South India. It has its root in Kashmir. Then about 13th century there was Muslim invasion. Because of that, all these Kashmiri Pandits have to move to different parts of India. Somehow, many of them have reached South India. They have brought all the Tantric traditions along with them to Kerala. And now the Kerala is one of the places where all these traditions still alive. So my studies on about this, and he is quoting, you can find him quoting several Sanskrit texts. There are references, but for Prakrit texts there are no actual text. At least we cannot find that text. And another thing that, as I have said, if you trace the history of Tripura cult, it has its beginning around 11th century in Kashmir. Then up to 13th century we have evidences of authors, texts, etc. of Tripura cult. Then suddenly there is a gap. Then we find the tradition again in South India around 14th century. There is a gap of 2 or 3 centuries, and for these 3 centuries you have evidences in this commentary, because he is speaking about the earlier traditions of Tripura cult. Okay. So this text is historically very much important, because the missing link lies in this commentary. The thing is that no scholar who has ever written on Tripura history has not written anything about this commentary. Somehow Vrajavallabha Dwivedi, he has mentioned about this commentary, but he hasn't given any details about this commentary. His discussion was all about the author, who is the real author of this commentary. So he is trying very hard to establish that it is Leghu Acharya. His name is Leghu Acharya, and he was a Jain actually. This is what all he was trying to establish, but he has said nothing about this commentary. This has a historical importance. One is about its citations. If we trace these citations, we can clearly trace the Tripura cult. We can clearly draw a picture how Tripura cult came from Kashmir, then to south, slowly to South India. So this is how this text is very much important. The 2 points I am going to make is that one is the importance of this text. If you
learn about, or if you want to establish a Suris, he is also a Suri. So why a Jain scholar who belongs to a Jain tradition proper has written commentary on a Hindu Tantric text? That is the first question I am going to address. Then not address, putting forward before you, or I have to find the answer. Next thing is that whoever studies about the history of Tripura should read this and should follow, consult this text also. That much this text is important. And third point is that why this text is overlooked by scholars? Because there are so many scholars who have written extensively about Tantrism, like there are many scholars, Western scholars also. None has said about anything about this, except authorship. None has gone through this commentary. So, yeah, this is all about my presentation. Thank you for having me here. Thank you. Thank you so much, sir. Any question? Yeah. Thank you. Is the audible from there? No. I think your voice is audible, Yes. ma'am. It's fine. It's better if We can hear. talk like that. This is for online. I'll just hold it. Yeah. Okay, thank you for your presentation, sir. I just have two queries. One is that is there any traceable influence that why he got interested in the Hindu Tantric tradition, or to write about it or to study about it more? If you could please mention something about that. And my second question is, as we know, the Tantrika traditions, the sadhana in the Tantrika traditions usually involve some kind of sacrifices and also uses of prohibited substances like liquor, etc., as part of ritualistic, worship or sadhana. So then, how would you really accommodate this kind of disparity between the principle of Ahiṁsā and the ritual of sacrifice, since it is being propagated by one of the Jain sadhu only? Okay, thank you very much. Thank you for very challenging questions. Your first question is about its background, how he has written, why he has written. So, if you look at the history, around the medieval centuries, there was you can see a tendency among Jain scholars to incorporate Hindu Tantric elements into Jain thought. There are evidences, many scholars have written about this. Many Hindu goddesses, the Tantric tradition actually proper has come into or has been accommodated by Jain scholars. And these Sudis were Siddhas. They are considered as Siddhas, that they can perform any Tantric ritual. And there is a history, there are evidences that these Sudis performing rituals, reciting mantras, and all these are centered about 6 objectives. It is called Mantravada in Jain tradition. And these texts which dealing with these Mantravada are known as Mantrakalpas. There are thousands of Mantrakalpas in Jain libraries. These are yet to discover. But Marana, Vashya, etc. Not Marana. Marana is excluded since Jains follow Ahiṁsā philosophy. Instead of Marana, what they do is Striyakashana. Striyakashana means attracting women. So they have certain rituals, certain mantras for attracting women. They have such mantras for many worldly purposes. So this is a tendency. And Somatilava Suri he is a 14th century scholar. So he was within this tendency. That is why he got attracted to this, and he is also Suri. He is also a performer of he recites mantras. He help others by reciting mantras for the worldly purposes.
This is about your first question. Second, Tantra has got many antinomian elements, the use of liquor, sacrifice, etc. So, but you do not see any such things in Jaina Tantra. Jaina Tantra is all about these 6 objectives. Vashya, Marana, Stambhana, etc. There are 6 objectives, and instead of Marana, you will find Striyakarshana. So, what Jain scholars did that they removed all such things, which specifically focus on Ahiṁsā. They have excluded that part and incorporated all other elements which are useful for a layman. So these are meant to help laymen. So whatever are good for laymen, they took everything from Hindu Tantra, and this is all about, it's a part of history. Thank you. Thank you. Any other quick question? I have a comment. Okay, please. Any quick Before the advent of English people, there was no Hindu, there was no there are sampradayas, Buddha, Jaina, Tantra, Saiva, Shakta, everything, but there is no Hindu. So this was Vedic, it is a Vedic or Sanatana something. So it is a mosaic culture. Any sampradaya can share any of the things of any other sampradayas. So that is why they are sharing with all the things. Okay, so there is not Jaina taking the Hindu. Jainas are not different, not excluded from Hindu. Not Buddhas are also excluded from Hindu. There is no cause for Hindu. Okay, the denomination comes later on. So before that I will share it. Thank you. I am supporting you. This is about 14th century India. The Hindu word is coined by Persians. They came very before, around 8th or 9th centuries. The word is there. But that is the geographical denomination. There is a common pool from which Hindus, Jains, Buddhas, everywhere, all these people told many ideas, similar ideas. Just one from my, thank you so much, Dr. Ajithan, for your wonderful presentation. I appreciate it. And because you have talked about the Tripura and Bhairavi or so have you visited Tripura Sundari in Tripura? Pardon? Have you visited Tripura No, Sundari? not yet. I wanted to ask Tripura Sundari or Tripura Bhairavi, what you were talking about, is that is it a peaceful deity or a tantric deity? The first question. And the second is, because, and it's very normal in Buddhist tradition also, in Buddhist Tantra also, there are some, Ahiṁsā tradition is also there, like Dzogchen tradition and many more traditions. So I could understand how Jain could maintain the Tantra. So it's very, okay, fine. But do you see any influence after, because we're talking about 14th century and Buddhist, the Tantra already developed around 9th century, 8th century by that time. And we do have, not only in Kerala, but your neighboring state, in Tamil Nadu, we do have the, in Madurai, we have the Jain rock mountain and Buddhist places many among this area. So do you see at present time any influence of Buddhist, Jain, or particularly Nath Sampradaya influence on that, or what you have presented? First is about what is the difference between Trivira Bhairava and Trivira Sundari. Trivira Sundari is benign form. Technically speaking, the difference is in mantras. There is no difference in visualization forms, jnana rupas. All are same. Four hands, etc. Whatever. The difference is in mantra. So there is a different mantra for Trivira Sundari, different mantra for Trivira Bhairavi. The mantra distinguishes all these deities. So they have different manifestations? Yeah. Okay. Different manifestations. There are, I think, 16,000 different varieties of Trivira mantras. So of these varieties, Trivira Bhairavi is just one, and root mantra. It is from this root mantra all these manifestations come. That is the difference. Second, there are evidences of Nath Sampradaya and Jain, Tantric, even in Kerala. Usually scholars argue that there is a procession ritual during Utsava season in Kerala everywhere. So this procession ritual has come from Jain tradition. That's what historians say. So but there is no influence of Jain Tantric tradition in Kerala. But Jain Tantricism is all about performing rituals for these 6 needs, and this same tradition in Kerala is known as Mantravada, the same appellation that is used in Jain tradition.
Jains use Mantravada for these 6 kind of rituals. The same terminology is used in Kerala also. That is the biggest connection. Apart from that, there is nothing. But there are many traditions, Natha traditions, other Prandic traditions. You will find many of the things in this commentary version. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your best paper. And next paper is Dr. Siddharth Tiwari. Subject Sanskrit Sutra Style Comparative Study. Dr. Siddharth sir, I request you to just, I mean, if you can conclude 5-7 minutes, so that we can have proper discussions. मेरे सूत्र शीर्षक है इस पद का संस्कृत व्याकरण की सूत्र शैली और समाज संरचना पाणिनि एवं सिद्धेम शब्दानुशासन का तुलनात्मक एवं वैज्ञानिक अवलोकन। भारतीय ज्ञान परंपरा में शब्द की सत्ता को केवल व्यवहारिक जगत के व्यवहार निर्वाह का साधन मात्र नहीं माना गया, अपितु उसे परब्रह्म का वाचक और वाच्य पूर्व स्वीकार किया गया। ऋग्वेद के चत्वारि वाक परिणीता पदान से लेकर आचार्य भट्टियारी के वाक पदीयम तक भारतीय मनीषा ने सब तत्व की उपासना एक दार्शनिक और आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में की। आचार्य भट्टियारी का उद्देश्य अनादि निधनम ब्रह्म शब्दम निदक्षरम विवर्ते अर्थभावेन प्रक्रिया चतुर्यता यह स्थापित करता है कि व्याकरण शास्त्र केवल भाषा के आंतरिक तंत्र का विश्लेषण नहीं है, अपितु यह चेतना के उस स्तर का विज्ञान है जहाँ अमूर्त विचार मूर्त भाषा का रूप धारण करते हैं। और हम बात करते हैं व्याकरण की। आचार्य पाणिनि जो है लगभग 500 ईसा पूर्व में जब वैदिक भाषा लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो रही थी, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। महर्षि पाणिनि का कार्य केवल नियमों का संकलन नहीं था, बल्कि भाषा के बिखरे हुए तथ्यों को एक सुगठित संरचनात्मक विज्ञान में ढालना था। उनकी सूत्र शैली लाघव का आदर्श है। उन्होंने संज्ञा, परिभाषा, विधि और अधिकार आदि सूत्रों के माध्यम से एक ऐसी मेटा लैंग्वेज विकसित की जो न्यूनतम शब्दों में अधिकतम और असंदिग्ध अर्थ व्यक्त करने में सक्षम थी। महर्षि पाणिनि का व्याकरण एक जनरेटिव डिवाइस है जो सीमित नियमों से असीमित वाक्यों के निर्माण की क्षमता रखता है। शताब्दियों के अंतराल में पश्चात 12वीं शताब्दी के गुजरात में ज्ञान और संस्कृति के उन्नायक चौलिक नरेश सिद्धराज जयसिंह की प्रेरणा से जैन आचार्य हेमचंद ने सिद्धेम शब्दानुशासन का प्रणयन किया। यह कालखंड महर्षि पाणिनि से भिन्न था। पाठक की रुचि, बौद्धिक क्षमता और आवश्यकताएं बदल चुकी थी। अतः हेमचंद का यह ग्रंथ केवल पाणिनि परंपरा का अनुकरण या पुनरावृत्ति नहीं, अपितु उनका एक अत्यंत परिष्कृत, सरलीकृत और प्रयोगप्रधान संस्करण है। हमारा जो शोध का वो है वो मुख्य 3 विषय को लेकर है। एक है महर्षि पाणिनि ने सूत्र की शैली को 6 भागों में विभाजित किया हुआ है। संज्ञा च, परिभाषा च, निर्णयमेव आदेशो अधिकारश्च। और इन्होंने आचार्य हेमचंद ने 10 सूत्र के प्रकार बताए हैं। दूसरा है समास को लेकर है। इनका जो पाणिनि का जो समास है उसका क्रम क्या है और आचार्य हेमचंद का समास क्रम क्या, उसका क्या कारण है, किस कारण से दोनों में भेद है। और तीसरा है अधिकार को लेकर। इन्होंने अधिकार स्वीकार किया है परंतु बहुत कम मात्रा में, ज्यादा अनुवृत्ति को उन्होंने स्थान दिया है। इन तीनों को लेकर है। पहले हम बात करेंगे सूत्र के प्रकार। तब सूत्र व्याकरण सूत्र शैली निबद्ध है। सूत्र का लक्षण होता है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वत्रिस्तोमुखम अस्तो मध्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। इन्होंने पाणिनि 6 प्रकार के सूत्र स्वीकार किए हैं। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, आदेश और अधिकार। उसके स्थान पर इन्होंने 10 सूत्र कौन कौन से तैयार किए हैं? संज्ञा, परिभाषा, अधिकार, विधि, प्रतिषेध, नियम, विकल्प, समुच्चय, आदेश और अनुवाद। ये 4 भिन्न कौन से हैं? वो 4 भिन्न, पहला है प्रतिषेध सूत्र इन्होंने स्वीकार किया है, जिसको पाणिनि जी ने इसको क्या किया, निवृत्ति विधि के लिए दूसरा पद निवृत्ति विधि में स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने अलग से किया है। कहते हैं कि आचार्य हेमचंद के अनुसार निषेध एक स्वतंत्र प्रक्रिया, छात्र के लिए विधि और निषेध 2 अलग मानसिक अवस्थाएं हैं। विकल्प सूत्र इन्होंने स्वीकार किया है, उसे पाक्षिक विधि को मानते हैं। हेमचंद कहते हैं कि भाषा की अनिश्चितता को दर्शाता है। विकल्प जो है ये भाषा की अनिश्चितता को दर्शाता है, यह विधि से भिन्न है। और तीसरा इनका है समुच्चय सूत्र। ये कहते हैं सूत्र में दो भिन्न श्रेणियों का समावेश हो सकता है, वह समुच्चय है। जैसे कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास भी होता है, कर्मधारय भी होता है। चौथा अनुवाद सूत्र। कहा जाता है कि पृष्ठ प्रेषण एक दोष होता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि
आचार्य हेमचंद शिक्षक की भूमिका में वो मानते हैं कि कठिन विषयों को समझाने के लिए प्रसंग बदलने पर अनुवाद आवश्यक, मतलब उसको दोबारा अच्छे से समझाना आवश्यक है। इसलिए ये निष्कर्षता आचार्य हेमचंद का 10 सूत्री वर्गीकरण यह सिद्ध करता है कि व्याकरण को एक मशीन के साथ साथ एक शिक्षण प्रणाली भी मानते हैं। अब आते हैं हम इनके समास के पदार्थ प्रधानता भी इनकी बात आती है और समास का क्रम का। पदार्थ प्रधानता यहाँ पर होता है कि जो पाणिनि का व्याकरण है वह बता देता है कि यहाँ पर अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास अधिकार चला देते हैं। वह स्पष्ट रूप से कहा या नहीं बताते हैं कि किस समास में किस पदार्थ की प्रधानता है, परंतु आचार्य हेमचंद ने अपने सूत्र में ही बात निर्देश कर दिया है किस पदार्थ में किस पदार्थ की प्रधानता है। जैसे बहुव्रीहि के अन्यार्थी पद, उसके लिए क्या कहते हैं अभिभाव के लिए पूर्वार्थे, और शेष पद करके तत्पुरुष का, और अन्य वो क्या करते हैं समुच्चय करके उनका द्वंद्व का कर देते हैं। उसमें उसको हम बताएंगे तो ऐसे करके उन्होंने अपना अर्थ उसमें डाल दिया है। और जो उनका वो चलता है क्या कहते हैं जो प्रायकर उसमें आता है, उन्होंने प्रायण करके बोला है। जो महाभाष में वो कहा गया है कि प्रायण पदार्थ प्रधान प्राण तत्व, जो प्रायण वाले के लिए उन्होंने जो उनका जो अधिकार चलता है अनुवृत्ति जाती है, बीच में कुछ सूत्र नहीं बाद के सूत्र से आता है, तो पहले के सूत्र है वो प्रायण में आ जाते हैं, तो प्रायण वाला भी समस्या उनके हल हो जाती है। अब आते हैं क्रम पर। तो क्रम में जो पाणिनि का क्रम है समास का, वह अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व ये मानते हैं, परंतु आचार्य हेमचंद बहुव्रीहि को पहले रखते हैं, फिर अव्ययभाव, तत्पुरुष और द्वंद्व। तो हम पूरे सबको न बताते हुए सिर्फ बहुव्रीहि को उन्होंने पहले क्यों रखा इस विषय को बताएंगे। आचार्य हेमचंद ने बहुव्रीहि को शब्द इसलिए रखा क्योंकि यह समास मूलतः विशेषण की तरह कार्य करता है। वैज्ञानिक तरफ हो जाए भाषा के प्रयोग में विशेष से पहले या उसके साथ विशेषण का बोध अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ की प्रधानता के कारण संपूर्ण वाक्य के लिंग और वचन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, इसलिए उन्होंने इसका पहले प्रयोग किया है। अब आते हैं अधिकार सूत्र और अनुवृत्ति की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने अधिकार सूत्र स्वीकार तो किया है लेकिन बस समास का अधिकार बता देते हैं। उसके बाद जो बहुव्रीहि समास हो गया, अव्ययभाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, द्वंद्व हो गया, इसके लिए ये पृथक से तत्पुरुषा अव्ययभाव कोई अधिकार सूत्र नहीं बनाए हैं। जो इनका पहला ही संज्ञा सूत्र है अव्ययभाव का, उसी में अव्ययभाव पर डाल दिया, उसी का अनुवृत्ति जहां तक उनको रहता है वहां तक ले जाते हैं। उसकी वृत्ति कहते हैं तो पाणिनि क्या करते हैं हेडर सूत्र बना देते हैं अव्ययभावा, उसके बाद उसका अधिकार चलता है जब तक दूसरे समास की संज्ञा के अधिकार सूत्र ना आ जाए। परंतु हेमचंद ने अधिकार को विधि में मिला दिया, उन्होंने अलग से हेडर सूत्र बनाने को गौरव समझा। उदाहरण के लिए से गतिक पन्नस तत्पुरुषा उनका तत्पुरुष समास का एक सूत्र है, गतिक पन्नस तत्पुरुषा। यह कहता है कि गति शब्द, गति संज्ञक शब्द, कु शब्द और अन्य शब्दों का समास होता है, अन्य शब्दों के समास होता है। गति को अन्य तत्पुरुषा, अन्य अर्थ में, अन्य मतलब अन्य अर्थ में, और अन्य का मतलब किसका, तो तत्पुरुष और बहुव्रीहि से अन्य, वही बता दिया। अन्य इसमें उन्होंने उसको भी डाल दिया कि पदार्थ प्रधानता होती है। यह सूत्र क्या है, यह सूत्र विधि भी करता है। यह सूत्र कहता है गति कु का समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, संज्ञा करता है, तत्पुरुष समास होता है, और अधिकार यहाँ से जितने भी आगे जाएंगे सूत्र वहां तक इसका अधिकार जाएगा तत्पुरुष समास का। अब निष्कर्ष रूप में हम देखेंगे कि सूत्र शैली में आचार्य हेमचंद ने 10 प्रकार के सूत्रों का विशेषण का अधिक गहरा किया। अर्थबोध के लिए देखो उन्होंने अर्थ को सूत्र का अभिन्न बनाया, जैसे अन्य अर्थ पूर्वार्थ इत्यादि सूत्र डाले हुए हैं उन्होंने। तार्किकता के आधार पर देखेंगे तत्पुरुष कर्मधारय द्वित्व का वर्गीकरण है, अन्य द्वारा तत्पुरुष की प्रभावता उनकी वैज्ञानिक सोच को दर्शाती है, अन्य द्वारा उन्होंने उसके तत्पुरुष की प्रभावता को दर्शाया हुआ है। और तकनीक के आधार पर देखेंगे तो अधिकार और विधि का एकीकरण उनकी अद्भुत इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण है। अंततः यदि महर्षि पाणिनि व्याकरण के वास्तुकार हैं तो आचार्य हेमचंद व्याकरण के प्रज्ञाचक्षु शिक्षक हैं। उन्होंने उस वास्तुकला को छात्रों के लिए सुगम, तर्कसंगत और अर्थपूर्ण बना दिया। ठीक है, धन्यवाद। किसी को प्रश्न, क्योंकि ये मेरे शोध का विषय भी है, तो अगर आप कोई सुझाव दे सकते हैं प्रश्न तो आप पूछिए। कोई प्रश्न नहीं सर। मैं एक छोटी सी जानकारी, आपने बहुत ही बड़ी प्रस्तुति की, ये विषय है बस जी जी नहीं, मुझे जहाँ तक समझ में आया आपने पाणिनि और हेमचंद को एक कंपैरेटिव जी, लेकिन आपने टाइटल लिखा है संस्कृत सूत्र स्टाइल कंपैरेटिव। उसमें वो सब कर दिए, मेरा शीर्षक है संस्कृत व्याकरण की सूत्र शैली और समास संरचना। अच्छा वो सर, अच्छा बस एक छोटी सी जानकारी चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप तो व्याकरण क्या कर रहे हैं और आपको व्याकरण के सूत्र पर एक एक्सरसाइज, एक व्याख्या आपको लिखनी है, तो आप
वृत्ति लिखेंगे, भाष्य लिखेंगे, टीका लिखेंगे, या क्या लिखना पसंद करेंगे? उसके क्या कोई लिमिटेशन है? जैसे कि मान लीजिए मैं, जैसा आपने पाणिनि लिखा, पाणिनि पर भाष्य लिखा है, महाभाष्य भी लिखा है, वृत्ति भी है शायद, तो क्या लिमिटेशन, मतलब मुझे अंतर आप बता सकते हैं कि जो सूत्र के ऊपर जब हम भाष्य लिखें या वृत्ति लिखें, उसमें क्या ऐसी चीज होती है, कौन सा ऐसा तत्व है कि वो सूत्र से भाष्य बन जाता है? क्योंकि पाणिनि के उस पर आपने डिस्कस, सूत्र को व्याख्या करता है, सूत्र के अर्थ नहीं, वृत्ति की व्याख्या, टीका की व्याख्या, उसकी अपने अपने तरीके से आपने उसकी व्याख्या करनी है। क्या अंतर है, कुछ बता सकते हैं? वो जो सूत्र है ना, आपको सूत्रार्थो वर्णते यत्र, वाक्य सूत्रानुसारी भी सपदांच वर्णन्ते भाष्य भाष्य विदो विधि, उसमें एम्बिग्युइटी है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वहां से वो सूत्रों को जो वर्ड लेके एक एक व्याख्या देने का विकास करना, यही है भाष्य। और उसमें आप वो ये सूत्र है व्याख्या भाष्यों का जो भाष्यों का जो व्याख्या होता है, और इसमें कई लोगों ने परिभाषित किया है, कुछ आक्षेप किसी ने जो लगाया उसकी भी उसको उस अधिकार उसको भी सिद्ध करना। वो पतंजलि जी की वो विशेषता है कि वह 100 मुख्य विशेष को भी कहते हैं, वो खुद ही आक्षेप कर रहे हैं, खुद समाधान कर रहे हैं, पूरी पूर्व पक्ष बन रहे हैं, लक्षण है भाष्य का। किसी भी भाष्य को आपने देखा है जिसमें उन्होंने आक्षेप का उत्तर नहीं दिया? कोई ऐसा भाष्य देखा? वही लक्षण है, इसी से लक्षण भी हमें देखना हो। वैसे मेरा सामान्य क्वेश्चन था, मैं विद्वान नहीं, आप संस्कृत के मुझसे ज्यादा बेहतर विद्वान हैं, लेकिन इन चीजों को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। Thank you, sir, for your best presentation. Next paper is सुलभ जैन, ऑनलाइन पेपर है, तो क्या वो ऑनलाइन है? Okay. सुलभ जैन। थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। कर सकते। सर अभी जो चर्चा चल रही थी मेरा भी उससे रिलेटेड ही विषय है। पाराशर उपपुराण में जो सारी भाष्य वृत्ति वार्तिक आदि के लक्षण है, व्याख्यान का जो लक्षण है, उस पर मैं भी थोड़ा सा अध्ययन कर रहा हूँ। आपने जो भी बताया पदच्छेदा, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम, व्याख्यानम, पंचलक्षणम, तो आपने अभी जो बताया मुझे एकदम से याद आ गया कि ये मुझे भी मतलब मेरा भी विषय रहा है थोड़ा पढ़ने का। ठीक है सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, मेरी अभी रिसर्च का टॉपिक दूसरा है। So, thank you for the opportunity. My topic for today's presentation is the semantics of Ahiṁsā in Kundu commentary literature. Although the title mentioned in the chart, the title usमें Kundu commentary literature, only that much is given, but specifically my title is the semantics of Ahiṁsā in Kundu commentary literature. So myself Sulabh Jain, and I am doing my PhD from Department of Philosophy, University of Mumbai. My screen is visible? Yes. Thank you. So I have used the primary sources written by Kundu and his commentaries, some of his works, and the main idea behind this paper is that when all these three texts, although there are multiple texts written by Kundu and many are available, but these three texts, Samyama, Pravachanasara and Panchastika Sangra, and on these three texts, the commentary by Amrit Chandra Acharya, although the commentary is written by Acharya Jain and others also, but particularly the commentary by Amrit Chandra, he introduces the verses, introduces the text, in fact, by saying Ahiṁsā Avataraha. Now, like my predecessor who have
already explained a lot about sutra, so I will not be going much into detail of the sutra, of that meaning of the sutra, but here the question arises what this is a text in the form of verses, not the Sanskrit text. This is a Prakrit text. And here the commentator is introducing the verses by using the term sutra. And another thing is avatar. Now another question would be around here that whether there is Anekāntavāda in Jainism or not. So just taking these two questions into account, the use of the word sutra and avatar both, what are the semantics here while using these two words? So while moving to this, the traditional meaning of the term sutra, which already have been discussed earlier, so that which is expressed in few syllables, is free from ambiguities for the persons, and is able to decide on esoteric matters, is perfect, logical, and accurate, is defined as sutra, and this has been defined in many sources. So this is one of the traditional meaning. Another traditional meaning for the word sutra is thread, sutra. Okay. And but this meaning is not just the sutra, but also for a text. A treatise is also termed as a sutra, because in addition to being a concise nature, the sutra aphorisms, but the way in which it is bounded, the aphorisms are bounded, therefore the whole text is also referred to as sutra. So in that sense it is not just being aphoristic in nature, being concise in nature, but also it is bounded. The whole text is bounded in a sense. So even in that sense, the literal meaning of the word sutra can here be accommodated for a text also in both the sense. This meaning has also been present in Samyama, Parshwanath, in the primary text, Samyama, in Vidyapeeth also, the word would be sutra, and even in the commentaries also, many places for this particular meaning, the word sutra is present. So a very good support for my whole argument comes from the Shyapad Manjari Slok, where they say that the word sutra signifies three meanings: a text, a thread, and an arrangement or a system. But what I want to offer here, what I want to say here, is the extended meaning of the term sutra in Jain texts and commentaries, and this is somewhat applicable in the Pali text in Buddhism also. And this has been very much highlighted by Johannes Braunfast in his paper Sutras. So he there brings the two meaning of the sutras, one which is found in the Brahmanical Vedic literature, and the other where the word sutra is being used for the words of the Jaina, and in case of the Buddhism, for the words of the Buddha. So that meaning, so with that is what I am focusing right now. So in Ahiṁsā Gatha verse number 34, the sutra is defined as something as those which are the teachings of Lord Jaina, and through his divine words which are in the form of physical matter, those are positive. And these sutras are the scriptural knowledge. So here the scripture and the knowledge which arises through the scriptures both are considered to be as the sutra. So scripture or the word of the Jaina, this is one particular meaning of the word sutra. Then the similar meaning is also present in Bhagavati Aradhana and other literature also, Kasaya Power, all of the others, where all the agamas composed by the Gandharas are also called as sutra. So not just the word of the Jaina, but the compositions of the Gandhara are also seen as the sutra. Here there is one very important discussion found in Kasaya Prapat, where although it has been established that the word of the Jaina and the Gandhara are known as sutra, but then how to
say the word sutra for the works of Kundukunda. Similarly, there is a question arise for the works of the Kasaya part, how it can be termed as a sutra. And so there, the answer was given that because the gathas or the works of Gundhar Bhattacharya, which is the Kasaya power, is composed in few syllables and it is reasoned, it is so in that sense also it is comparable to the sutra. And because the words of Kundukunda or Gundhar are not their work, but it is coming from the tradition and they are just they are transmitting that knowledge. So the Mool Granth Kartaha will always be the Jina, and Uttar Granth Karta will always be the Gartha. Therefore, all these works would still comprise the meaning sutra. That is the words of the Jina. So this I have just highlighted in Samyama the following verses, some of the verses. Similarly, Pravachan Sarya and Panchastikaya Sangrah, where this particular meaning of the sutra as Dravyaswar or the scripture is being present. And moving forward, the other meaning of sutra which is present in Samyama Tatparivritti Tika by Jain, where he says that sutras also Sutra Parichitti Rupam Bhavasut Gyan Samayati. So even the Bhavasut Gyan is considered to be Srut as per Jain. So the knowledge. And at other places in Dhavla, the sutra word is used for Srut Kevli also. So these are the different usages of the word sutra, which are other than the general understanding of the word sutra, which is a concise aphorism. Now, so I have many references, but I'll just move on forward with the avatar thing. Avatar, generally the word avatar comes when in Brahmanical literature there are the so avatar of the Lord, that sort of a meaning is present, but that sort of avatar is not present in Jainism. So here, although there are some texts like Sutra Avatar, Nyaya Avatar, Tarka Avatar, these texts are present, and even in very lucid manner, the many bhajans and stutis, they also use the word avatar for the birth of the Tirthankar. But that is not a sort of avatar which is present in the Brahmanical literature. So here also there is a different sense of the word avatar. So here I am just concluding. This is my second last slide. So here the word avatar is just providing some sort of a reverence to the words of Kundukunda. So that is why the verses which are written in Baptist form are also when Kundukunda is presenting them, Amrachand is introducing them as some sort of an avatar. So that is in a form of a reference which is given to the Kundukunda's literature by Amrachandra. And so reference also, this shows both the meaning of the sutra and the word avatar which has been used in this literature. They show some sort of a flexibility which the commentators have accommodated when the Jaina commentators have accommodated, and we can also see the three nayas, the three sabdanayas. Here we can link them, the sabda samavirud and evam rudna. So samavirud, where a particular meaning has been aligned here. So in this literature for something special. So not the general meaning, but we have to see the particular meaning which is being provided. So with this, I can close my. Okay, just conclusion. So I have already discussed that. One more point here. So the status given to Kundukunda in Digambar tradition particularly
justifies this extension, justifies this label which Amritchandra is giving to him, Sutra Avatar. So the words of Kundukunda is labeled as Sutra, similarly to the words of the Jinna and even Avatar. So for the reference which he has provided to those texts. So with this I'll close. So these are the references. Okay. Okay, thank you, sir. Thank you so much, sir. Any question? Yes, sir. One question here. From here it is possible. No. From here it will be. Yeah. So thank you, sir, for your nice presentation. But one thing I would like to ask you, what about the traditional definition of sutra, which is available in our literature from the very beginning? That is a sutra is called which is composed by very little word, salpaksharam. It should be clear on asandigdham, saravat, vishatomukham, astobham anabaddhajya, sutrang sutra vidovidya. The Jain scholar, did they ignore this thing or something they told new? Second question is how sutra is related to avatar. I cannot have any linkage between two. So you have given avatar, I understand it is loka hitokari and some other things are there, and it comes from the avataran, that is descent from the someone. So how can you relate sutra to avatar? I cannot have the idea. Please do it. Thank you, sir, for the question. Very generous question. So the word sutra, which the traditional meaning is there in Sanskrit literature everywhere. So that meaning is also being present. So like we have the Tattva Sutra, there are many sutra granthas, Parisham Sutra, and many sutra granthas are there in Jainism also, Jainasm literature also. But in addition to that, the meaning of the sutra which is present in Jainism and even in Pali text in Buddhism has to be looked. So the word sutra is not just limited to that Sanskrit aphoristic, like Panini Sutra and all of that. But this additional meaning has to be seen. And there is one Agam also, Sutra Kritan Agam is there in Shvetambara tradition also. So all of that is present, and the meaning which you have highlighted, that it should be concise and all of that, alpakshar, masandigdam, sarvaguna nirnayam, nirdosam. So that is also present. So the commentators will highlight that even these verses are concise. Why this is a 415 verses text, how this is concise? But I'll just add one point to it, that because multiple commentaries have been written, so much is extracted from them. This means that it has something of a concise nature, and that is why so many commentaries and such a వ్యాఖ్యాన is possible of those verses also. So they also have that concise meaning also. Coming to the second question, so can I take it? Avatar. Sir, in a summarized way, give your answer. So, while pondering on this particular question, I just remember one pravachan of a sort, where Samyama was introduced in a form that मोह का क्षय करने के लिए आचार्य कुंदकुंद देव ने समय को अवतरित किया. Just like the sense where there is some मतलब कुछ बहुत जगत में बहुत कुछ ऐसा चल रहा और उसको दूर करने के लिए भगवान का अवतार होता है. So on similar terms, the Samaya star is present or is born, not born, but it comes to destroy the moha and the karma samrat. So that meaning can be accommodated somewhere. That can be understood, but how can you relate it with Sutra? Jain, yes sir. Jain Sutras.
The meaning of the Moh is present in the Jaina literature also. Okay. So the whole of the Samyama and whole of the Jaina texts are there to how one can get rid of the Moh Ragdvesh, how can get rid of the Kasaya, how one can get rid of Vidyapeeth. So to remove all those, the Jaina literature has come. The Jaina Agam is Avtarit hua. So that meaning can be accommodated in that sense. So Avtarit means coming into being. Any other quick question? Thank you, sir. Any other quick question? No? May I just thank you so much for your scholastic paper. Have to go there. And please do contemplate on what sir has asked you. And in addition to this, just wanted to ask you, because you have used avatar, and in Buddhist literature also, not only in Pali, but also in Buddhist Sanskrit literature, like Madhyamaka avatar, Abhidhamma avatar. Of course, avatar is not in a sense of, the incarnation. But because your paper is also dedicated to semantic analysis, what you have told. And semantic analysis, what I do understand is Nirukta or a Nigantu, right? So do you find any Nigantu or Nirukta type of kosha or book in practice literature? And if it is there, then how it is defined? I mean, the avatar word has been defined by means of semantic analysis, I think. So this is my Sir, one is I just present my view, because the word avatar has not been clarified much. So it is just how Amrachand has introduced the text, Artha Sutra avatar. So I was looking for what could be the meaning of avatar, and this is what I come up with. So that was my paper all about. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for the questions. Next paper is Priti Bajate. Online paper. Yes, ma'am. Namaste. I'm audible? Sunai dega? Okay. Yes, please. Okay. Please allow me to share the screen. Just a minute. Is it visible? Yes, it is audible. Please continue. Okay, thank you. आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सभी सम्मानित विद्वानगण, सादर जय जिनेन्द्र। मैं आपके समक्ष अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका विषय भारतीय गणित की जैन परंपरा में विकसित संचय मतलब कॉम्बिनेशंस की अवधारणा और उसका आधुनिक शिक्षा से जो संबंध है उस पर बेस्ड है। प्रस्तुति से पहले I would like to kindly inform you that due to printing mistake, ब्रोशर में जो मेरा टॉपिक मेंशन किया गया है वो अलग है, इनकरेक्ट है, और मेरे शोध पत्र का टॉपिक है भारतीय गणित में संचय सूत्र का प्रथम व्यवस्थित निरूपण और आचार्य श्रीधर तथा आचार्य महावीर का योगदान। गणित मानव सभ्यता के बौद्धिक विकास का एक आधार रहा है। प्रारंभ में यह दैनिक जीवन की आवश्यकताओं, गिनती, माप और व्यापार से जुड़ा हुआ था, किंतु समय के साथ यह एक सुव्यवस्थित और सैद्धांतिक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। गणित की विभिन्न शाखाओं में संयोजनात्मक विश्लेषण अर्थात कॉम्बिनेट्रिक्स, जिसको आधुनिक गणित में हम क्रमचय संचय कहते हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण शाखा है जो यह बताती है कि किसी समूह में से कितने प्रकार से चयन या संयोजन संभव है। आधुनिक समय में इसका उपयोग केवल गणित तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, लॉजिक, खगोल शास्त्र, यहाँ तक कि दार्शनिक चिंतन में भी इसका उपयोग हो रहा है। पहले हम क्रमचय और संचय की संक्षिप्त परिभाषा देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो उनमें तो किस ऑर्डर में कितने प्रकार से लगाई जा सकती हैं, इससे हम क्रमचय के फॉर्मूले से पता करते हैं। और जितनी भी वस्तुएं दी हैं उनमें से कुछ पर्टिकुलर वस्तुओं को सिलेक्ट करके अगर उन्हें कुछ क्रम में लगाना है तो यह संचय के फॉर्मूले से अर्थात कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से पता चलता है। और इसका जो आधुनिक सूत्र है वो स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है। इस तरह से इसको आजकल प्रेजेंट करते हैं। लेकिन मेरे शोध का प्रश्न यह है कि ये जो क्रेडिट दिया गया है पश्चिमी गणितज्ञों को, और ये कहा गया है कि ये 17th
ईस्वी में अर्थात 1650 में यह प्रतिपादित हुआ है। तो हमारा शोध ये अध्ययन यह दर्शाएगा कि एक्चुअल में हमारे जैन आगमों में काफी समय पहले, शताब्दियों वर्ष पूर्व पहले ही यह सूत्र आ चुका है। भारतीय गणितीय परंपरा में क्रमचय एवं संचय की सोच बहुत ही प्राचीन है। जैन आगमिक साहित्य जैसे षट्खंडागम की धवला टीका, गोमटसार, भगवती सूत्र, अनुयोगवाद सूत्र में इसके अनुप्रयोगों की चर्चा मिलती है। वैदिक परंपरा में आचार्य पिंगल के छंद सूत्र में मेरु प्रस्तार के माध्यम से तथा द्विपद प्रस्तार के माध्यम से भी इस संयोजन गणित को दिखाया गया है। हालांकि इन सभी ग्रंथों में संचय का प्रयोग आवश्यकता पर आधारित था, सिर्फ एक अनुप्रयोग के रूप में, व्यवहारिक रूप में उसे दर्शाया गया था, लेकिन उसे एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक गणितीय सिद्धांत के रूप में स्पष्ट रूप से सूत्रबद्ध तब तक नहीं किया गया था। और यहीं से हमारी जैन गणितीय परंपरा का विशिष्ट योगदान सामने आता है। सबसे पहले यह जो सूत्र है ये हमें प्राप्त हुआ है आचार्य श्रीधर का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है पाटीगणितसा, जिसे कि त्रिशतिका भी कहा गया है, जो कि 750 ईस्वी में लिखा गया था। उसमें यह एकायुक्तर विधि के नाम से एक श्लोक हमें प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 72 में ये श्लोक भी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसका जब हम अर्थ करते हैं हिंदी अर्थ, तो यह सीधे सीधे एक सरल और तार्किक मेथड, एक प्रक्रिया प्रस्तुत करता है, जिससे कि हमें संचय का फॉर्मूला प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ भी उन्होंने संचय को किसी सूत्र के रूप में नहीं लिया था, बल्कि एक गुणन और विभाजन की प्रक्रिया के रूप में समझाया था। लेकिन बहुत ही सुंदर उदाहरणों के द्वारा उन्होंने इसे प्रस्तुत किया था। एक उदाहरण मैंने यहाँ तालिका के अनुसार यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है कि उस ग्रंथ में एक उदाहरण है कि ये जो 6 रस होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा वगैरह जो 6 रस हैं, इनको मिलाकर कितने प्रकार के व्यंजन संभव है। तो उन्होंने अपना जो प्रक्रिया बताई है उसके हिसाब से जो संख्या निकाली और आज के आधुनिक सूत्र को यूज करके जो संख्या मिलती है वह बिल्कुल सेम है। मतलब यह दर्शाता है कि यह जो फॉर्मूला था यह हमारे ग्रंथों में काफी प्राचीन समय से ही यह प्राप्त हो रहा है और एकदम सटीक है। इसके पश्चात जो एक सबसे बड़ा योगदान है आचार्य महावीर का। आचार्य महावीर 9वीं शताब्दी में हुए हैं और 850 ईस्वी में उनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ गणित सार संग्रह लिखा गया था, जिसमें प्रस्तार योग भेद इस नाम से हमें एक गाथा प्राप्त होती है, गाथा नंबर 2/1918, जिसमें कि इस सूत्र का पूरा प्रतिपादन बिल्कुल संख्यों की अवधारणा से प्रेरित है। संख्यात्मक रूप से यह प्राप्त होता है कि आप न्यूमरेटर में किस तरह से गुणा करेंगे और डिनोमिनेटर में किस तरह से गुणा करेंगे और उसके बाद किस तरह से भाग दिया जाएगा। तो हमें यह क्रम और संचय, क्रमचय, इनके फॉर्मूला प्राप्त होंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सूत्र 1150 वर्ष पुराना है। जो क्रेडिट हम पश्चिमी गणितज्ञों को देते हैं, पास्कल, फर्मा, यूलर, इनके द्वारा यह सूत्र प्रतिपादित किया हुआ माना जाता है, उससे भी यह 800 वर्ष पहले ही हमारे भारतीय प्राचीन जैन ग्रंथों में पूरी तरह से विकसित हो चुका है। इसके पश्चात महावीराचार्य ने भी इस सूत्र को केवल सिद्धांत तक ही सीमित नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने इसके लिए भी बहुत सुंदर उदाहरणों द्वारा इससे और सरल बनाया, सरलता से समझाया गया है, जिसमें रसों का संयोग, जो अभी हमने देखा 6 रसों के संयोग से किस तरह से अलग अलग टेस्ट के व्यंजन बन सकते हैं। इसके अलावा रत्नमालाओं को किस तरह से गूंथा जा सकता है। अगर हमारे पास हीरा, मोती, माणिक, अलग अलग तरह के रत्न हैं तो किस तरह से डिजाइन बन सकती है। इसके अलावा पुष्पमालाएं, अगर हमारे पास चंपा, चमेली, गुलाब, इस तरह के अलग अलग पुष्प हैं तो किस तरह से डिजाइन बन सकती है। ये सारी चीजें हमारे ग्रंथों में दिखाई गई है। अगर हम आधुनिक गणित से इसकी तुलना करें तो श्रीधर और महावीराचार्य के सूत्र आधुनिक जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उससे पूरी तरह से सामने रखते हैं। और इसके साथ ही
यह और बेहतर है क्योंकि जो आधुनिक फैक्टोरियल जो फॉर्मूला बताया गया है और उसमें जो फैक्टोरियल प्रणाली है उससे भी यह गुणन और विभाजन की प्रक्रिया ज्यादा सरल है, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। अंत में निष्कर्ष रूप में मैं यह बताना चाहूंगी, जहां से हमारा यहाँ शोध पत्र इस सेमिनार के मुख्य विषय से जुड़ता है, कि यहाँ जो गणित है और ये जो प्रणाली है ये जीवन दर्शन और साहित्य को जोड़ती है, जो कि आज की एजुकेशनल सिस्टम में अत्यंत आवश्यक है। जैन दर्शन का मूल उद्देश्य केवल सूचना देना ही नहीं है, और जैन गणित भी केवल अंकों का खेल नहीं रहा है, बल्कि यह सम्यक ज्ञान अर्थात सही संतुलित और नैतिक समझ प्रदान करता है। प्राचीन जैन गणितीय पद्धतियां हमें यह सिखाती है कि शिक्षा केवल प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं है, बल्कि सोच, धैर्य और विवेक के विकास के लिए है। और आज की जो स्टेम शिक्षा है, जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के फील्ड में जिस तरह से प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि जो श्रीधराचार्य की प्रक्रिया आधारित पद्धति है और महावीराचार्य की जो सूत्रात्मक पद्धति है, यदि उसको अपनाया जाए तो यह शिक्षा और अधिक रोचक, सुलभ और प्रभावी बन सकती है। मेरे शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे जो प्राचीन जैनाचार्य हैं उनका जो योगदान है हर क्षेत्र में और विशेषतः गणित के क्षेत्र में, उसको पुनर्मूल्यांकित किया जाए, उनका श्रेय पूरी दुनिया के समक्ष लाया जाए और इसके साथ ही उनकी पद्धतियों को अपनाया जाए, जिससे कि हमारे इतिहास को भी सम्मान मिले और भविष्य की शिक्षा को भी एक नई दिशा और एक रोचक और सरल दिशा प्राप्त हो। धन्यवाद। ओके, थैंक यू मैम। मैम, पहला क्वेश्चन मेरा ही होगा जी। क्योंकि मैम आपने गणित का विषय लिया है, तो मेरी जिज्ञासा यह है कि आप मैथ से जब श्रीधराचार्य के गणित से आप महावीर गणित को जोड़ रहे हैं, तो मेरी इच्छा हुई कि आप कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लिए होते और कोई एक सूत्र लिए होते। जैसे कम्यूटेशन और परम्यूटेशन आप बता रहे हैं, तो जैसे हम 5 कम्यूटेशन लगा लेते हैं तो उसको 5, 4, 3, 2, 1 पे आते हैं, फिर अपान उसका जो लिखते हैं उस सूत्र को कैसे हम खोलेंगे और कैसे हम मैथ से कंपेयर करेंगे। एक तो मेरा यह क्वेश्चन है मैम, काश आप इसको ऐसे बताइए कि थोड़ा हमारी जो जिज्ञासा थी वो पूर्ण हो, आप ऐसे कुछ बताइए। और दूसरा यह है मैम कि जैसे आप बोले कि 6 रस है, उससे कितने व्यंजन बन सकते हैं, तो शायद सेट का या जो समुच्चय का सिलेबस है उसमें हम जो सेट पढ़ते हैं उसको आप किसी फार्मूला से, जो सूत्र है महावीर का, उससे कोई रिलेट करके कोई एक नंबर लेके आप हमको अगर समझा सके मैम, ऐसी मेरी जिज्ञासा है। हाँ जी बिल्कुल, वो जो मैंने एक तालिका बीच में मैं शेयर कर रही थी, मैं फिर से वो कोशिश करती हूँ एक बार शेयर करने की, तो उससे आप बहुत इजीली समझ सकेंगे। थोड़े समय की कमी की वजह से मैंने थोड़ा जल्दी से उसे आगे बढ़ा दिया था। जस्ट अ मिनट। मैम ये देख पा रही हैं ये तालिका? यस मैम। ओके, तो जो एकात्तर विधि श्रीधर की और महावीराचार्य की जो प्रस्ताव योग विधि है, ये इस कॉलम में जैसे हमने दिखाया कि यदि हम 6 रस लेते हैं तो हम न्यूमरेटर में 6 रखेंगे और अगर उसमें से हमें एक ही चुनना है तो डिनोमिनेटर में हम 1 रखेंगे और इस तरह से हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह 6 प्राप्त होगी। यह पुराने ग्रंथों में यह विधि है। इसी प्रकार अगर हमें 2 रस चुनना है तो न्यूमरेटर में जितनी कुल संख्या है उसमें से 1 कम करके उन दोनों का गुणा न्यूमरेटर में रखा जाएगा और जितनी संख्या हमें चुनना है उसमें 1 बढ़ा करके उसका गुणा डिनोमिनेटर में रखा जाएगा। जैसे 6 रस है तो 1 कम करके, मतलब n है तो n into n-1 ये न्यूमरेटर बनेगा और डिनोमिनेटर में जैसे हमने r वस्तुएं चुनी है तो r और r+1 ये डिनोमिनेटर बनेगा और इस तरह से वो गुणन और भाग की प्रक्रिया से हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह 6 रसों में से 2 को चुनकर कितने हमें क्रम, कितने चयन मिल सकते हैं, कितने विन्यास मिल सकते हैं, वह संख्या हमें मिल जाएगी 15।
और इसी को आधुनिक गणित में ये जो 6C1, 6C2 ये जो दर्शाया गया है, ये इस फॉर्मूले में जो हमने यहाँ दर्शाया था। तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है कि जितनी संख्या है 6, तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये फैक्टोरियल 6 होगा। फैक्टोरियल r मतलब हम जितना चुन रहे हैं मतलब 2, तो फैक्टोरियल 2 मतलब 2 into 1, और n minus r मतलब 6 minus 2 मीन्स फैक्टोरियल 4, तो 4 into 3 into 2 into 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें सेम वही संख्या मिलेगी 15। तो ये इतनी सारी जो प्रक्रिया, मेरा आशय यह था कहने का कि इतनी प्रक्रिया जो फैक्टोरियल के माध्यम से आजकल सूत्र में बताई जा रही है, उससे यह जो एकाद्युत्तर विधि है और महावीराचार्य की सेम इसी तरह से जो प्रस्तार योग में एक विधि है, वह और अधिक आसान है और आसानी से समझाई भी जा सकती है, जबकि दोनों सेम ही है, सिर्फ उन्हें दर्शाने का तरीका अलग है। Thank you so much, Preeti Madam. Thank you so much for your wonderful presentation. Thank Any you. questions? No. Okay, मैम पास्कल तो 17वीं शताब्दी के थे ना? Pascal was a mathematician in 17th century, right? 17वीं शताब्दी। मैडम आपने पिंगलाचार्य के बारे में तो पढ़ा है ना, सुना है ना? पिंगलाचार्य जो दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के थे। हाँ, ईसा पूर्व 200 शताब्दी ईसा पूर्व। उनसे कोई संबंध मिल रहा है क्या? पिंगलाचार्य को जैन लिटरेचर ने आधार मान के किया या जैन को आधार मान के पिंगलाचार्य ने किया? आपका क्या मानना है? जी बिल्कुल। मेरा जो चल रहा है वो क्रमचय संचय पर आधारित है। तो इसमें जो सबसे अच्छा सुंदर टॉपिक और जो सबसे अच्छा अनुप्रयोग मुझे प्राप्त हुआ है वो छंद शास्त्र में प्राप्त हुआ है, कि जहाँ पर मात्राओं और वर्णों की जो संख्या है, दीर्घ और लघु जो स्वर माने गए हैं, उनके अलग अलग विन्यासों से अलग अलग प्रकार के छंद बनते हैं। तो यह पिंगल ने सबसे पहले, आचार्य पिंगल ने सबसे पहले जिस तरह से जो उनका मेरु विस्तार बताया था इस पद्धति के लिए, सेम वही पास्कल ने यूज किया है, जिसको कि पास्कल ट्रायंगल कह रहे हैं आजकल आधुनिक युग में। और ये बिल्कुल मेरे शोध में भी और इससे पहले भी जो शोध हो चुके हैं उसमें ये साबित किया गया है कि ये वही है, मेरु विस्तार और पास्कल ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, इसको निकालने की प्रक्रिया भी सेम है। तो ये जो पूरा क्रेडिट है, ये पिंगल ने तो उसे अनुप्रयोग के रूप में यूज किया था, लेकिन उनके बाद जो हलायुद्ध हुए हैं, हलायुद्ध ने बिल्कुल उसी तरह से प्रयोग किया जैसा पास्कल ने किया था। तो कई जगह से हलायुद्ध ट्रायंगल भी कहते हैं हमारे ग्रंथों में, जो हिंदू ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है, उनमें। पिंगलाचार्य जो छंद शास्त्र है उसके प्रमाण हमें जैन ग्रंथों में हेमचंद्र और एक अभी मुझे एक पुस्तक प्राप्त हुई जिसमें समंतभद्राचार्य का छंद शास्त्र बताया गया है, उसमें भी कोई प्रमाण Okay, thank you so much, ma'am, for your wonderful paper presentation and very nice answering, ma'am. Thank you so much. Next paper is Dr. Anant, Ahiṁsā in Education. Online paper. Dr. Anant. Yes. Can you hear my voice? Yes, audible. Hello. Yes, sir. Yes, it is audible. Okay. Good afternoon to everyone. And I'm going to share my first PowerPoint. Sorry, actually this is the first time using from the mobile phone. Can you see my face also? Yes. In
pluralism. Okay, can I continue? Yes, please. Okay, thank you. Good afternoon, respected chairman and distinguished delegates and fellow scholars. I'm going to present my paper. The title is Ahiṁsā in Education, Integrating Non-Violence as a Core Value for Transformative Learning. Actually, this paper is examines how the principle of Ahiṁsā can serve as a foundation for creating peaceful, inclusive, and transformative educational environment. So, in the introduction part is the fundamental of this Ahiṁsā concept of Jain philosophy is it emphasizes respect for all sentient beings based on the principle of interdependence, which is relevant in contemporary education, which faces the academic pressure, social conflict, and mental challenges. From the competition to compassion, Ahiṁsā calls for empathic learning environment that reduce harmful competition and cultivate cooperation. Instead of viewing other students as rivals, Ahiṁsā encourages fellow learners as collaborators in growth. Such orientations align with educational practices that emphasize social and emotional learning, which research shows can reduce stress and build resilience in students. Then the concept of this Ahiṁsā means avoidance of harm, that is physical, psychological, and emotional, which promotes respect, compassion, empathy, and ethical foundation for humane education. And the rationale of the study of Ahiṁsā is for rising violence, aggression, and competition in education, which is required for value-based and compassionate learning. That means the education should promote moral sensitivity, emotional well-being, and cooperative learning. Ahiṁsā as a transformative educational value. That it has to be preserved, like in the traditional academic pressure, such as competitive scoring and ranking, external expectation-based motivation, and such other examples are stress-inducing assessment and performance-driven identity. From the Ahiṁsā-oriented educational perspective, we need to have cooperative, compassionate learning, instinctive motivation through meaningful engagement, restorative supportive evaluation, and holistic self-development. And the objective of this paper is to examine Ahiṁsā as a core educational value to explore flexibility in integrating non-violence in education, to analyze its role in transformative learning, to suggest practical strategy for implementation that the transformative learning focuses on self-reflection, number one, number two, ethical awareness, and the number three, holistic development. Which way Ahiṁsā supports inclusive classroom, emotional intelligence, and peaceful learning environment. Therefore, Ahiṁsā in education institutions that integration into curriculum, school culture, and teacher learning process, which encourages respectful teacher-student relationships, reduction of bullying and aggression, and cooperative and participatory learning. So, in finding the study of this Ahiṁsā or non-violence improves classroom harmony, student engagement, and teacher-student trust, which promotes moral development, emotional balance, and social responsibility. That way, the educational outcomes of the Ahiṁsā is that the development of caring individuals, morally upright citizens, and emotionally balanced learners. Therefore, education becomes value-oriented, humane, and transformative. So, the practical strategies of implementing Ahiṁsā is the mindful and compassionate communication, peaceful conflict management, and focus on emotional and psychological well-being that
creates a supportive and inclusive environment and reduces unhealthy competition and fear-based learning. So, from the policy perspective, that is National Education Policy 2020, that emphasizes holistic development of learners, value-based and ethical education, and social and economic learning, which focuses on empathy, respect and cooperation, and the reduction of rote learning and excessive competition. So, Ahiṁsā and peace education of the framework is that peace education promotes non-violence, dialogue and tolerance, conflict resolution through understanding, that Ahiṁsā strengthens moral responsibility and the connectedness of life and respect for diversity. So, that NEP 2022, the policy alignment is that the education must aim at developing not only cognitive capacity but also ethical, emotional and social capacities. Therefore, Ahiṁsā directly supports the NEP visions of holistic and human education. From the UNESCO perspective, education should develop the values, attitudes and skills that enable people to live together in peace. So, when we link in Ahiṁsā with the 5 key strategies, that is, the number one is mindfulness and compassionate communication, that is, an atmosphere of trust and respect is essential for meaningful learning. The second part is peaceful conflict management, that is, the dialogue instead of punishment and the restorative practices instead of fear. And the third point is emotional and psychological well-being, that is NEP 2020 prioritize mental health, conflict support and student well-being. And the fourth point is supportive and inclusive environment, that is inclusion, dignity and equity. That way, Ahiṁsā ensures non-harm in thought, speech and action. And the last point is reducing unhealthy competition that shifts from comparison to cooperation, learning as a growth, not pressure. So in the conclusion part, Ahiṁsā is a cornerstone of holistic education which goes beyond academic achievement, which nurtures compassion, moral integrity, social harmony and contributes to building a kinder and peaceful environment. Therefore, Ahiṁsā as a policy align education ethics and complements in 2020 holistic vision that the global peace education goal is for education rooted in Ahiṁsā, produces caring and responsible citizens, promotes moral and emotional intelligence, and builds peaceful societies. That is, it transforms education from mere instruction into character formation. Sir, please Thank you. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Thank you. I'm sorry that I could not share that PowerPoint. Okay. Any question? Sir? So the floor is open for if you have any question. Any question? I think you are very clear in your presentation. No question. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Thank you so much, sir. Okay, thank you very much, and thank you for your patience also. Okay, thank you. Bye. And last paper is Professor Saroskantakar, sir. Please. Special lecture, please. So this is a special lecture from respected Professor Sarsat, and so we can take advantage of that. So I shall take only 5 minutes. Sir, please take your time. We don't, no. Have you the display? So, the simple thing, honorable chairpersons, my grand teacher, and all the delegates and student friends, I am thankful to the organization and to all of you to give me
this opportunity to present at the last moment, the last drop of nectar, I think. So surplus is. So thing is, Buddhism has Buddhism and Jainism. They have developed different systems of meditations. Buddhism developed the Vipassana meditation, and Jainism developed Metta meditation. So these two types of different meditations we are aware of somehow, and many people all of us have practiced it. Similarly, there are some Western kind of things. How did it move? Did you move from here? Next. That is called mindfulness based stress reduction, or MBSR. And the next, mindfulness based cognitive therapy. Actually, the Western thinkers have developed all these two types of therapy or the stress reduction system, following the Jaina Prakhya meditation and also the Buddhist Vipassana meditation. What happens? They are applying it as educational policy, as part of education for counseling, and I am using it for philosophical counseling. So Vipassana, Prakhya, similar to all these things, can be applied for philosophical counseling or any type of counseling, conflict management also. And next, you can open all these, make the next. So this is the successive progress in meditation. So whatever we are doing in Vipassana meditation, here in the left side, the similar kind of things are developed in the Prakhya meditation by Acharya Mahapragya. So I am making the comparing these things. First we go for the focusing on body, or Kaya Vipassana. Sir, you can make next. No, not. Okay, like that. So focus on the body. Suppose when we are sitting, or in the first order of practices, we are focusing on body. So that is called Kaya Vipassana. Kaya means body, Vipassana means looking at. So we are observing. We are passive observer, so not active observer. Passively looking at and making the meditation on Kaya, our whole body. Similarly, in Jaina Prakhya, it is Sarira Prakhya. We are Prakhya means looking at the Sarira, the body. The second stage is Swasa Vipassana. We are looking at our breathing, how the breathing is longer, shorter, and how it is deep going. And similar also in the Prakhya meditation is Swasa Prakhya, looking at the breathing. The third stage is focusing on five senses. All our five indriyas, we are focusing on one by one after another, all these indriyas. That is called Vedana Vipassana. So if we are feeling some kind of difficulty somewhere, similar kind of things in Indriya Savikhya in Jaina. So fourth stage is focus on mind, that is Chittanupassana, and the similar is also Prakhya, it is Chaitanya Kendra Prakhya. In the fifth stage, we have to focus on Dhamma, that is Dhammanupassana, and in Jainism, it is similar kind of things, Upajita Dhyana. So the fifth stage is not possible for many of us, but up to the fourth, it is possible. And all the teachers, students who are suffering from stress, or anybody else suffering from stress, can practice it. There are different methods also, going and you have different systems. So we can practice, and we can find that we can reduce our stress, and we can have we can develop our well-being, mental, emotional, and also cognitive. Thank you. This is my. So Vipassana, what type of thing? One is Vipassana, that is in Pali, Vipassana. And you have written Vipassana Talvasu. Yes, God. And how it can help in education. Vipassana meditation near Bombay. It will help for the person to be composed.
to develop we choose. Reducing the stress, anxiety, similar kind of disorder, which are first disorder in the psychic aspect, and then it will have a similar effect in the somatic aspect, in the body, physical aspect. So since psychosomatic we are giant, we are not a dissociative problem. So by practicing the meditations, we will reduce this stress, strain, everything else. So physically also we will be more fit. That is the part of the counseling, practicing for these things. And then it will help, it will develop our cognitive aptitude, emotional well-being, and also our spiritual well-being. So this way indirectly it is helpful. But people many times do meditation before taking the lessons or teaching also. And I am practicing many times all these things in my classroom also for the last 2-3 years. And I am finding that for 2 minutes or 1 minute of Vipassana, any of the Vipassana, for 1 or 2 or 3 or 4, it is helpful for comprehending and also remembering the Sanskrit verses, which was very difficult. So there are certain centers of Vipassana in Igatpur near Bombay. There is one. So from where you have learned? In Pune also there is going as so Bombay. They have a dialect. They are not dialected. They have developed in different ways. Going has different ways. Concentrate on different centers, different types of swastika. But I have the simpler things are there in the whatever Buddha says in Tripitakas. Thank you, sir. I found your presentation quite interesting. Only thing I was wondering is that in case of psychological counseling, we have trained therapists. So people who need that kind of service, they have formal clinics and therapy sessions, everything. So what about propagating this kind of philosophical counseling that you are proposing? Because for lay persons who are not acquainted with these specialized techniques of Vipassana, Preksha, etc. So how would they be made aware of that? And are there any guidance counselors, or what would be the framework, or what would be the methodology by which they could practice it in their own lives, like lay person? Okay. Thank you. Actually, we all are lay persons. Our like Vyasa, Narada, those people, those kind of people, as depicted in Puranas, they are giving similar kind of things, and we say that this is philosophical counseling. Philosophical counseling means in a cognitive level, in the level of will, they can sense the person's attitude and aptitude. As Krishna said, made for Arjuna in Gita. So similar kind of developing the auto understanding, to directing their mind to understand from the spiritual point of view, social point of view, moral point of view. So from all kind of understanding, point of view of understanding. And once the understanding is clear, then they will develop the insight. And these kind of meditations that develop help for developing the insight. That is why the Vipassana is called insight meditation in English also. No, I understand that, sir. My question was, what would be the formalized version of spreading it in public or making public aware that such kind of guidance counselors are available in case of philosophical counseling? So what would be the policy for implementing these things in the practical, practical life? Teachers have to understand from the scripture. There are teachers also to teach it and to learn and then to test it with the students, with ourselves, and then slowly it will be. Philosophy is also a very old concept, but now we have to take up it from the Indian knowledge system. We are taking all these things, whatever is possible, and accommodating with these things. Thank you. Just one. There are possibilities and challenges, but we have to overcome. Thank you for philosophical counseling is being done these days, and there are societies also, but it is not that much still in. Yes. Yeah. Sir, what you have consulted for Buddhist Vipassana, I am so happy. First of all, I am thankful to you because in this conference, this is the first presentation from Buddhist meditation, and this is my specialization. Yes, sir. And I am from Buddhist background, and so I am asking you, what is your, Satipatthana. Satipatthana Sutta? Yeah.
have you the Padma Shri Jain? I This recommend you to is very some years back when I was in Nalanda University. No, he has been contributing a lot. He is one of the best psychotherapists, counselor, psychiatrists, and a lot of people I have shall take your help to develop and, more things. I just I wanted to tell you in one sentence. Please consult. Please Yeah, make we Padma are- Shri Jain. yes, yes. Then we can have. I mean, and I can answer your question, and we can have discussion on if anybody wants. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये पेपर अब समाप्त हुआ इस सत्र का, और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हम प्रोफेसर अहिंसा सर को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और अपने सेशन को एड्रेस करें। सर प्लीज कम टू हियर एंड एड्रेस योर चेयर्स। पहले मैं पालिया बुद्ध का विद्यार्थी हूँ, तो मैं तीरथन का बुद्ध धम्म और संघ का मैं मंगल पाठ करना चाहूँगा। आप लोग जैन के बारे में पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं, आज तीसरा दिन है। उसके बाद मैं अपनी बात को रखूंगा। योग कटो ही पियप्पमय्यं कालं कोडंतो अति दुर्गराणि खेदंगतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिक शतस्य असंबुद्धं बुद्धनिसेवितं यं भवाभवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादिक्लेशजाल विध्वंसिनो दमवडस्ततस्स गुणे हियो शील समाधि पय्या विमुक्तियान पबुते युक्तो हेत्तं जनानं कुशलत्तिकानं तमर्यं संगं शीर्षा नमामि। यहाँ उपस्थित विद्वत वृंद, मंच पर पधारे अनुमेश जी, पिछले 2 दिन, आज मिलाकर तीसरे दिन से आप चिंतन मनन कर रहे हैं। मैं पाली और बौद्ध दर्शन का विद्यार्थी हूँ। प्रोफेसर रामनाथ पांडे जी ने कहा कि आप आए। मैंने कहा कि मुझे जैन दर्शन के बारे में बहुत कुछ याद नहीं है, तब भी उन्होंने कहा कि आप आए। इस समय मैं फाइनेंस ऑफिसर हूँ और कई फोन आ गए, पैसे चाहिए कर ले। हालांकि मेरा लगाया गया था वैलिडिक्ट्री में। मैंने सोचा था कि वैलिडिक्ट्री के पहले मैं वहां का काम कर दूंगा, तो अचानक कॉल आया तो मैं आ गया। वैलिडिक्ट्री में मैं नहीं रह पाऊंगा, तो वो बातें मैं यही शेयर करना चाहूंगा कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा पार्श्वनाथ विद्यापीठ का, जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को फैलाने का, प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। इससे महनीय सेमिनार के माध्यम से देश के अनेक भागों से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ढंग से लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे जो धाती है, हमारा जो धरोहर है, जिसे अंग्रेजों ने या कहें तो पश्चिम वालों ने हमारे ही धरोहर को लेकर अपना बता रहे हैं, उसी को खोज निकालने का यह सेमिनार एक आयास प्रयास है। आपने भी देखा, जो पत्र पढ़े गए उसमें गणित के बारे में भी देखा, विज्ञान के बारे में भी देखा। तो जितने भी ज्ञान है, हमें उसे अंदर झांकने की जरूरत है,
वो सारे हमारे उपलब्ध हैं। अब देखिए, जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है और हमारा ज्ञान जो है पश्चिम में जाता है, उसके बाद पश्चिम लोग जागते हैं और अचानक जो है वो इनलाइटेंड हो जाते हैं। वो हमारे ज्ञान से इनलाइटेंड हुए हैं और वो कहते हैं कि वह हमारी खोज है, हमें उसी को खोज निकालना है, उसी को देखना है। अब जो आज पूरा विश्व जो है वो आप देख रहे हैं वो अशांत है। शांति चाहिए, विज्ञान भी चाहिए, शांति भी चाहिए, और पूरी दुनिया जो है, पूरा संसार जो है भारत की ओर उन्मुख है, भारत की ओर देख रहा है। और हमारे पास कई IITs आए और उन्होंने कहा है कि सर हमें जो है बौद्ध दर्शन में क्या ध्यान का है, क्या समाधि का है, वो उसमें खोज कर रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं। वो करोड़ों का अपना जो है जो मिल रहा था रुपए, उसको त्याग करके पता नहीं हिमालय में वो खोज कर रहे हैं और वैसे लोगों की तलाश कर रहे हैं ताकि हम जो है उस स्थान जो हमारा जो खोया हुआ है उसे हम पूरा फिर से वापस लावें। हम जो है पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, अब उसको अंदर जाकर के जब फिर अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वो पाएंगे नहीं। लेकिन इधर कुछ विगत जो है कई वर्षों से हमारा यह कार्य आरंभ हो रहा है और हमारा जो प्रोजेक्ट है कि 2047 में भारत जो है विकसित देश बनेगा और पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। हमें लगता है इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जो मूल जो है हमारा, जो हम या यूं कहें कि हम कहा जाता है कि हम सोने की चिड़िया थे, पूरी दुनिया यहीं से ज्ञान ले जाती थी, फिर हमें हरास हुआ। बीच बीच में कबीर आए, रहीम आए, पहले वैदिक से देखेंगे तो कई ऋषि संत आए, फिर हम देखेंगे बुद्ध महावीर आए, फिर उसके बाद भी आते रहे, हमारा मध्यकाल तक रहा। हमारा अभी जो वर्तमान में अभी हम देख रहे हैं, अभी भी हमें जो है आध्यात्मिक चेतना जो है वो फैल रही है। अभी श्री गांधी ने कहा कि फिरोज गांधी ने कि ये जो विपश्यना का है, जो विपश्यना ध्यान जो है वो म्यांमार से सत्यनारायण गोयनका जी ने भारत में लाया। इसलिए लाया कि यह ज्ञान जो भारत का है, जो छुपा हुआ था, वह पूरे विश्व में फैले। पहले भारत में फैलाया और इसका सेंटर जो है, हमें नहीं लगता है कि हर स्टेट के लगभग जिलों में है। और काउंसलिंग के लिए आप जाएं और उसका 10 दिन का कोर्स करें, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है और वो निःशुल्क है। वो 10 दिन का शिविर, अगर उसके पास बाद लगता है कि अगर आपको कुछ लाभ हो रहा है तो आप डोनेट कर सकते हैं, डोनेट नहीं भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल निःशुल्क है। और वहां काउंसलिंग, वहां जाए, पूरा वहां जो है अष्टांग मार्ग है जो गोयनका जी का है, वहां चलता है, वहां आप देखें और सुने, जीवन में पालन करें। तो उसका मूल जो हमने जो अभी मंगलाचरण किया, शील समाधि प्रज्ञा, वहां बताया जाता है कि शील क्या है। पहले प्रवचन होता है और उसके बाद दूसरे दिन जो है शाम का प्रवचन हुआ और उसके अनुसार जो है सुबह जो है 4-5 बजे से शाम के जो है 7 बजे तक लगातार बीच में एक बार भोजन का अवकाश होता है और ध्यान किया जाता है, ध्यान करते हैं। और वहां पर काउंसलिंग बस 1 घंटे का वही, अगर आप करेंगे तो आपके अंदर खुद लगेगा। व्यक्ति का जो जीवन है वो सांस पर ही तो टिका है, आना है जाना है, यही सांस है। तो पहले तो वही सांस दिखाते हैं, यानी सांस चल रहा है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसको दिखाते हैं। जब इसको हम देखने लगते हैं तो मन हमारा एकाग्र आ जाता है। फिर उसके बाद फ्रॉम टॉप टू जो है वो कराते हैं कि ध्यान कैसे कैसे होता है, हमारा जो है कैसे कैसे वेदनाएं होती है, जो आपने बताया कायनोपासना वेदना चित्त, वो सारे जो है भूलते जाते हैं और आपका जो है वो शरीर तो स्वस्थ होता ही है, मन भी स्वस्थ होता है। यही जो है हमारा उद्देश्य है। और जब हम इसको ध्यान करने लगेंगे, हमारा तो ये कि आप लोगों से आग्रह है कि एक बार जरूर जो है वो विपश्यना ध्यान करना
करना चाहिए और उसी में सबका मंगल है। भवतु सब मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका यहाँ आना और आपको सुनना यह हमारा बहुत ही सौभाग्य है सर। और अब हम विवेकानंद के उस कड़ी की ओर बढ़ते हैं जब वो कहते हैं खाली पेट भजन नहीं हो सकता। तो यह सत्र आरंभ होता है, भूखे पेट होएगा गोपाला, तो अब लंच का टाइम है और आराम से आप भोजन करें। लेकिन उसके बाद सब लोग पुनः वापस यहाँ हॉल में आ जाए। कितने बजे? 2:30 बजे। ठीक, 2:30 बजे। थैंक यू। और सभी जो भी यहाँ बहुत सब्र से सुने, आप सबको धन्यवाद। भजन करने से भी भूख नहीं लगता है, क्योंकि वो बड़ा हायर टाइप का भजन है। सर हम लोग अभी उस भजन वाले
नमस्कार सर से पिलाटी आज कर जाए तेणु आम कैंसल करदे मुझे गले गोटे नोट लिखिकी सिग्नेचर आप भाषण नहीं कारण आप ही आभेलेबल थे दरकार ना ना दरकार नहीं कि मनु भाई आसिक आप्यायित कर अलरेडी घिनी आनी ना सब कहूँ देखो ओके ओके हाँ होना नहीं से बहुत मेम्बर आस पारे से पिला भी आस करना आउ शिव सार गोटे जास आनी शिव सार गोटे दे दिखाँ ओपन नहीं आप हाँ हाँ छाड़ दी ना ओपन नहीं रूम पाखे जो आउ तक आसनी आ भास्वती मैडम साइकोलोजी से कौन आगे जाए हाँ 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 कथा सारे जी चलो हाँ सब कैमरा लगे आज लगे इसको नहीं ये सारे बने इसको देखिए हमारे तो होता पहाड़ इससे कुछ भी नहीं तो बोले नहीं ऐसा नहीं होता जरा गारंटी हो सकती अभी ये बनाए पूरा मैंने कैसा किया
स्वागत करिए। आप लोग ये सामने करना चाहिए ना, फिर एक बार बाद में बता दीजिए। आप बैठिए, राशि की खुशी भी नहीं आया। अनिता जी, राशि की खुशी आपको प्रोग्राम का मिल गया सारा जो भी करना है? माइक माइक हेलो, सर्वप्रथम मैं हमारे सम्मुख उपस्थित महाराज जी लोगों को प्रणाम करती हूँ। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, सम्माननीय विद्वान वक्तागण, आदरणीय प्राध्यापकगण, शोधार्थी एवं प्रतिभागीगण, आप सभी का इस वैलिडिक्टरी सेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। It gives me immense pleasure to welcome you all to the valedictory session, sponsored by ICBR. This three-day national seminar on applied ancient wisdom, Jain philosophy for transforming education. अब हम इस संगोष्ठी के औपचारिकता समापन की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर रमानाथ पांडे सर। अभी नहीं, अभी तो पहले महाराज जी से करवाइए। अभी नहीं, अभी इनका हो जाएगा उसके बाद हम लोग सर सम्मान। अच्छा क्या बोलना चाह रही हैं? अच्छा बात हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार जो ऋषि मुनि हैं, चाहे वो जैन के महाराज हो, चाहे बौद्ध के संत हो या ऋषि हो, तो एक ये परंपरा रही है कि उनका सम्मान जो है वो अब ऑलरेडी पहले से ही सम्मानित होते हैं और मंच पे नहीं किया जा रहा। ये ऐसा विधान है मेरे ख्याल से। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया और ये होना भी चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी सम्माननीय था, उसको किसी सम्मान का कोई आकांक्षा ही नहीं है, उनको कोई इच्छा ही नहीं है। ये तो गृहस्थ लोग जो चाहते हैं कि मेरा सम्मान होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इस वजह से मैं ये प्रार्थना करता हूँ महाराज जी से कि वो नमोकार मंत्र से, मंगलाचरण से इस कार्य का आरंभ करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा न हो। नमो अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषुनेव च किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। व्यक्ति योग्य कब बनता है
संपन्न कब बनता है? जो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होता है। श्रीमद् भगवद गीता में 3 अध्याय के 22वें श्लोक में स्वयं कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचना। इस 3 लोक में मेरी कोई जिम्मेदारी किसी के प्रति नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं। न नानवाप्तव्य वर्त एव च कर्मणि। और इस 3 लोक में जो भी पाने योग्य है सभी को मैंने प्राप्त कर लिया है। कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं है कि जिसे मुझे प्राप्त करना शेष रह गया हो। फिर भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखने वाले, मेरा अनुकरण करने वाले कर्म करना न भूले। समय समय पर सेमिनार लगता है। छोटे व्यक्ति अपने छोटे कर्म से आगे बढ़ते हैं, बड़े पद पर रहने वाले बड़े कार्य करते हैं। सबका अपना अपना कर्तव्य है। गुजराती में एक कहावत है कि कर्तव्य नो आनंद जेने हृदय ओसर तो नथी। कर्तव्य पंथे चालता जे ठोकरो गण तो नथी। कल्याण जग माए जो जहना सौख्यनी पारासिसी। ए विभूति वंदनीय दर्शनीय दिन निसी। वही विभूति वंदनीय है, दर्शनीय है दिन रात, जो कर्तव्य पथ पर चलता है। कर्तव्य पथ पर चलते चलते उसका आनंद समाप्त नहीं होता है। और कर्तव्य पथ पर चलते हुए यदि ठोकरें लगी, यदि कहीं प्रतिकूलता आई तो वह घबराता नहीं है। कर्तव्य तो करना है, कर्म करना है। और कर्म करते करते बात नहीं, हेलो बात नहीं, 5 मिनट में तो पूरी करनी है बात, और उसमें बात आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या कह रहा था मैं? कर्तव्य पंथ पर हमें चलना है। चाहे छोटा हो, चाहे मध्यम हो, चाहे बड़ा हो, सबका अपना अपना कर्तव्य है। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता है। विभिन्न विषयों को लेकर के सेमिनार किया गया। 3रा दिन हो गया, पूर्णार्थी का अवसर आ गया, समापन हो गया, लेकिन जीवन का समापन नहीं हुआ है। सेमिनार लगाया जाता है अलग अलग विषयों को लेकर के, जैन दर्शन को लेकर के, या बौद्ध दर्शन को लेकर के, या वैदिक दर्शन को लेकर के, या षट दर्शन को लेकर के। दर्शन का मतलब ही है देखना। अब देखना एक सामान्य दर्शन है और एक विशेष दर्शन है। सामान्य से देखा, हाँ भी गए साहब सेमिनार में गए, इन्होंने ये बोला, इतने लोग थे, खाने पीना का बढ़िया था, बढ़िया टाइम पास हो गया और आ गए। ये सामान्य दर्शन। और विशेष दर्शन, हम वहां पर गए थे, इतने प्रोफेसर थे, इतने वक्ता थे, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये सबमिट किया है, हमने ये समझा है, हमें जीवन में ये आचरण में लाना चाहिए। हमने समय को पास नहीं किया है, टाइम पास नहीं किया है, समय का सदुपयोग करके कुछ न कुछ सीख करके आए हैं और औरों को भी हमें सिखाना है, आगे बढ़ाना है। वह हो गया विशेष दर्शन। तो सामान्य दर्ज जाता है, वह मोह में पड़ जाता है। परमात्मा कहते कर्तव्य तो करना है, कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करते करते मोह नहीं आना, आसक्ति का प्रवेश नहीं होना। जैसा कि अभी कहा कि भाई मुनियों का क्या सम्मान होना, क्योंकि वो कर्तव्य करते हैं, मान सम्मान की चिंता नहीं करते हैं। क्योंकि मुनियों का जीवन तो ऐसा ही है, कहीं मान सम्मान मिल जाए, कहीं अपमान भी मिल जाए, लेकिन वह सब भाव में रहता है। तो कहा कि कर्म करना है, लेकिन मोह को बढ़ाना नहीं है। जैसे कि किसी ने घर में कार्य किया, घर में कोई मेहमान आए और बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनी, मेहमानों ने प्रशंसा करी,
आज तो सब्जी बढ़िया बनी है। तो सासू माँ ने तपाक से कहा, हाँ कल ही तो गरम मसाले लेके आए इसलिए सब्जी बढ़िया बनी है। बहू की प्रशंसा नहीं की। बच्चे खेल कूद रहे थे। मेहमानों ने कहा क्या बच्चे कितने सुंदर है, बढ़िया है। क्या हाँ सब बच्चे मेरे ऊपर ही तो गए। सासू माँ ने क्या बोला, बच्चे मेरे ऊपर ही गए इसलिए इतने सुशील सज्जन है। और खेलते खेलते ही उनके हाथों से बर्तन गिर गया, कांच का बर्तन टूट गया। तो क्या बच्चे बड़े शरारती है। तो सासू माँ ने कहा क्या करे, बहू ने लखन ही नहीं दी इसलिए शरारती है। दुनिया में लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, अच्छा किया तो किसने किया, बोलो अच्छा किया तो किसने किया, मैंने किया, मैं आ गया। और बुरा किया तो किसने किया, उसने किया। तो यही चक्र संसार का कुछ चक्र चलता रहता है और व्यक्ति भीतर का सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। तो प्रभु ने कहा कि कर्म करो लेकिन आसक्ति और मोह मत रखो। देवराज इंद्र ने कह दिया किसानों को कि मैं 12 वर्ष तक वर्षा करने वाला नहीं हूँ, इसलिए कोई भी खेती बाड़ी ना करे। अब किसानों ने तो प्रण लिया कि यदि खेती नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम खेती करना भूल जाएंगे। उन्होंने खेत में जाना प्रारंभ किया, खेती बंद नहीं की। देवराज ने कहा अरे मैंने मना किया ना, खेत में नहीं जाना, श्रम नहीं करना, जबकि मैं 12 वर्ष तक वर्षा करने वाला ही नहीं हूँ, फिर क्यों श्रम कर रहे हो। तो किसान ने कहा कि वर्षा करना या न करना ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो खेत में जाएंगे, श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। यदि हमने श्रम मेहनत नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी खेती करना भूल जाएगी। तो देवराज के भी चक्षु खुल गए, ये कर्तव्यशील है, कर्तव्य परायण है। इन्होंने खेती करना बंद नहीं किया। इनके अंदर है कि खेती करना बंद कर दिया तो कहीं हम खेती करना ही ना भूल जाए। तो देवराज ने सोचा कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं करूं तो शायद मैं वर्षा करना ही ना भूल जाऊं। देवराज ने भी अपना कर्तव्य समझा और वर्षा शुरुआत की, वृष्टि की। इस प्रकार से जो कर्तव्य परायण होता है उसके जीवन में आए हुए विघ्न भी टल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए घबराना नहीं। कर्तव्य परायण, जो कर्तव्य परायण होता है वही जागरूक होता है और वही पद के योग्य होता है। अब पद तो मिल गया, पद के साथ साथ मद आ गया तो क्या होगा साहब, वह शासन कराएगा, दूसरों को कहेगा ऐसा गा, ऐसा गा, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अब पद आ गया तो क्या आ गया, मद आ गया। और मद आ जाता है तो कद उसका छोटा हो जाता है। तो किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान का अहंकार हो जाता है, किसी को धन प्राप्त हो गया तो धन का अहंकार आ जाता है, किसी को सत्ता की प्राप्ति हो गई तो सत्ता का अहंकार आ जाता है, किसी को अच्छा बढ़िया रूप मिल गया तो उसका अहंकार आ जाता है, किसी को बल मिल गया तो उसका अहंकार आ जाता है, कोई अधिक तपस्या कर ले तो उसे उसके तप का अहंकार आ जाता है। तो 8 प्रकार के अहंकार बताए हैं जैन दर्शन में। उन 8 प्रकार के अहंकार को हमें तोड़ना है, मोह को तोड़ना है। तो जैन दर्शन में कहा गया है कि अनित्य अनुप्रेक्षा का चिंतन कीजिए। इस अनुप्रेक्षा को बौद्ध दर्शन ने भी स्वीकारा है कि सब अनित्य है। मोह आपका कब घटेगा, जब संसार को आप अनित्य मानोगे, संसार में रहने वाले पदार्थों को अनित्य मानोगे, अपने शरीर को अनित्य मानोगे, सांसारिक सुखों को अनित्य मानोगे, तो आपका मोह छूटेगा, टूटेगा। आप ट्रेन में गए, सफर कर रहे हैं, आपकी सीट रिजर्वेशन है और आपकी सीट पर कोई दूसरा बैठा हुआ है, सीधा जाकर के आप क्या कहेंगे, बोलो क्या कहोगे, यह मेरी सीट है। क्या बोलोगे, यह मेरी सीट है, उठ जा। वहां सब उड़ गए साहब, आपका स्टेशन आ गया, आप सीट उखाड़ कर क्या घर ले जाओगे, घर ले जाओगे क्या, नहीं ले जाओगे। फिर भी वहां पर क्या आ गया, मेरी सीट है। तो जहां
मैं और मेरा का घेरा है, वहां अंधेरा ही अंधेरा है। व्यक्ति गंगा में स्नान करने जाता है, नदी में स्नान करता है, डुबकी लगाता है, उसके ऊपर से टनों भर पानी निकल जाता है, क्या वजन लगता है उसे? पानी का वजन लगता है? नहीं लगता है। और उसी नदी में से कोई एक घड़ा पानी भरकर अपने सिर पर उठाकर ले जा रहा है, तो क्या लगेगा? बताओ, वजन लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि जब वह नदी में स्नान कर रहा था तब नदी सबकी थी, और घड़े में पानी ले लिया तो किसका हो गया? मेरा। ये मेरा पानी, ये मेरा घड़ा है। तो जहां मेरा आया, मेरापन आया, वहां पर वजन लगेगा। और जहां सबका अपनापन आ गया कि सब हमारे हैं, हम सबके हैं, वहां पर मोह घट जाता है। तो कर्तव्य कर्म करते करते हमें मोह नहीं रखना है, हमें आसक्ति नहीं रखना है, और भक्ति को जगाना। आसक्ति कैसी है साहब? आसक्ति आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकते। और आसक्ति को भगाने के लिए एक ही उपाय है कि परमात्मा की भक्ति करे, और संसार में रहते हुए जो भी सहयोग लगे उसकी सेवा करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद महाराज जी। I now take the honor of inviting our esteemed dignitaries. Sir, सबसे पहले मैं डबल सर आप आइए और सर महाराज जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। किसी भी कार्य का जब प्रारंभ होता है ना, तो अगर महाराज जी आ जाए, चाहे भारतीय संस्कृति में कोई ऋषि आ जाए या फिर बौद्ध संस्कृति में कोई मॉन्क आ जाए, तो वही मंगलाचरण होता है। वास्तविकता यही है। और हम लोगों का कार्यक्रम जो है, समाप्ति तो नहीं कर सकते, पर्यवसान की ओर जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे, और उसमें इनका आना हम लोगों के लिए सौभाग्य। एक भभूति ने बहुत अच्छा श्लोक कहा है उत्तरांचलिक में, ऋषि नाम पुनराद्यानाम वाचा अर्थो अंधाओ। इसका मतलब ये है, सामान्य व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्ति में ऋषि में क्या अंतर होता है? तो कहता है कि जो सामान्य व्यक्ति बोलता है वो तो जो है अर्थ का अनुगमन करता है, शब्द का जो अर्थ होगा उसके अनुसार चलेगा, और जो ऋषि की जो वाणी होती है उसकी सरस्वती अनुगमन करती है। ये दोनों में अंतर है, विशिष्ट में और सामान्य व्यक्ति। तो ऋषि ना, इसीलिए उनको ऋषि दर्शनार्थ जो है जब करेंगे तो उसकी बड़ी व्याख्या है। तो अब जो है मैं धन्यवाद की ज्ञापन करता हूँ दोनों महाराज जी का, और हम अपने कार्यक्रम की ओर अग्रसर होते हैं। मैं अपने सभी सम्मानित जितने भी हमारे मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी
I now take the honor of inviting all our esteemed dignitaries to kindly grace the dais for the valedictory session. May I respectfully invite Professor Ramanath Pandey sir. Professor Anekāntavāda Sharma sir, President of the session, Sagar DHSGU Sagar Madhya Pradesh. Sir, please. Sir, I request you to raise the dice. Next, I would like to invite Professor V.S. Sukla sir, Director of Parshwanath Vidyapeeth. Sir, please. Next, I would like to invite Professor Ramesh Prasad sir. Ramesh Prasad ji ko Raghunath Ghosh. Sorry sir. Raghunath Ghosh sir. Sir, please. After that, I would like to invite Professor Ramanath Pandey sir. श्री प्रकाश पांडे. सर, आपका भी नाम? मेरा बाद में नाम है. जी सॉरी सर. Professor S.P. Pandey sir, please, I request you to grace the dais. Sir, please. And ये दो ही है, ये माइक जो है दो है. अनिल जी एमसी पढ़ना नहीं रहा. एमसी पढ़ना सर. एमसी पढ़ना ऑनलाइन है, इसलिए वो खाली है. वो प्रेसिडेंट है हमारे ये इसका कैसे उपयोग करना है बताइए सर. कुछ नहीं सर, जस्ट आपको वहीं पे रख के हाथ में हमें हाथ में देना है, जो भी बोलेगा वो. मैं पांडे सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो कृपया डैश पर आए सभी सम्माननीय हमारे जो भी अतिथि हैं उनका स्वागत करें. सर प्लीज. प्रोफेसर रमानाथ पांडे सर. सर, सम्माननीय अतिथियों के स्वागत के लिए उनका शॉल और माला देकर सम्मान किया जाए. सबका हो ही गया, सबका हो गया. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी जो इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के वेलकम कम क्लोजिंग रिमार्क्स प्रस्तुत करेंगे और इस 3 दिवसीय संगोष्ठी के महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं अकादमिक उपलब्धियों से हम सभी को अवगत कराएंगे. सर प्लीज. नमस्ते टू ऑल. जय जिनेन्द्र. नमो बुद्धाय. नमः शिवाय. Respected chairperson, honorable guest of honor, esteemed scholars and speakers, distinguished participants and research scholars, those have come from all parts of the country, and all respected members of the audience. I extend a warm welcome and heartfelt greeting to all of you to this valedictory session of the seminar. Your gracious presence has added dignity, depth and intellectual richness to this academic gathering. This 3-day national seminar titled Applied Ancient Wisdom, Jain Philosophy for Transforming Education was organized with objective of exploring and articulating the practical relevance of Jain philosophy in the broader context of contemporary education, ethics, leadership, environmental responsibility,
at the Indian knowledge tradition. The seminar was organized by Parshwanath Vidyapeeth, Varanasi, under the sponsorship of Indian Council of Philosophical Research, ICPR, New Delhi, and provided a meaningful platform for dialogue, reflection, and policy-oriented academic engagement. Respected Sir, Madam, I am pleased to present the outcomes of the ICPR-sponsored 3-day national seminar on applied ancient wisdom, Jain philosophy for transforming education, organized by PV and INSIS. The seminar brought together scholars, educationalists, and policy thinkers from across the country to explore how Jain philosophical principles can be applied to address contemporary educational challenges. The foremost outcome of the seminar was development of a value-based education and application-oriented educational framework grounded in Ahiṁsā, Anekāntavāda, Aparigraha, ethical discipline and compassion, fully aligned with vision of National Education Policy 2020. Concrete models were proposed for curriculum integration, teacher training, and experiential learning, emphasizing character formation, ethical reasoning, emotional balance, and social responsibility. The special focus was laid on teacher capacity building to foster inclusive, non-violent, and dialogue-based classroom. The main theme of the conference is, as we know, applied ancient wisdom, Jain philosophy for transforming education. So in this, our main focus is educate the educators, educate the teachers, educate the leaders. That is the most important. If we imagine a developed country in 2047. So that is the important. Most important is there is need of teaching to the leaders. Students, that is a different thing. But first we have to learn. So this is the main focus, our main focus in each and every seminar, conferences, if I am organizing for the transforming education on the base of ancient Indian wisdom. So an important outcome was the formulation of actionable recommendations, including pilot implementation projects, establishment of interdisciplinary research initiatives, and the proposal for a national level Center for Applied Indic Wisdom in Education, especially in this institution, Parshwanath Vidyapeeth. In conclusion, the seminar clearly demonstrated that India's ancient wisdom traditions, when applied pragmatically, can play a transformative role in educational reform, ethical leadership, and nation building. यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी विषय सब लोग जानते हैं, पर जो आयोजित की गई उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जैन दर्शन की व्यावहारिक प्रासंगिकता को समकालीन शिक्षा, नैतिकता, नेतृत्व, पर्यावरण और भारतीय ज्ञान परंपरा के व्यापक संदर्भ में समझना और प्रस्तुत करना था। यह संगोष्ठी आईसीपीआर के प्रायोजन में पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी द्वारा आयोजित की गई। संगोष्ठी के दौरान जो प्रमुख वैदिक उपलब्धियां सामने आई, बौद्धिक उपलब्धियां सामने आई, वो अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी है। विचार विमर्श में यह स्पष्ट हुआ कि जैन दर्शन केवल सैद्धांतिक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवंत और अनुप्रयुक्त ज्ञान परंपरा है। अहिंसा को करुणामूलक शिक्षा के आधारशिला के रूप में, अनेकांतवाद को संवाद परक एवं बहुविध दृष्टिकोण वाली शिक्षण पद्धति के रूप में तथा अपरिग्रह को सतत विकास और उत्तरदायी जीवन शैली के सिद्धांत के रूप में गहराई से रेखांकित किया गया।
साथ ही जैन दर्शन के नैतिक, पारिस्थितिक और नेतृत्व परक आयामों में इंडियन नॉलेज सिस्टम के संदर्भ में व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। इस संगोष्ठी की एक विशेष उपलब्धि रही वरिष्ठ विद्वानों और युवा शोधार्थियों की सार्थक सहभागिता। शोध पत्र पाठ, पैनल चर्चाएं तथा प्रश्नोत्तर सत्र न केवल बौद्धिक रूप से समृद्ध रहे, बल्कि संवाद की गुणवत्ता और अकादमिक अनुशासन का भी उत्कृष्ट उदाहरण बने। सभी प्रतिभागियों का योगदान इस संगोष्ठी की सफलता का आधार रहा। इस प्रकार इस अवसर पर मैं ICPR सभी अतिथियों, विद्वानों, प्रतिभागियों तथा आयोजन समिति के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। विस्तृत धन्यवाद ज्ञापन वोट ऑफ थैंक्स में प्रस्तुत किया जाएगा। अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि यह संगोष्ठी न केवल एक अकादमिक आयोजन रही, बल्कि एक वैचारिक यात्रा भी रही, जिसने हमें अधिक मानवीय, उत्तरदायी और मूल्यनिष्ठ शिक्षा की दिशा में प्रेरित किया। इस संगोष्ठी का मुख्य परिणाम यह रहा कि हमने शिक्षा से जैन दर्शन और प्राचीन ज्ञान की प्रायोगिक उपादेयता पर ठोस दृष्टिकोण और नीतिगत सुझाव विकसित किए हैं, जिन्हें आगे लागू किया जा सकता है। इस संदर्भ में मेरा यही विचार है कि इस संगोष्ठी के आउटकम को लेकर के एक प्रपोजल बना करके मैं प्रत्येक स्टेट में, राज्य सरकार को दूंगा मैं और केंद्रीय सरकार को भी दूंगा, जिसमें कि क्योंकि जैन दर्शन के जो विचार है वो मोस्ट नेग्लेक्टेड है आज की डेट में। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो लोग बुद्धिस्ट की हर एक कोई बात करेगा, वैदिक की, जैन व्यक्ति भी वैदिक की ही बात करता है, बुद्धिस्ट की ही बात करता है, जैन के बहुत कम लोग करते हैं। तो इसलिए जबकि सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय परंपरा में जो है ना वो जैन का तत्व। क्यों? क्योंकि जो सवेरे मॉर्निंग में एक किसी ने पेपर पढ़ा जो है, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो स्यादवाद है या अनेकवाद है वह अनेकांतवाद है। उसकी जो विचार जब आता तो सत्य जो है वो सापेक्ष है या निरपेक्ष है, सबसे पहले तो ये। तो क्या अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जो है पैर से लंगड़ा हो, उसको हम कह दें कि तुम लंगड़े हो, इधर आना जरा, तो कितना बुरा लगेगा। तो सत्य जो है उसका संदर्भ के अनुसार वो सत्य माना जाना चाहिए। हमारे हर एक में, चाहे बौद्ध हो, प्राकृत के ग्रंथ हो, पाली के हो, संस्कृत के हो, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, ये श्लोक सब जगह आता है। और उसमें लास्ट में ये कहा था कि सत्य बोलना चाहिए, किंतु उसी सत्य का बोलना चाहिए जो किसी को कष्ट न पहुंचाता। तो सत्य जो है ना, देखिए सत्य सम्यक इसीलिए वर्ड है वहां सम्यक। सत्य दर्शन कह सकते थे, वो सत्य दर्शन नहीं कहेंगे तो गलत हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन कहां से आएगा? जब संदर्भ होगा। तो ये सब विचार जो है अति महत्वपूर्ण है, जो हमें चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, तो सब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो है मैं एक उदाहरण देता हूँ, जितने पेपर पढ़े गए आपने, जितने 40 के करीब पेपर पढ़े गए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और स्टूडेंट्स स्कॉलर्स के सब लोगों ने मोस्टली पेपर क्या है कि कोई किसी ने चैट जीपीटी से ले लिया, किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ले लिया, ठीक है ना। पर उसको ये देखने की कोशिश नहीं की कि इसमें दिखा क्या है। समस्या यहाँ पर चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वो केवल साधन है, साध्य नहीं। वो आपकी सहायता करता है। जैसे हमें पेन की जरूरत होती थी, अब पेन की जरूरत नहीं है। नोटबुक की जरूरत होती थी, नोटबुक की जरूरत नहीं है। किताब की जरूरत होती थी, किताब की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर है सामने, पर दिमाग तो आप ही लगाओगे अपना। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, यूजर इज इम्पोर्टेंट। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में, दर्शन के कॉन्टेक्स्ट में, नैव वाचा नैव मनसा ज्ञातुं शक्तो न चक्षुषा कहते हैं ना। तो वहां भी टेक्नोलॉजी में इसको कैसे करेंगे हम? एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, और बाकी जो है कनेक्टिविटी है। वहां भी सर मन और आत्मा, ये तीनों का जब संयोग होगा, और हमारे आत्मा बोलते हैं ना कि आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। अंतःकरण, कालिदास क्या कहते हैं? सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति। अंतःकरण की जब प्रवृत्तियां प्रमाण होगी, क्यों किसकी होगी? जो व्यक्ति कभी, जिसने आज तक बुरा किसी का किया ही ना, बुरा सोचा ही ना हो, वो सज्जन व्यक्ति है। और उसकी जो प्रवृत्तियां है वो अपने आप ही प्रमाण, ना वहां प्रत्यक्ष की जरूरत है, ना अनुमान की जरूरत है, किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं। और जो करेगा वो सही करेगा।
तो कहने का मतलब ये कि ये जरूरत यही सब चीज की है। पाठ में देना जो है ठीक है, पाठ में तो कहीं भी दे दो, पहले भी जो पाठ जो पढ़े ऐसा कैरिकुलम में और पेडागोजी में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं, सब विचार तो वही है ना, सब अच्छाई की बात करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो उसमें विचार है उसे हम अपने व्यवहार में अपनाएं, जीवन में अपनाएं। फॉर्मल एक क्लास पास करना अलग बात है, 90% ला करके हम बड़े खुश हैं, पर जब व्यवहार में जब वही व्यक्ति आता है तो वो 0 हो जाता है। तो जरूरत ये है कि उन विचारों को अपने प्रयोग में हम लाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने परिवार को सिखाएं, समाज को सिखाएं, देश को सिखाएं। तो हम जब क्लासरूम में, चाहे नर्सरी में हो, चाहे हम PhD के स्टूडेंट को गाइड कर रहे हो या MA के स्टूडेंट को, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन की वहां जरूरत है। जैन के विचारों को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। इसीलिए मैं हमें 2013 से मैं ये कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ अप्लाइड एंशिएंट विजडम पे। आप गूगल सर्च करेंगे ना तो अप्लाइड एंशिएंट विजडम, रमानाथ पांडे, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। सबसे 16 में मैंने प्रेजेंट किया था ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन पे, उसमें करीब 300 लोग थे सूरत में। तो वो जो है ना, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अप्लाइड जैसे केमिस्ट्री है, अप्लाइड फिजिक्स है, बहुत सारे, पर हमारे क्षेत्र में अप्लाइड हम लोग यूज करने लगे। अप्लाइड एथिक्स है, अप्लाइड धर्म है, ठीक है ना। पहले केवल साइंस में, मॉडर्न साइंस वाले यूज करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो इस कॉन्फ्रेंस से सीख करके जा रहे हैं उसको अपने जीवन में सीखना है, जीवन में उतारना है। तो यही कह करके मैं अपना वक्तव्य जो है समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भविष्य में इस कॉन्फ्रेंस से जरूर कुछ सीखे होंगे और भविष्य में आप उसको अपने जीवन में उपयोग करेंगे। आपके सारगर्भित एवं प्रेरक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ आई हैव 3 names for the special remarks. So first of all, I would like to call Professor Raghunath Ghosh. Sir, kindly share your valuable remarks. Good afternoon to all of you, respected my friends and teachers, dignitaries on the dais and off the dais. My friends, we are here, we know each other during last 3 days and we have a lot of discussion amongst ourselves or within ourselves, even in the dining table, in the guest house. So we have learned a lot regarding Jaina logic, Jaina philosophy, Jaina morality. All are not omniscient. In Jaina logic it is said, man is not omniscient. And as he is not omniscient, that's why Anekāntavāda is justifiable. Had it been omniscient, he would know all the aspects, but some of the aspects we know. So we accept all these things. And what is new thing which has been presented here, and as a teacher, and also my colleagues are here, most of the teachers are here, they will be happy to know that all these moral principles are applicable to the transformation of education in nowadays. And we have got some sutras, we have got some threads. Just as Professor Pandey told, is sadhan. So artificial intelligence, computers, everything has become the instruments to reach something which is more holy, worthy, and need of the hour nowadays. And I can tell you, you all know, we spend a lot of money for engineering, medical or other things, more, but not much
for giving training in moral education. From the primary to higher secondary or higher education, there is less scope. Even the scope is there, we do not utilize. All the IITs, there is a provision of moral teachings. All the engineering colleges, there is a subject called morality. In medical ethics, there is a subject. I was one of the members in the ethical committee of our medical college. But importance is so less that it cannot improve the society, the mentality of the student. And not only in Buddhism, in Jainism, from our tradition we know, there are so many moral values. Just I will tell you, share with you that I have been in Leipzig University, Germany. In Indology department, I saw there Panchatantra is being taught. And they told me that all the managerial policies are given in the moral slogos, in the moral karika, expressed in the karika system. That is, they quoted one line, Niropeksho nakartabbo, vrittoi sami kadachana. If there is a professional course, there are two, one professional officers and under people, those who are working. The people should know, the karmacharis, those who are working, they should know that the manager should not be made independent by way of giving the secret of our special knowledge. If it is given, his service will be first sacrificed. So that is why there are so many Uttavena hi siddhanti karyani no manorathoi. We have read this thing in the childhood, but now we forget. And in our Upanishad, there are so many things we have discussed here. The teacher, as Professor Panda also was telling, to educate the educator. And we have said, Matri Devo Bhavo, Pitri Devo Bhavo. They should be taken as a form of goddess and they should be given due honor. But we are having nowadays Vidyasramas instead of that. And third one is Acharya Devo Bhavo. Acharya is called practicing teacher, not only teacher. Bookish knowledge is not. If someone is having bookish knowledge, not practicability of the issues, she is not a teacher in the true sense of the term. So Acharya Devo Bhavo, Atithi Devo Bhavo. So these are our respect to the other section of people. Vivekananda told two more, Daridra Devo Bhavo, Murkha Devo Bhavo. They are also part of the human being. They should be given proper honor. So these things are there. Even normal courtesy, how to give things to others, that is also being taught in our Upanishadic phrases. Sriya Deyam, Asriya Na Deyam, Bhiya Deyam, Samvida Deyam. This is courtesy. We normally throw the object, but this is not the case. So in this way, in Jaina we have got so many things. Apart from Anekāntavāda, respect to other people, other opinions, there is Samyak Charitra, Samyak Darshan, Ahiṁsā, Aparigraha. These are the greatest valuable things in our society. And this should be applicable. We should apply all these things in our society. Particularly, we should grow, we should develop the habit of telling all these things that they should follow these moral rules.
If they can do this, then a time will come when we can get a developed educational system. Now the education is there, but it has got a moral, not a moral foundation. And again I quote Vivekananda, he told we want technology, we want artificial intelligence, but this technology, we do not want the technology, technical heart, artificiality of heart. So the Samvedanshilata, the sensitivity of heart, of our heart, which is essential. And during these days, we have learned this thing. Personally, myself will try to tell all these things to develop the sensitivity of the student community and request my colleagues to give the proposal to proper authority so that moral education may be a curriculum. And last, I will tell you that this is we are living, we have no problem at all with sweet memory of this institute and also the people who are here in our service. We are always happy with their smiling faces. Thank you. Thank you so much, sir. For the remarks, we have our next speaker, Dr. Prakhar Kumar, sir. Sir, I request you to please keep your remarks within 2 minutes. मंच को प्रणाम। पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी में आयोजित त्रिदिवसीय संगोष्ठी अप्लाइड एंशिएंट विजडम जैन फिलॉसफी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन में उपस्थित सभी विद्वद्गण, मित्र एवं मातृशक्ति, आपकी उपस्थिति इस संगोष्ठी की परिपूर्ति का परिचय है। मंच पर बैठे श्रद्धेय प्रोफेसर अंबिका शर्मा सर, प्रोफेसर रमानाथ पांडे सर, प्रोफेसर एसपी पांडे सर, एग्जीक्यूटिव मेंबर पार्श्वनाथ विद्यापीठ, प्रोफेसर रघुनाथ घोष सर, प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल सर, जो निदेशक पार्श्वनाथ विद्यापीठ है। आपकी उपस्थिति इस मंच की महत्ता को प्रदर्शित करता है। यह संगोष्ठी अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि जैन दर्शन के विषय पर विभिन्न विचारधारा के विद्वान, विभिन्न परंपरा के विद्वान एक मंच पर एक साथ प्रदर्शित होकर आशीर्वचन दे रहे हैं। संगोष्ठी के संरक्षक और मार्गदर्शक प्रोफेसर रमानाथ पांडे सर, जिनकी उपस्थिति संगोष्ठी की जीवंतता को बनाए रखी, संगोष्ठी में उत्पन्न समस्त प्रकार के व्यवधानों और उसकी समरसता में सब कुछ अपना अर्पित करने के पश्चात संगोष्ठी की अंतिम समय में अपनी धैर्य और महत्ता का परिचय प्रस्तुत कर रही है। संगोष्ठी में मित्र और अनुज रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर प्रवीण यादव, डॉक्टर मधु जी, डॉक्टर अनीता जी, इनका सहयोग संगोष्ठी की महत्ता में अपने संपूर्ति को संबोधित करते हुए अपनी संगोष्ठी को अपने लक्ष्य तक ले जाती है और साथ में अपनी मातृ संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसफिकल रिसर्च और इन SIS के द्वारा दिए गए अनुदित राशि का संपूर्ण उपयोग इस संगोष्ठी में स्पष्ट रूप से उसकी महत्ता को प्रदर्शित करता है। मैं इन्हीं वचनों के साथ संपूर्ण गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Our next speaker is Professor Anirban Mukherjee sir. Sir, please. So time is always precious and we should be careful not to spend. So when I got a kind of call for paper
circulated from Professor Pandey. I initially got interested, but then thought that this is not for me, and at different points of time I was thinking this is not for me, and then I ended up sending an abstract, and then I thought this is not for me, then ended up booking kind of travel, and then also I was thinking this is not for me, and then ended up being here. So it's been for me, of course. I've been here for 3 days, and I've enjoyed the discussions and meeting a lot of friends and others. Few things, as this was actually not for me maybe, so there are things that we need to talk about. We need to apply Jain philosophy from the Indian traditions, which are very valuable resources. We need to dig them, and if we feel we have a certain feeling of complaint that it has not been done so far, we should kind of be careful to dig them up and make it available and try to apply to the new things, artificial intelligence, ecological disasters, and try to understand them. But we have to participate in the international world debate that's going on with this. We cannot just hope that this is a problem and I have to push whatever I had to say from my tradition into it. So that will not be relevant for everyone. So we have to say something which is meaningful to the world community. So Anekāntavāda, which is central to Jain philosophy, is something very important, not just for our times, but for all times. It talks about a culture of inclusivity, a culture of welcoming other views, and this is something very challenging. If somebody is really honest about it and really tries to implement it in their life and their work, then they will face a lot of challenges. And if they are not facing those challenges, it means that they are actually not really fighting for Anekāntavāda. Anekāntavāda actually requires the other to confront the other, to meet the other midway, and to really understand the position which makes that other. We do not want any other. We want everybody to be part of our knowledge system. So there is this understanding of Indian knowledge system. We have a world knowledge system. Knowledge is not from India, not from anywhere else. Knowledge is for everyone. Knowledge is for everyone to find out. We have to connect with the world and try to reinstate the good points of Indian knowledge, the classical Indian knowledge, the contemporary Indian knowledge, and connect it with the world so we can make real contribution to world knowledge system. And this place, this Parshwanath Institute, is an amazing place for doing research in Jainism. So I was happy to discover this place. But I thought that the books, which are the publications of this institute, should be there as an exhibition. So people who are coming, they should be able to access all the books and buy those books if they want to. The purpose is to disseminate the knowledge that has been produced in the institute. A serious seminar might be introduced. This is more of connecting with a lot of people. This is more inclusive as a place. It's good. We are connecting with a lot of people. But we should also have a seminar where only maybe 12 not just teachers or students, but anyone who has an interesting idea, who can present it for 45 minutes, 1 hour, and we have a great discussion about it. Those 12 or 15 papers should be called for discussion. We should not be on stage and there should not be any difference between people up here and up there. We should all be on the same plane. We should respect people, but not as teachers. We should respect each other as humans, and we should all, as teachers, we should not be too kind of expecting of people to respect us all the time. What extra are we doing? We are doing our job. Any plumber, any taxiwala, anyone who is doing their job is a good person. They are helping the world to become a better place. The seminar itself was very enjoyable. Pandeyji kept everything very alive and fluid and full of surprises, and we enjoyed a lot. We as members of this community of philosophers, teachers, it's a great opportunity to be part of this community, to know more people from our community. That is how we connect with each other's ideas, and ultimately we become members of a world community. So moral teaching should not be pushed. Moral teaching is also not fixed. Values are not fixed. We should talk about value education. What will we do? We'll say, give you a set of values, you do X, you do Y, you do Z. Unless you understand those values, unless you can become part of those values, you will find that kind of moral policing. So morality is also something that we discover, how to act as persons, how to be authentic. That is the Khoj. That is the Khoj that's not just from education. It is from our whole life.
and the way we interact with others, how they interact with ourselves, and gradually we find that we have discovered our way, or maybe we have lost. That is also a way of discovering ourselves. So thank you so much for this opportunity. Thank you for inviting me, or having me here, and thank you for organizing this. Thank you. At this moment, we invite brief feedback or reflection from the participants. Those who wish to share are requested to kindly come to the desk. और कृपया समय का ध्यान रखते हुए कृपया 1 मिनट से ज़्यादा ना लीजिएगा. जो भी अपना फीडबैक देना चाहता हूँ यहाँ आ सकते हैं. Is it well? Sir? हर एक को 1 मिनट बोलना है जरूरी. हाँ, सभी लोगों को 1 मिनट जरूर बोलना. ये लोग जो बोले धन्यवाद. मतलब क्या होगा? पत्थर में पारस की, पक्षी में सारस की, तिथि में ग्यारस की, बात ही कुछ और है. दुनिया में भारत की, भारत में यूपी की, यूपी में बनारस की, बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है. सफल कार्यक्रम आपका, मन में आनंद समाये, सशक्त नमन प्रयास को हृदय से आभार जताए, हृदय से आभार जताए. मंचासीन सम्मानित हमारे अतिथिगण, आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण एवं हमारे सभी विद्वजन प्राध्यापक बंधुओं, निस्वार्थ प्रेम का दर्शन फल, निस्वार्थ प्रेम का दर्शन फल मिल गया आज. उस ज्योति कमल से हृदय कमल खिल गया आज, खिल गया आज. मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी, ज्ञान और विद्वजनों की भूमि वाराणसी में स्थापित पार्श्वनाथ विद्यापीठ द्वारा आयोजित इस नेशनल सेमिनार में उन सभी सम्मानित पदाधिकारीगण एवं आयोजन समिति के सभी प्रखर सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अल्प समय में एड़ी चोटी लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बना दिया. हम सभी प्रतिभागियों के आतिथ्य में सर आपने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं लगी. इस सेमिनार की सारी व्यवस्थाएं कितनी अच्छी और सुंदर थी, इसे शब्दों से व्यक्त करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, सूर्य को दीपक दिखाने के समान है. क्या आप इस बात के साक्षी है तो तालियों से मेरा यह समर्थन करें. यहाँ जैन दर्शन के संदर्भ में जितनी अच्छी अच्छी बातें हुई, उन बातों का पान कर सर हम शारीरिक तो नहीं लेकिन निश्चित रूप से मानसिक रूप से अमर हो गए. सर हम अमर हो गए. इस संसार में व्यक्ति आता है, चला जाता है. मीटिंग एंड पार्टिंग आर लॉज ऑफ नेचर. मिलना और बिछुड़ना तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, लेकिन कुछ स्मृतियां उसके मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं, जिसका अद्भुत और अप्रतिम उदाहरण यह नेशनल सेमिनार है. भोजन, भोजन, आवास आदि अन्य व्यवस्थाएं कितनी अच्छी थी, लेकिन इन सबसे बढ़कर आयोजन समिति के सभी सदस्यों का सुमधुर व्यवहार हम सभी प्रतिभागियों के मन को जीत लिया. इन 3 दिवसीय सेमिनार में प्रारंभ से लेकर आज तक की सारी व्यवस्थाओं को मैं एक वाक्य से कहना चाहता हूं. ये सारी व्यवस्थाएं सर मिश्री के उस फुफुरे ढेले की तरह थी, जिसे कहीं से भी चखा जाए तो वह मीठा ही लगेगा, वह मीठा ही लगेगा. सर आपने आयोजन समिति के सभी सदस्यों ने आतिथ्य धर्म का पूर्णतः पालन किया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पालन किया, जहाँ कहा गया है अतिथि देवो भव. मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, वो जान से प्यारा होता है. अंत में मैं श्रवण कुमार मोदी हूँ तो मन की बात तो कहूंगा ही. मैं अपने मन की बात को 2 वाक्यों में सर कहता हूँ. आप किसी से बेहतर करें, आप किसी से बेहतर करें, क्या फर्क पड़ता है. आप किसी से बेहतर करें, क्या फर्क पड़ता है. आप किसी के लिए बेहतर करें, बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद सर आपका. यदि और भी कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हम लोग तो हमेशा बोलते हैं. कहाँ से शुरू करूँगा मैडम. सबसे पहले आपने विचार रखना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके मन, आप यहाँ आके बोलिए. मैडम आप शुरू करिए. ज्यादा 20 मिनट लगेगा, 25 मिनट लगेगा और क्या होने दीजिए, कोई बात नहीं. वो ज्यादा हम लोग 1-1 मिनट बोल दिया और क्या.
Good evening, everyone. This 3 days nature seminar is a great learning for us. I just want to make one point here that whenever we go to any seminar, we only talk about theoretical aspect. So what is the need of the hour is to practically when you are applying the theoretical aspect into your day-to-day life. So that is more important. I think जितनी भी हमने इन 3 दिनों में बात की है, तो अगर हम उसको अपनी डे-टू-डे लाइफ में अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. That's all. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. नेक्स्ट वन बिना बुलाए हुए आइए जल्दी. मैं यहाँ सभी के नाम नहीं जानती हूँ, तो मैं बस आग्रह करती हूँ कि कृपया आप स्वयं यहाँ पधारे और अपना फीडबैक दें. Firstly, I would like to congratulate all the organizing team, especially Ramanand sir and all the organizing team for organizing this wonderful seminar, and especially the theme that has been chosen, Ancient Indian Wisdom, Jain Philosophy for Transforming Education. And as sir has rightly pointed out, educators need to learn more because they are the ones who are teaching, who are passing the knowledge to the other person. So they are the ones who need to know, be it in the profession of teaching, be it in the profession of healthcare, be it in the profession they are choosing, because students are the ones who are choosing their future, and they are the ones who need to inculcate the moral values, the moral education that is there. So it needs to जैन फिलोसफी में भी और हमने बाकी दर्शनों में भी देखा है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत मॉरल वैल्यूज हैं, बट हम उनको किस तरीके से इंकलकेट करते हैं, किस तरीके से उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बात करते हैं. और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस जैन फिलोसफी में हर थीम को लेके बात की गई है. सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशन के सिस्टम में भी कितनी सारी थीम्स हमने बात करी हैं. पर्टिकुलरली जो लास्ट टेक्निकल सेशन था, वहाँ पे संस्कृत का भी बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने उसके टेक्स्ट को लेके बात की है. थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू ऑल. जो ये सोच रहे हैं कि प्राइज मिलेगा उनका 1 नंबर कट होगा अगर नहीं बोलेगा. सभा पे सबको मेरा प्रणाम है. एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कहना चाहूँगा इस सेमिनार के विषय में, पिछले 3 दिनों में अमूमन हम लोग जब किसी सेमिनार में जाते हैं तो देखने को मिलता है कि शिक्षक लोगों को, जो भी गुरुजन हैं, उनको विशेष समय मिलता है, छात्रों को थोड़ा कम समय मिलता है कि आप लोग बोलिए. लेकिन रमानाथ सर ने स्ट्रिक्टली कहा कि सारे बच्चों को, चाहे वो शिक्षक होंगे चाहे वो हमारे बच्चे होंगे, सबको 10 मिनट बोलने का मौका मिलेगा, 5 मिनट डिस्कशन का मौका मिलेगा. और मुझे लगता है कि एक सेमिनार के लिए और नेशनल लेवल के सेमिनार के लिए बहुत आवश्यक है कि जो प्रतिभागी हैं उन सबको बराबर अवसर मिले. तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही उचित आपका कदम रहा सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको. और एक जो अप्लाइड एंशिएंट विजडम जो टॉपिक है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसमें बहुत ज्ञान अर्जन हुआ. हम लोगों को गुरुजनों को सुनने का मौका मिला, विशेषकर जब प्रथम दिन प्रोफेसर अंबिका शर्मा सर को हम लोगों ने सुना तो बहुत क्लैरिटी आई चीजों को. ये सर को सुना, मैंने सभी गुरुजनों को सुना, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार. Thank you. Next one, please. प्रियंका देवी मैम कुछ बोलना चाहती हैं, कृपया. आप सबको यहाँ पर बच्चों को मेरा प्रणाम. मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बोलना चाहती हूँ. सबसे पहला ये कि यहाँ पे जो विषय है अप्लाइड विजडम का, विशेष रूप से आज तक दर्शन में सैद्धांतिक विचार तो बहुत हो चुका है, परंतु अप्लाइड फिलॉसफी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जिस पर यहाँ विचार हुआ है. तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज़. और दूसरी है कि यहाँ पे जो अभी बोला कि यहाँ पे व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी थी, तो ये सही बात है कि यहाँ पे टाइमली, हर व्यवस्था टाइमली हुई और बच्चों को विशेष रूप से समय मिला अपनी बातों को रखने के लिए. नहीं तो सामान्यतः 1-2 मिनट में ही हटना पड़ जाता है. तो ये सबसे अच्छा लगा. थैंक यू सर.
मेरे कानों तक एक आवाज पहुंच रही है कामना की, तो कृपया आइए और अपना फीडबैक दीजिए। मंच पे उपस्थित सभी गुरुजनों को और इस सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों को मैं सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मीनू तिवारी है, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आई हूँ और इस 3 दिन के सेमिनार में मुझे सभी कुछ बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा लगा कि जो विषय था शिक्षा से रिलेटेड, जिसकी कि आज के समय में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, तो ये विषय जो चुना गया वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सारगर्भित था और जितने लोगों के विचार हमने सुने उसमें हमारे गुरुजन भी थे, हमारे सहपाठी भी थे, तो उन सभी लोगों ने जितने भी अपने पेपर प्रेजेंट किए, जो भी अपने विचार हमारे साथ शेयर किए, उससे बहुत कुछ हमें लाभ हुआ और हमें ऐसा लगता है कि अब शिक्षा की स्थिति हमारे देश में जरूर बदलेगी और जो 2047 की बात हुई है तो उससे आगे तक अब हमेशा भारत विकासशील ही रहेगा, विकसित ही रहेगा और ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Pranam sir, pranam to all the dignitaries, teachers, scholars and my dear friends at the back. So since I'm the student here in Parshwanath Vidyapeeth, pursuing diploma in yoga education, so it was my first experience attending a seminar of this level, or actually any seminar, and that too from the education background since I come from the human resource background, and it was quite informative. I learned a lot and it was an amazing experience for me and a lot of learning I'm taking back from here. So thank you so much and thank you for thank you for everything. Thank you. सबसे पहले मैं सभी विद्वजनों को नमस्कार करना चाहूँगी और सर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। 3 दिनों के सेमिनार में हमने बहुत कुछ सीखा और हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर भी जा रहे हैं, जिससे हम अपने रिसर्च में और आगे जो ज्ञान में वर्धन करेगा। थैंक यू सो मच। अभिषेक मिश्रा आइए और अपनी फीडबैक दीजिए। गुरुजनों को मेरा प्रणाम। यहाँ इस 3 दिवसीय जो कार्यक्रम था उसमें मूलतः शिक्षा में सुधार के लिए जो भारतीय मूल से जो चीजें लेनी है उस पर हमने डिस्कस किया, जो कि जैन धर्म से संबंधित है और भी ऐसे कई हमारे पुराने संप्रदाय रहे हैं जिन्होंने कई मूल कॉन्सेप्ट दिए और इसमें हमने सेमिनार में कई पेपर में मैंने ये चीजें भी जानकारी प्राप्त की कि जो मैथ के जो फार्मूलाज हैं जिसको कि पेटेंट करा लिया गया है विदेशियों द्वारा, वो सभी जो है मूलतः भारत से ही आती थी और उनका भी यहाँ पे उजागर हुआ, इससे बहुत मुझे खुशी हुई और आगे भी इसी तरह से हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं वो आगे भी अग्रसर प्रसारित होगी, इसी तरह के कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो। और इसके साथ ही मैं यहाँ जो उपस्थित सभी श्रोताओं की भी तारीफ करता हूँ, क्योंकि कई जगह मैंने प्रेजेंट किया है वहाँ पे लोग सुनते नहीं हैं और यहाँ पे काफी स्थायी होकर के लोग सब बात को सुन रहे थे, इससे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे सबका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और लोग फीडबैक देने की कोशिश में आगे आना चाह रहे हैं, लेकिन सत्र को भी पूरा करना है तो आप सभी का स्वागत है। समय के थोड़े अभाव के चलते हमें ये सत्र आगे बढ़ाना पड़ रहा है। सो बढ़ाना नहीं पड़ रहा है, कहानी ऐसे मत बोलिए। अभी तो वो एच पंडा जी का होगा ना, उसके बाद शुरू होगा इनका। आप सभी लोग प्रिपेयर रहिए और
अपने आप को मजबूती के साथ रखिए। 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा अगर ऐड करनी हो तो अपने मन में ही सोच के रखिए। और now for the inaugural address, I would like to call Professor Narasimha Charan Panda sir, Acting Vice Chancellor, Central University of Odisha. I think sir is connecting online with us. Professor N.C. Panda sir. Sir, am I audible to you? Yes, sir. Sir is here. Yes, sir. Yes. सर आपको आवाज आ रही है? पार्श्वनाथ जैन विद्यापीठ के समस्त पदाधिकारी और ये जो 3 दिवसीय सेमिनार का समापन सत्र चल रहा है जिसका विषय था एप्लाइड एंशिएंट विजडम जैन फिलॉसफी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, और इसमें उपस्थित सभी जितने विद्यार्थी, शोधार्थी, विद्वान, विदुषी सभी को हमारे ओर से शुभेच्छा, शुभकामनाएं। और मुझे किसी कारणवश फिजिकली आने का कुछ समस्याएं रही है और पांडे जी ने के आग्रह पर मैं आज सामने ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनके कहना चाहूंगा, क्योंकि विषय तो आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है और 3 दिन से आप लोग देख ही रहे हैं जिसके ये विषय गंभीर है और सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें सीखना है। और सीखना क्या है कि सबको अपने जो दैनंदिन जीवन है उसको कैसे उपयोगी में लाना, ये बड़ी बात है। क्योंकि जैन एथिक्स एंड एजुकेशनल वैल्यूज जैसे कि टॉपिक है, जैन एथिक्स आज भी उतने उपयोगी है जितने हजारों साल पहले था। और एजुकेशनल वैल्यूज के बारे में तो बहुत कुछ आप लोगों ने चर्चा की है। और रही बात पार्श्वनाथ जैन ये सेमिनार करवा रहा है, निश्चित कहीं ना कहीं ये संदेश है विच कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च, ये निश्चित सभी बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। और मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि जैन दर्शन आज भी जब हम याद करते हैं कि महावीर जैन, मन में यही आता है कि जैन दर्शन कितने अच्छे गुणों को लेकर आज भी चलता है, आज भी समाज में सम्मान है। और खास करके जैन नैतिकता का मूल उद्देश्य क्या है, इसमें आत्मशुद्धि, अहिंसा और मोक्ष है, 3 चीजें मूल है। और जैसे
करुणा, करुणा प्राणी मात्र की करुणा, दया भाव रखना है और सबके साथ मैत्री भाव से चलना है। ये चीजें जो जैन दर्शन हमें सिखाता है और जैन एथिक्स के अंदर ये सब आते हैं, तो निश्चित हमारे लिए काफी हम लोग इससे सीखते हैं। और आगे अगर संसार में अहिंसा का भाव सबके मन में उदय हुआ, सबके हृदय में, सबके मन में, सबके वाणी में, सबके कर्म में, तो निश्चित कहीं ना कहीं हम वसुधैव कुटुंबकम की बात जब करते हैं तो एक ही परिवार में ना कोई इस तरह से बात आएगी, ना हम लोग किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार, दुर्भावना कभी रखेंगे नहीं। ईर्षा, द्वेष, असूया, इन चीजों को त्याग करना है। तो ये जैन दर्शन हमें सिखाता है निश्चित। और उसके बाद आप कहेंगे कि ये सत्य है, सत्य तो हर जगह आज हम कलियुग में सुनने को मिलता है, सत्यमेव जयते जैसे हम जानते हैं। और हमारे उपनिषद में भी कहा गया है सत्यम वद धर्मम च, तो सत्यम वद, हितम वद, न ब्रूया सत्यम अप्रियम। ये चीजें आज भी है, वो जरूरी है। पर सत्य को कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं, सत्य के मार्ग पर कितने लोग चलते हैं। गांधी जी जैसे लोग सत्य के मार्ग पर चलते थे और हमारे जैन दर्शन में सत्य का महत्व आज भी उतना ही है। और सत्य के मार्ग पर चलते थे जैन मुनियों ने, जैन ऋषियों ने, जैन के जैन लोगों ने आज भी समाज में शांति की प्रतिष्ठा की है। सत्य के माध्यम से शांति की प्रतिष्ठा करना बहुत जरूरी है और ये शांति आज भी जरूरी है। हर समाज में, हर धर्म में, हर परिवार में, हर कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में शांति की आवश्यकता जब पड़ती है तब हम ढूंढते हैं अरे जैन दर्शन में ये बात है। तो इसलिए जैन दर्शन का ये जो सत्य, अहिंसा और उसके बाद आप जैसे कहेंगे हमारे पास अपरिग्रह की बात आती है। अपरिग्रह क्या है ये भी हम जानते हैं, समझते हैं और कभी कभी इसको पालन नहीं करते। ये दुख की बात, जितने आवश्यकता है उतने जाना चाहिए। अपरिग्रह एवं आत्मशुद्धि मूलम भवति। अपरिग्रह का क्या अर्थ है? विद्यार्थी लोग बैठे हैं कि अपरिग्रह का अर्थ है कि संग्रह का भाव का त्याग करना। जितनी जरूरत है उतना लीजिए। आप इकट्ठा करके रख देंगे 10 रुपये है तो 10 रुपये आप अकेले खा जाएंगे तो बाकी क्या होगा। इसलिए जितने आवश्यकता है एक लीजिए, 2 लीजिए, दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। तो ये बड़ा किताबें भी है, वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है और यहाँ भी जैन दर्शन में खास करके इसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है। यही जैन एथिक्स है। और इससे क्या होता है कि दूसरों के प्रति त्याग भाव नहीं जीना है। केवल गीता का जो वैदिक वाक्य है तो निश्चित कहीं ना कहीं इस बात को भी इसी में जैन दर्शन में आगे लिया गया है। तो त्याग भाव से जीना है, इसमें लोभ नहीं होना चाहिए, ईर्षा नहीं होना चाहिए, हिंसा का बिल्कुल अभाव होना चाहिए। कभी ना करके आप आत्मशुद्धि वो कर सकते हैं और त्याग भाव से अपने विवाह का पालन कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित हमारे लिए ग्रहणीय है। और आज भी समाज में जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो निश्चित उसके प्रति हमारा क्या होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए और उसके प्रति हमारे मन में क्या पॉजिटिव थॉट है उसको देखना चाहिए। और जैन दर्शन में जैसे उनका जो एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्या है, क्या शिक्षा का प्रयोजन है, क्या हम क्यों शिक्षा जैन दर्शन के हिसाब से हम चलेंगे, क्या उनके शिक्षा में क्या चरित्र निर्माण के लिए कोई स्थान है। इसलिए जैन दर्शन एवं शिक्षा ने, दर्शन ने हमें एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति के रूप में विकसित करने के लिए हमेशा शिक्षा देता है। तो ये चरित्रवान व्यक्ति संसार में, समाज में कहीं भी जाए तो निश्चित प्रतिष्ठित हो सकता है। तो जैन शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, ज्ञान तो सभी लेते हैं, बल्कि चरित्र निर्माण करने में भी जैन दर्शन सहायक होता है। इसमें शिक्षा को नैतिक जीवन से जोड़ा गया है। ये नैतिक कर्तव्य, नैतिक दर्शन, नैतिक कर्म, ये नैतिक आचरण आज भी समाज में जरूरी है और यही हमें जैन दर्शन ने सिखाया है। और दूसरी बात, अनेकांत के बाद अनेकांतवाद के बारे में, श्यामवाद के बारे में बहुत कुछ कहा गया होगा। आप लोगों ने यहाँ सुना होगा कि अनेकांतवाद क्या है, कि अनेकांतवाद सत्यस्य बहुमुख दर्शन
तो इसलिए आप संयम में रहना ये जनरल शिक्षा सिखाता है। और थोड़ा बहुत एक दो मिनट समय बोलूंगा। जैसे जनदर्शन में रत्न के बारे में बताया गया है। त्रिरत्न है, रत्न ज्वेल्स क्या है, उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये जो चरित्र है, ज्ञान तो सबके पास है। आप जितने भी बैठे हैं सबके पास ज्ञान है, आप सब ज्ञानी हैं। कहते आप सभी ज्ञानी, क्योंकि सबके पास कहीं ना कहीं ज्ञान है। कोई व्यक्ति कोई जब आईक्यू कभी पैदा नहीं होता तो कहीं गुरुओं से सीख करके, गुरुओं के मुख से श्रवण करके, गुरुओं के चरण में बैठ करके और स्वाध्याय करके ज्ञान पाते हैं। तो निश्चित जनदर्शन भी हमें ज्ञान देता है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और इसमें चरित्र निर्माण के लिए बहुत सारे बातें कही गई है, आप लोगों ने इसको अवश्य जानते हैं। और फिर आगे अनुव्रत भी है, महाव्रत भी है, गृहस्थ जो है गृहस्थ के बारे में कहा गया है, साधु संतों के बारे में कहा गया है, साध्वी के बारे में कहा गया है कि महाव्रत को पालन करना है। और ये महाव्रत क्या है ना, महाव्रत है ये नैतिकता को व्यवहारिक और सामाजिक बनाता है। तो इसलिए जनदर्शन में जो नैतिकता के बारे में, महाव्रत के बारे में, त्रिरत्न के बारे में, अनेकांत के बारे में, अनेकांतवाद शादवाद के बारे में और बहुत कुछ कहा गया है। और फिर उसके बाद आधुनिक शिक्षा जो मॉडर्न एजुकेशन आपने की, पहले जो एजुकेशन सिस्टम था गुरुकुल पद्धति में जो हम बच्चे पढ़ते थे, आज भी बच्चे पढ़ते हैं, किस मीडियम में पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, संस्कृत के बारे में कम जानते हैं, दर्शन के बारे में वैसे ही कम जानते हैं। तो हम जब समाज में चरित्र की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो बच्चे उससे दूर भाग जाते हैं। अरे क्या नैतिकता है, क्या चरित्र है, तो उनको समझ में नहीं आता। पर आज जैन दर्शन हमें यही सिखाता है कि हम चरित्रवान बने, ज्ञानवान बने और शीलवान बने, उत्तम शील को साथ लेकर के आगे चले। तो इसलिए जनदर्शन सिखाता है जो शांति शिक्षा है। तो पीस एजुकेशन जो आजकल पीस ओरिएंटेड एजुकेशन, कि शांति के माध्यम से हम रहे, शांति से रहे और दूसरों को भी शांति से रहने दें, ये जो है। और पर्यावरण शिक्षा जो एनवायरमेंटल एथिक्स भी सिखाता है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी सिखाता है। तो बहुत कुछ जनदर्शन से हमें सीखने को मिलता है। जैन एथिक्स आज भी उतने उपयोगी है जितना पहले था। तो इसलिए जैन एथिक्स को कभी भी हम त्याग नहीं सकते, भूल नहीं सकते, और उसको हमेशा ग्रहण करके अगर हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित हमारा आने वाला समय हम निश्चित सबसे कम हम लोग उचित मार्ग में चल पड़ेंगे। और इसीलिए जैन एथिक्स मानव जीवन को नैतिक बनाती
Thank you, sir, for sharing your thoughts with us. Thank you so much. Now this stage is again open for feedbacks. So please, without any hesitation, please come up on the stage. एक मिनट आकर के जो जिसके मन में विचार है वेट मत कीजिए कि बुलाएंगे तब आएंगे आप। मैं यहाँ सभी के नामों से परिचित नहीं हूँ, तो कृपया आप स्वयं यहाँ आकर अपनी प्रतिक्रिया दें। मंचासीन सभी अतिथियों को एवं यहाँ उपस्थित सभी प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स और प्रेजेंटर्स को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरी तो ये मतलब पहला सेमिनार था मेरे लिए, और जैसे ही मतलब हम तो अभी बिगिनर्स हैं, इस फील्ड में भी एंटर ही हुए हैं, तो सेमिनार्स वगैरह हमारे लिए क्या मायने रखते हैं वो हम जानते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे आकर मेरा पहली बार ही था, तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन तो काफी लगी, पर इससे मुझे ये फायदा हुआ कि जो टॉपिक्स दिए जाते हैं, जैसे जैनिज्म है, वो मैं तो बचपन से प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये सारी चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं, लेकिन जब एक सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ पे टॉपिक दिए जाते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से कभी सोचने में ही नहीं आती थी वो चीज, सिर्फ प्रैक्टिस में थी। तो यहाँ आकर वो प्रेजेंट करने के बहाने से उस पर्सपेक्टिव को समझने से काफी फायदा हुआ, और वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, पर्सनल लाइफ में भी। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स वगैरह से मैं मिली, तो मुझे ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि तो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, ये तो इस पोजीशन में है, या इनके पास इतनी डिग्री है, ये किस डेजिग्नेशन में है। सबसे मिलकर मतलब सारे लोग ही बहुत डाउन टू अर्थ थे, बहुत हेल्प कर रहे थे, आपको किस फील्ड में आगे जाना चाहिए वो सारा गाइड कर रहे थे। तो सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू, और सारी ऑर्गेनाइजेशन को थैंक यू। इस सभा में कितने सारे शोध प्रबंध में पाठ किया गया, सभी में जैन धर्म का और किसी में कुछ और दूसरे धर्म का, दूसरे विद्या का आलोचना हुआ है। ये सब जो बार बार हम उसको स्मरण करते हैं, दूसरे आयाम में प्रयोग करते हैं, वो हमारा अंदर में बैठता है और नया दिशा दिखाते हैं। और इसीलिए सेमिनार होता है, संगोष्ठी होता है, इसीलिए वो संगोष्ठी धन्यवाद का पात्र है और सक्सेसफुल है, सफल है। हम सब, मैं मेरा बात कहूँ तो मैं दूसरे जो लोग अपने अपने शोध प्रबंध इधर पढ़ा, उसमें से उसको प्रश्न पूछने से बहुत सारे प्रबंध का कुछ तैयार करके गया, 3-4 प्रबंध में लिख सकता हूँ अभी। ऐसे ही मेरे जैसे साथी जन है, वो अपने अपने लक्ष्य में कुछ जो नया कुछ बुद्धि चिंता ऐसे लेके जाएंगे, तो ये सत्र सही रहेगा एवं सफल होगा। और इसमें जितने सारे प्रबंध हुआ है और प्रबंध करता आयोजन करता, तो सबको मैं साधुवाद देता हूँ। तो हर तरफ से हम सबका ख्याल रखें, और हम भी उन सबको हमारा दिल में बैठा रहे, और फिर बात मिलेंगे। थैंक यू। आमतौर पर समापन समारोह और उसमें धन्यवाद ज्ञापन एक औपचारिकता परक होता है, और उसमें भी जो नई धारा का प्रवर्तन किया पांडे सर ने कि रिमार्क्स और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का गठन किया है कि सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि आमतौर पर जब भी कोई फिल्म, कोई कविता, कोई कहानी, मतलब किसी भी तरह का कुछ वाचन किया जाए, तो उसका मिनिमम एक शब्द क्या होना चाहिए, आपने उसका कीवर्ड्स क्या पकड़ा है। हमारी आदत होती है कि हम उसको बहुत विस्तृत फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि किताब पढ़ी, उसका एक शब्द में एक शब्द कीवर्ड्स क्या है जो पूरे किताब को लीड कर रहा हो। एक मूवी का एक शब्द, मिनिमम शब्द क्या है जो पूरी को लीड कर रहा हो, मिनिमम शब्द पर जाना चाहिए। तो ये जो रिमार्क्स की प्रवृत्ति है, मैं समझता हूँ मुझे 1 मिनट दिया जाता है जनरली, तो उस 1 मिनट में पूरे सेमिनार का सार क्या हो सकता है। तो इस तरीके से सर ने जो शुरुआत किया, मैं धन्यवाद, मैं उसका आभारी हूँ।
और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के गठन के लिए भी सरकार आभारी हूँ। धन्यवाद। मंच पे आसीन और सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। जैसे ही इस संगोष्ठी का विजन है कि हमें वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करना, और गवर्नमेंट का भी विजन है वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करना। मुझे मैत्री शरण गुप्त की मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा, जिसके बोल हैं, आज महंगा है सैया रुपया, आज महंगा है सैया रुपया, रोटी न महंगा लहंगा न महंगा, महंगा है सैया रुपया मगर महंगा है सैया रुपया, बेटा न प्यारा बेटी न प्यारी, प्यारी है सैया रुपया मगर महंगा है सैया रुपया, गांधी न नेता जवाहर न नेता, नेता है सैया रुपया मगर महंगा है सैया रुपया, देश न सच्चा दीन नहीं सच्चा, सच्चा है सैया रुपया मगर महंगा है सैया रुपया। मेरा प्रश्न ये है कि हम वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रही है, और ये कार्य होगा एकेडमिया के माध्यम से। तो क्या समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो एकेडमिया में क्या वो पहुंच सकता है? मुझे लगता है एकेडमिया के माध्यम से सभी लोगों को वैल्यू एजुकेशन जो है नहीं दी जा सकती है। तो इसके लिए हम दर्शन के अध्येताओं को मुझे लगता है एक ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वर्कशॉप के माध्यम से जो है, छोटे छोटे सेमिनार के माध्यम से गांवों में जाकर लोगों के पास जाकर के जो है वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। और हम जिस ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो जैन ट्रेडिशन हो, बौद्ध ट्रेडिशन हो या वैदिक ट्रेडिशन हो, इन्हें हमारे आचार्यों को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो गाँव गाँव में जा करके उस वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो है वैल्यू एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया, लोगों तक पहुंचाया। तो इस प्रकार का प्रयास जो है हम दर्शन के अध्येताओं को भी करना चाहिए। ये केवल गवर्नमेंट का काम नहीं है या एकेडमिया का काम नहीं है, ये एक सुपरगेटरी एक्शंस के रूप में जो है इसकी जिम्मेदारी हम लोगों को भी लेनी चाहिए, तब हम हमारा जो विजन है वो पूर्ण हो सकता है। अदरवाइज एकेडमिया के माध्यम से यदि हम ये चाहें कि वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करें तो मुझे लगता है शायद इम्पॉसिबल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ वक्तागण हैं जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं और वो अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो कृपया आपका स्वागत है। आप जो लोग भी ऑनलाइन जुड़े हैं, क्या उनको मेरी आवाज आ रही है? यदि आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। Yeah, good afternoon, respected chair and all the distinguished guests. First of all, I would like to thank the host institution, especially Professor Pandey and especially Professor Praveer Kumar Yadav, who was in touch with all the online participants. This seminar was very much adequate, and especially in the recent times where ancient wisdom, the Indian philosophical texts are really needed to be reinterpreted for contemporary scholarship and for the practical life in India, especially to show the importance of these texts to the whole world. So, इस माध्यम से इस माध्यम से हमने यहाँ ये कर पाए, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा खुद का PhD का काम भी जो है वो बुद्धिज्म का सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी मैंने कंटेम्परेरी फिलॉसफी ऑफ माइंड में और क्वांटम फिजिक्स में इंटरप्रेट किया है, तो मैं खुद इसमें इंटरेस्टेड था इस तरीके के विषय में, तो बहुत अच्छा रहा। और एक सजेशन मैं ये देना चाहूँगा, और मैं तो चाहता हूँ कि ये हो, क्योंकि हमारी फिलॉसफी, हमारा दर्शन जो है ये हायर एजुकेशन तक ही सीमित रह जाता है। हमारी फिलॉसफी, हमारा दर्शन जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, वहां तक अगर हम ये ले जाए किसी के माध्यम से, स्कूल के बच्चों में ये वैल्यू अगर हम कल्टिवेट कर पाए दर्शन के द्वारा, तो मैं सोचता हूँ कि हमारे बच्चों का जो
बेस्ड होगा वो मजबूत होगा और हमारे सिटीजन का भी बेस्ड होगा वो मजबूत होगा भारत के नागरिकों का। धन्यवाद। धन्यवाद। यदि और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। शुरू कीजिए, नहीं आ रहे तो जबरदस्ती नहीं बोल रहा, ठीक है शुरू करिए। आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, नंबर कम हो जाएगा क्या नंबर कम हो जाएगा, नंबर तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, नंबर कम हो जाएगा और जल्दी आएंगे, जिनको बोलना है आके बैठ जाएंगे, हमारा टाइम बचेगा और आप लोगों का भी टाइम बचेगा। क्वेश्चन पूछने के टाइम पे आप ऐसा करते तो अच्छा होता। क्वेश्चन पूछने के लिए लोगों के साथ ऐसा करते तो अच्छा होता। वो तो फिर मैं नहीं था, फिर मैं सारा काम रोक देता। हमको वो तो आप लोगों की ड्यूटी थी ना, आप लोगों को चेयर किसने दिया गया? हमने किया है, थोड़े बहुत किया है। Pronouns to word. I will share a few of my thoughts here. First about Kashi. 10 years ago, when I was first time in Kashi, I met a foreign lady. She is from France, and she told me, became friends eventually. She told me one thing, you know, there is a one secret about Kashi. Once you are in Kashi, Kashi will love you. Once you are in Kashi, you will love Kashi. So there is a love relationship will come about. And another secret is that once you are in Kashi, you will have to come again in your life, again, several times. So I think this is true. This is the third time I am in Kashi. So Kashi has such an attraction as a South Indian. That is first thing. So thank you all organizers for having me here. And what I found lacking in discussion was there was no paper about the psychology of education. All were discussing about philosophy of education, how Jain philosophy can be transformed into education. Human being is a psychological being, so it's not easy to put into practice all philosophies in our lives. We have to change ourselves. I think you may have read Sigmund Freud. He says that a human personality has got three aspects: id, ego, and superego. You may know that. It means it's very crude. It knows no laws, no human laws. Second is ego and superego. Ego and superego knows all social laws. You have to change. You have to go to your id. First, you have to change yourself. So all education has to be focused on mind, how your personality works, what are your thoughts. So you have to begin with mind first. In other sense, personality. So you have to know about personality. To know about personality, you have to start with psychology. So what I found in all these papers is that there was no paper on psychology of education. This I found very missing. Then all seminar is about food and it's all about food for brain and food for belly. So wherever you go, you will get very good discussions, extended discussions, and also you will get food. So it's equally here, but the difference, what I found difference is when I went for my first seminar in Ujjaini for Kalida Samayo, most of the papers are read in Hindi. I think in the session mine was the only paper in English. So when I started to read my paper, when I started to read my title of my paper, they told me that your time is over. For this paper, I have been spending 3 months writing, rewriting, showing my teachers. They are making all the corrections and they gave me corrected version. And I was taking this paper with a big hope that I can present this paper, I can impress the audience. But the fact that once I started to read the title, they told me that your paper, your time is over. Because what I found is that they don't like English. That is what I felt. This was my first experience. Now reaching here,
cut short my talk. Here, what I found the difference is that we have been given enough time. At least I got 5 minutes to present my paper, and I am fully satisfied. What I wanted to convey, I have conveyed what I wanted to convey. So I am very happy to be here. And there is, in another sense, there is friendship, fraternity, equality, everything is here. Whatever you find in Jaina philosophy, Anekāntavāda also you can, because I have to stress on Anekāntavāda because everyone's paper was on Jaina philosophy and education. Mine was different. I was talking about Tantra. A kind of Anekāntavāda also you can see here also. Because my presentation was different, but nobody objected. Nobody asked me why you have chosen a different topic. So, in another sense, I found fraternity, friendship, everything is here. So, in every sense, this was a good experience. Your hospitality, thank you for your hospitality, everything. Thank you, sir. मेरा नाम नूतन कुमार सिंह है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ और मुझे यहाँ सब कुछ अच्छा लगा। हर लोग एक दूसरे से सीखने के लिए सब कुछ सीखते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे प्रोफेसर पांडे सर की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हर चीज में आगे रहते थे, और घोष सर की, प्रोफेसर रघुनाथ घोष एंड प्रोफेसर अनिवार्य सर की सादगी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं IIT मुंबई भी अभी IPC के सेमिनार में गया था, बहुत लोगों से मिला था, और वहाँ मैं पाया कि मेरे विश्वविद्यालय से कोई नहीं आए थे, लेकिन इस बार मेरे विश्वविद्यालय से 2 प्रोफेसर भी आए, और नेहा और ऋचा IP कॉलेज से, और श्रेया हिंदू कॉलेज से जो अभी MA कर रही है, उसके भी बहुत अच्छे विचार थे और बहुत अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड पेपर थे, बहुत मेहनत किया हुआ था। मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री रहा है, और मुझे फिलॉसफी से का बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुझे फिलोसफर से मिलके बहुत अच्छा लगता है, और मुझे सेमिनार में आने से पता चलता है क्योंकि लास्ट टाइम आते मैथमेटिशियन फिलोसफर बन जाते हैं, तो ये मुझे अच्छी सीख। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी प्रतिक्रिया देने के लिए। अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगी इस संस्थान के सम्माननीय सदस्य प्रोफेसर SP पांडे सर का। सर कृपया आइए और अपने वक्तव्य से, अपने विचारों से हमें कृतार्थ करिए। జైన విడారోగ స్వభావో స్వభావనడిపై तस् गुणिक गुरु रणमो अनेकंतवायस, जिसके बिना समाज का व्यवहार, संसार का व्यवहार कथनों भी नहीं चल सकता, उस संसार के एकमात्र गुरु अनेकांतवाद को नमस्कार है। सिद्ध सेन दिवाकर सर्वमति प्रकरण 4:69। मैंने अनेकांतवाद से इसलिए अपनी बात प्रारंभ की क्योंकि पूरे 3 दिन में हमने देखा कि अधिकांश जो पेपर्स थे वो स्यादवाद, अनेकांतवाद और अहिंसा और उनके एप्लीकेशंस कैसे एजुकेशन में होंगे, इस पर ही आधारित थे। अनेकांतवाद के अलावा भी जैन दर्शन में बहुत ऐसे सिद्धांत हैं जिनको यदि हम अप्लाई करें मॉडर्न एजुकेशन में तो वो एजुकेशन के रूप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांतवाद, वाणी में स्यादवाद
और समाज में अपरिग्रह, ये 4 ऐसे सिद्धांत हैं जिनको यदि हम ट्रूली अप्लाई करें तो जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है उसमें अनेक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। अगर हम उसे अप्लाई करें केवल एकमात्र अनेकांतवाद को मिले तो चूंकि जैन दर्शन एक बहुवादी दर्शन है, तत्ववादी दर्शन है, वस्तुवादी दर्शन है, इसलिए जो उसका जो प्लुरलिस्टिक व्यू है, उसकी जो प्लुरलिस्टिक थिंकिंग है, वह हमें अनेक आयाम दे सकती है और विशेषकर एजुकेशन के क्षेत्र में डाइवर्स पर्सपेक्टिव को हम डेवलप कर सकते हैं अनेकांतवाद के माध्यम से। इसके अलावा अनेकांतवाद, जैसा कि सभी ने बताया कि सभी के दृष्टिकोणों का आदर करिए, क्योंकि वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, अनंत धर्मात्मकम वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, और अगर किसी एक धर्म को ही पकड़ के लिए आप कोई बात करते हैं तो वो दूसरे के साथ अन्याय होगा और उसका समुचित प्रस्थापन नहीं किया जा सकता। यदि हम अनेकांतवाद को लेकर के और उसको एजुकेशन में उसका प्रयोग करें तो हम एनालाइज कर सकते हैं, क्रिटिकल एवेल्युएशन कर सकते हैं, जो कि एजुकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा, अनेकांतवाद चूंकि सबके व्यू को आदर करता है, सबके दृष्टिकोणों का आदर करता है, इसलिए हम रिलीजियस टॉलरेंस को या टॉलरेंस को हम डेवलप कर सकते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। इसके अलावा जैन दर्शन का जो यह सिद्धांत है अनेकांतवाद, यह एक इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को भी बढ़ावा देता है और वह भी अगर हम अप्लाई करें तो एजुकेशन की फील्ड में ये इसका अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा टीचर डाट रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है और ग्लोबल और मेटेरियलिस्टिक इस आउटलुक एजुकेशन में इसका काफी रिलेवेंस भी हो सकता है। तो इन केवल बस इन्हीं 4-5 पॉइंट को हमने आपके सामने रखा कि केवल अन्य सिद्धांतों को जैसा बताया उनको तो आप छोड़ दीजिए, एकमात्र सिद्धांत केवल हम अनेकांतवाद, थियरी ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म को लें और इसका यदि उपयोग करें हम मॉडर्न एजुकेशन में या एजुकेशन के क्षेत्र में तो अनेक आयामों में बदलाव आ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आगे बढ़ेंगे to one of the most awaited program, prize distribution ceremony. So for that, I would like to invite Professor Ramakant Pandey sir and Professor Anekāntavāda Sharma sir. Sir, कृपया prize distribution. ये प्राइज की जो व्यवस्था की गई है वो एक्चुअली उसका मतलब ये नहीं है कि जिसको फर्स्ट मिला वो बेस्ट है और सब कुछ है, सभी बेस्ट है। हर एक का तरीका प्रेजेंट करने का अलग अलग होता है, पर क्योंकि जो है एक परंपरा बनी हुई है कि जो है उसके जजेज होंगे, मार्किंग करेंगे, ठीक है ना। जब आप ओरिएंटेशन वगैरह करने जाते हैं ना टीचर्स जो है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई किसी को अलग अलग नंबर नहीं मिलते हैं। या जो हम जैसे कोई वर्कशॉप करते हैं तो वहाँ सभी को सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो कोई बेस्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, वो एक व्यवहार बना हुआ है इसलिए देना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जितने सेशन थे, आइए जरा, जितने सेशन थे हमारे उसमें एक मर्ज कर दिया कुछ सेशन, तो हमने फर्स्ट सेकंड 2 प्राइज रखा, थर्ड नहीं रखा,
ठीक है ना। तो हर एक सेशन से एक फर्स्ट प्राइज और दूसरा सेकंड प्राइज, ठीक है ना। जो मर्ज किया है वो भी एक ही सेशन, 2 सेशन नहीं है, ये मत समझिए कि 2 सेशन। तो एक तो ये हो गया, और बाकी जो थर्ड प्राइज की बात है, बाकी जितने लोग हैं वो सब थर्ड प्राइज पर है, ठीक है। ये हमने इस तरह से हमने बनाया जिससे कि हर एक बराबर है, कोई ऐसा नहीं है कोई हम किसी को कम कर रहे हैं, किसी को ज्यादा कर रहे हैं, कोई ये कहे कि नहीं जी उसको तो मिल गया मुझे नहीं मिला, मैं अच्छा बोला, ऐसे कोई नहीं है, सभी अच्छा है। और जज जो हमसे पहले जब मैं बीए में पढ़ता था ना, तो हमारे टीचर थे जयपाल विद्यालय का, वो संस्कृत को पहले बीए लाइन में डायरेक्टर भी थे, तो उनकी एक किताब है स्वप्नवाचक है। तो पहली लाइन में पता है क्या लिखा हुआ है कि साइंस किसको कहते हैं और आर्ट्स किसको कहते हैं, मैंने साहित्य क्या है और विज्ञान क्या है। तो कहते हैं कि 2 + 2 = साइंस है, और 2 + 2 = 5, 3, 4, 8, 9 कुछ भी कर दो वो साहित्य है। तो वो इसीलिए है कि जब 2 जज होंगे, मान लीजिए जो प्रेजेंट कर रहे हैं उस 2 जजों के अलावा कोई दूसरे को कर देंगे तो हो सकता है वो किसी और को फर्स्ट प्राइज दे दे। तो ये वही हमारे जैन सिद्धांत में लागू है, न्यायवाद का जो सिद्धांत है वही है, एक दृष्टि नहीं है, अनेकांत दृष्टि है ना। तो ये क्या करके और ये इस तरह से हमने ये प्राइज का फॉर्मेशन किया है, इसमें भी हमने अनेकांतवाद सिद्धांत ध्यान रखा है। तो अब जो है मैं शर्मा जी से यही प्रार्थना करूंगा कि वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करें। ये किस तरह से दिया है, लिस्ट कहाँ है इसकी प्रवीण जी? अच्छा ठीक है, ये डॉक्टर अजिता पी आप इधर आ जाइए, उधर लेंगे फोटो उठेगा, यहाँ से इधर से यही पे खड़ा कर दे तो फोटो उठेगा नीचे। आई बैकग्राउंड रहेगा ना, आप दीजिए, आप इस साइड से वो आगे अजितन पीटी कौन सा प्राइज है? सर आपके साथ प्राइज नहीं बताया जाएगा कौन किसका है। नाम कोई सेकंड पार्ट नहीं बताना, वही तो मैंने बोला। अच्छा ये नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। नहीं नाम वो अपने आप पूछ लीजिएगा, अच्छा हमें नाम से नहीं करें। नाम बोलने तो आ रही है ना। डॉक्टर प्रियंका शाह वो नहीं है, वो हाँ दूसरे प्रियंका देवी वैसे ये सारे प्राइज जो हम जा रहे हैं सब फर्स्ट वाला ये ये अपरिग्रह डॉक्टर सुलभ जैन। सुलभ जैन है ऑनलाइन। श्रेया दिव्या हाँ इधर से जाइए। नेहा
पीछे से बोलते, पीछे से नहीं हाँ उधर से नहीं अभिषेक जैन पीछे उधर से ना घूमने यादव राहुल कुमार राय कोला गुरबाला वर्मा डॉक्टर गुरबाला गुरबाला डॉक्टर सुरबाला वर्मा सिद्धांत तिवारी वो भी ऑनलाइन सिद्धांत तिवारी होगा तो हाँ वो आई सिद्धांत तिवारी मीनू तिवारी बन ही जाएंगे मैथमेटिशियन
कोई फ्रेंड है उनको दे देना। मोदी जी को प्राइज नहीं सब मतलब है। आपके अंदर मैंने पीएचडी किया है। आप सभी पुरस्कृत प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बोल दीजिए बस वो बोलेंगे टाइम जाएगा। मेरा नाम प्रोफेसर अंबिकादत्त शर्मा है। मैं काशी विश्वविद्यालय से पढ़ लिख के डॉक्टर विश्वविद्यालय में विगत 28 वर्षों से दर्शन काव्य में अध्यापन करता हूँ और अब सेवानिवृत्त होकर फिर काफी लौट आया हूँ। यहाँ 3 दिनों की संगोष्ठी है। विचार को बहुत ही प्रभावी ढंग से रखा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किया जाए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपनी ज्ञान परंपरा की जड़ों से जुड़ सकें और अपनी ज्ञान परंपरा की जड़ों से जुड़ते हुए वैश्वीय दक्षता को भी हासिल करने वाले नागरिक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी प्राचीन विद्याओं से जुड़ना होगा और प्राचीन विद्याओं को आज के संदर्भों में उनको जांच परख के उनकी गुणवत्ता को फिर से अपने जीवन में समाज में और अपने राष्ट्र निर्माण में हमें उसको समाहित करना होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर यह एक सफल संगोष्ठी डॉक्टर रमानाथ गांधी जी ने पार्श्वनाथ की संबंधित किया। बहुत ही सफल संगोष्ठी। तो प्राइवेट शिक्षा नीति के बाद शिक्षा नीति में आप क्या देखिए, पहले की शिक्षा नीतियों में का जो उद्देश्य उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जरूर बल दिया, लेकिन हमारे ऊपर जो निवेश भाव का आवरण है और हमारा मन जो औपनिवेशिक हो गया है, जिसके चलते सदैव हमें अपनी ही सभ्यता और संस्कृति के प्रति जो हीन भावना भर गई उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जैसे उपाय किए गए शिक्षा नीति आप देखते होंगे पूरे देश में भारतीय ज्ञान परंपरा फिर से हासिल करने की व्यवस्था किया जा रहा है। जगह जगह भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित अध्ययन खोले जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं ताकि जो 150 वर्षों में इस राज से लेकर आजादी तक पूरा निवेशित हो गया उसको भी औपनिवेशिक वह एक गौरवशाली समृद्धशाली वैभवशाली विकसित भारत के निर्माण फोकस हो गया
एक भाव, उस पर विचार किया विभिन्न विषयों को लेकर के, सिद्धांत विचारों को लेकर के कि अपने जीवन में हम उसे कैसे अपनाएं। एक औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में यही अंतर है। क्लासरूम में तो हम पढ़ाते हैं वो रिजल्ट लेने के लिए, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, पर जीवन में जब हम आते हैं तो वह सफल होता है। तो उस दृष्टि को पर ध्यान दे करके हम किसी बच्चों को शिक्षा दें, वो बहुत इम्पोर्टेंट, वो उसकी आज आवश्यकता है। तो 3 मुद्दे हैं जो आज के समय, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। तो इसमें 3 चीजें, एक तो इंटीग्रेट करना है ऐसे विजन के थॉट को, सारे थॉट को नहीं, जो पॉजिटिव विजन देते और निगेटिव को नहीं, ऐसे निगेटिव भी हो सकते हैं, तो हम पॉजिटिव रिजल्ट की बात करें तो उसको इंटीग्रेट करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो है उसको हमें जोड़ करके हमें समाज में कार्य करना है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो। अब जैसे हम उदाहरण के लिए ये देते हैं कि आज जो है मेडिकल शिक्षा, चिकित्सा के आज लोग क्या चाहिए, धन, यश और विद्या, ये है ना, ये 3 चीजें हैं शिक्षा करती है। तो धन कैसे आए, हमारे जो प्राचीन शिक्षा का जो मूलभूत है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, हमारे जो प्राचीन परंपरा, ये तो क्या था कि धर्म अर्थ काम हो, ये पुरुषार्थ है। तो उसमें एक चारवाक जैसे सिद्धांत है जो आज भी जो है हम कहेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो है धर्म को हटा देते थे और केवल अर्थ की बात करते। चाणक्य ने वो सिस्टम चेंज कर दिया, वो कह दिया कि धर्म कमाओ, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यही है, मैनेजमेंट का भी यही है, बिजनेस पूरा स्ट्रेटेजी यही है कि आपको व्यवसाय करना है, पैसा कमाना है, पर दैट शुड बी धर्म बेस्ड, नीति बेस्ड, उसको ह्यूमन वैल्यू की बात करते हैं, उसको हमें ध्यान करते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूँ कि किसी कंपनी में, जैसे मान लीजिए एडिडास ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है बहुत बड़ी कंपनी, वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो हर एक आदमी सोचता है कि मुझे जो है ऑनलाइन काम करना, आजकल तो ऑनलाइन भी हो गया ना, ऑफलाइन काम करना है, ठीक है। तो वहाँ जाता है, पैसा देता है, मेरा इतना पैकेज है, इतना पैकेज, और फिर बाद में वो बीमार पड़ जाता है ना। तो जरूरत है वहाँ शिक्षा दें। जैन के विचार को मैं तो ये करूँ, एक सर्वे आप ले लीजिए और 1 साल जो है वो कंपनी के एम्प्लॉय को कहिए कि आपको ये नियम फॉलो करते हैं, ये नीति जो है, विचार जो है जैन सिद्धांत के, उसको या एशियन नीतियों विजन पे, उसको आप फॉलो करके आप देखिए रिजल्ट कौन सा देता है, जो आप मॉडर्न जो है विचार को लेकर के कार्य कर रहे हैं वो, या जो पुराने विचार को लेकर के कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये जो है इम्पोर्टेंट है, अप्लाइड एशियन विजन और ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें चरित्र निर्माण की बात करेंगे हम, जैसे कि आज पूरे वर्ल्ड में एथिक्स की बात लोग कर रहे हैं, है ना। तो चरित्र धर्म हमारा वही है, धर्म हिंदू मुस्लिम से नहीं मतलब, हमारे पूरे शास्त्र में एशियन विजन में हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध से कोई मतलब नहीं। वहाँ धर्म का मतलब है ह्यूमन लॉ, नेचुरल लॉ, ठीक है ना, जिसको लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। तो धर्म बेस्ड जो है शिक्षा होनी चाहिए, धर्म बेस्ड जो है व्यवसाय होना चाहिए, कोई भी कार्य हो टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। इसीलिए आज हम नॉलेज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो नॉलेज मैनेजमेंट कहाँ से लाया है, अप्लाइड एशियन विजन से ही निकले। कोई भी मैनेजमेंट की जो बड़े से बड़े IIT हैं या अहमदाबाद में जो इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का, वो नॉलेज मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो अप्लाइड एशियन विजन को ही पढ़ते हैं, तब जाके क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो वो थ्योरी तो पढ़ा दिया, थ्योरी तो कोई भी पढ़ा दिया, उसको व्यवहार करना वो इम्पोर्टेंट, ये मेरा बात है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए सादर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा सर को। सर प्लीज काइंडली डिलीवर योर प्रेसिडेंशियल एड्रेस। यम शैवा समुपासिते सीति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्धि प्रमाण पटवन करते की नैयायिका अर्हंत जय शासन रतान कर्मी की मीमांसका सोयम नो विदधात वांछित परम त्रैलोक्य नाथो हरि।
Applied Ancient Wisdom, Jain Philosophy for Transforming Education, इस विषय को केंद्र में रखकर भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सौजन्य से पार्श्वनाथ विद्यापीठ के तत्वावधान में आयोजित इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी के समापन सत्र में मंच पर उपस्थित इस देश के वरिष्ठ दार्शनिक प्रोफेसर रघुनाथ घोष, इस संगोष्ठी के समन्वयक सूत्रधार प्रोफेसर परमानंद पांडे जी और इस पार्श्वनाथ विद्यापीठ के सम्मानित सदस्य और मेरे अग्रज वर्ग प्रोफेसर एस.पी. पांडे जी, भाई ओम प्रकाश जी जो किन्हीं कारणों से यहाँ से अभी अपने ऑफिस में चले गए, सभागार में उपस्थित मेरे प्रिय सरोज कामकाज जी, अनिर्वाण जी, प्रखर, ऋचा, नेहा और मेरे बहुत सारे मतलब प्रिय प्रतिभागी हैं। आप इस संगोष्ठी के शीर्षक पर ध्यान दें तो इसका पहला भाग है एप्लाइड एंशिएंट विजडम। ये एंशिएंट शब्द का जो प्रयोग है, अगर ये नहीं किया जाता, केवल इतना ही कहा जाता कि एप्लाइड विजडम या एप्लाइड इंडियन विजडम, तो मुझे लगता है कि अच्छा होता, क्योंकि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये युगों का ये विभाजन का जो तरीका है वो पश्चिमी तरीका है, और ये तरीका पश्चिम ने इसलिए अपनाया कि पश्चिम में काल की जो अवधारणा है वो लीनियर है, और जब हम काल की लीनियर अवधारणा को मान के चलते हैं तो अतीत से उत्तरोत्तर कटता हुआ वर्तमान ही प्रगतिशील वर्तमान होता है। अतीत से उत्तरोत्तर कटता हुआ वर्तमान, इसीलिए एंशिएंट से मेडिवल कट जाता है और मेडिवल और एंशिएंट से मॉडर्न कट जाता है। ये युगों के विभाजन का जो ये तरीका है ना, ये पश्चिमी तरीका है, और ये हम लोगों के मन के ऊपर कहीं न कहीं एक कॉलोनाइज्ड कैटेगरीज का प्रभाव है कि हम उससे अपने को मुक्त नहीं कर पाते हैं। बहुत सतर्कता के बावजूद भी कहीं न कहीं जाने अनजाने में सब चूक हो जाती है। अपने यहाँ युगों के विभाजन का ये तरीका नहीं रहा है। अपने यहाँ युगों के विभाजन का तरीका है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और युगों के इस विभाजन के पीछे की जो दृष्टि रही है वो नीति रहा है, मूल्य, नीति और मूल्य के आधार पर हम युगों का विभाजन किए। और प्राचीन, मध्य, आधुनिक या पाषाण युग, ताम्र युग, प्रस्तर युग, ये सब जो विभाजन के तरीके हैं, ये एक तरह से कर्म प्रधान तरीके हैं, तकनीक प्रधान तरीके हैं। और तकनीक में भी ये नीति होती है कि हर आने वाली जो तकनीक होती है वो पुरानी तकनीक से बेहतर होती है और उसको रिप्लेस करती है। वो टाइम के लीनियर कंसेप्शन पर तकनीक का भी विकास होता है। तो हम लोग जब भी प्राचीन भारत की प्राचीन विद्याएं, ये भारत के संदर्भ में नहीं कहा जाना चाहिए। भारत की विद्याएं हैं वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक नहीं है, क्योंकि भारत की परंपरा जो है उसमें एक सातत्य है, निरंतरता है, उसमें कहीं विच्छिन्नता नहीं है। और इसलिए
हमें इस तरह का प्रयोग करना चाहिए। इस शीर्षक में एक दूसरा शब्द है अप्लाइड। प्रायः अक्सर जब हम अप्लाइड शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका हम लोग साधारण अर्थ लेते हैं अनुप्रयुक्त होना। वास्तव में मतलब एक कंसेप्चुअल कंसेप्चुअली ये मिसनॉमर अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम इस तरह से अप्लाइड विजडम का प्रयोग करते हैं तो इसका कभी कभी मन में लगता है कि कोई विजडम जो है वो अनअप्लाइड है और कुछ ऐसा विजडम है जिसको अब अप्लाइड करना है, ऐसा है। इसी प्रकार के कंसेप्चुअली मिसनॉमर अंडरस्टैंडिंग मतलब हमारे पठन पाठन में पैदा हुआ अप्लाइड एथिक्स को लेकर। अप्लाइड एथिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि कोई अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र है और कोई अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र तो सदैव अनुप्रयुक्त होता है, तब फिर अप्लाइड एथिक्स क्या पुनरावृत्ति दोष से ग्रसित था क्या? नहीं। अप्लाइड करने का मतलब ये है कि पारंपरिक रूप से जिन मानदंडों के आधार पर हम समस्याओं का समाधान करते थे, सभ्यता के विकास क्रम में अब समस्याएं नए रूपों में आ रही हैं और एकदम नई नई समस्याएं आ रही हैं। और जो पुरानी तकनीक थी तो कभी कभी अब इन नई समस्याओं के प्रति वो असफल हो जा रही है। तो हम उस पुरानी दृष्टि को, पुरानी विद्या को, पुराने मूल्यबोध को हम सभ्यता के वर्तमान दहलीज पर जो मनुष्य की नई नई प्रकार की अस्तित्वात्मक समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनके समाधान के लिए हम उनमें किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करें ताकि वो आज के लिए भी समीचीन और अनुप्रयुक्त हो सके। इस अर्थ में अप्लाइड एथिक्स या अप्लाइड विजडम की बात होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई विजडम अनुप्रयुक्त होता है और कोई अनुप्रयुक्त होता है। तो इस शीर्षक पर इस छोटी सी टिप्पणी के साथ मित्रों, 3 दिनों तक जैन दर्शन के बहुत सारे सिद्धांतों और परिप्रेक्ष्यों को शिक्षा दर्शन के संदर्भ में आप लोगों ने विचार किया और प्रोफेसर रमानाथ पांडे जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी मतलब आप लोगों के विचारों का साक्षी होने का अवसर दिया। और मैं आपको धन्यवाद इसलिए देता हूं कि न तो मैं जैन दर्शन का विद्वान हूं और न तो मैं शिक्षा दर्शन का जानकार हूं। तो आप लोगों के पत्रों को, आप लोगों के विचारों को सुन के मैं अपने को समृद्ध होता हुआ पाया। मैं अपने को समृद्ध होता हुआ पाया। मित्रों, ये बात तो आप सब लोग इतने 3 दिनों में समझ गए कि भारतीय ज्ञान परंपरा में अनेकांतवाद की परिव्याप्ति और स्वीकार्यता को दिखाने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा में अनेकांतवाद की परिव्याप्ति और स्वीकार्यता को दिखाने के लिए अनेकांतवाद के समर्थक दार्शनिकों ने बहुत प्रयास किया। और आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोफेसर रघुनाथ घोष के व्याख्यान में कि किस तरीके से उपनिषद परंपरा में, मीमांसा की परंपरा में, वेदांत की परंपरा में कई प्रकार के अनेकांतवादी संदर्भों को प्रोफेसर रघुनाथ घोष ने उद्घाटित किया। और जैन दार्शनिकों ने ये अपनी तरफ से दिखाने का भरपूर प्रयास किया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में अनेकांतवाद के लिए पर्याप्त अवकाश है। इस प्रकार से जब हम अनेकांतवाद का विस्तार करते हैं तो उसमें थोड़ी सी सैद्धांतिक लचीलापन आ जाता है। लेकिन यदि किसी सिद्धांत की परिव्याप्ति को आपको विस्तार देना हो ना, तो उसमें थोड़ी सैद्धांतिक लचीलापन जो है वो क्षम्य होती है, क्योंकि आपको अपना दायरा बनाना है। लेकिन इस दायरे को बढ़ाते हुए आप देखेंगे कि
अनेकांतवाद को जिस तरीके से जैन दार्शनिकों ने प्रस्तुत किया और अपने ज्ञान के साम्राज्य का विस्तार करते हुए दूसरे परंपराओं में भी अनेकांतवाद के संदर्भों को उन्होंने रेखांकित किया, इससे मित्रों इतना तो समझ में आता है ना कि अनेकांतवाद या अनेकांत दृष्टि जो है वो सर्वथा निराकरणीय या निग्रहणीय नहीं है। ये कहीं न कहीं मनुष्य के संसार में होने की जो मानवीय परिस्थिति है उसके साथ इसका कोई न कोई तालमेल है, इसलिए आप इसका निराकरण नहीं कर सकते। अगर आप इसका निराकरण नहीं कर सकते हैं तब कहीं न कहीं से अनेकांतवाद समावेशनीय हो जाता है, निराकरणीय नहीं रह जाता है। तो अब कहीं न कहीं आपको अनेकांतवाद के परिप्रेक्ष्य को अपने सिद्धांत, अपने चिंतन, अपने दर्शन में इसको आपको कहीं न कहीं समावेशित करना पड़ेगा। इसलिए 3 दिनों में कम से कम इतना तो जरूर स्पष्ट हुआ कि अनेकांतवाद जो है वह निराकरणीय नहीं है बल्कि समावेशनीय है। ऐसा नहीं है कि जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य जो प्रमुख दर्शन की धाराएं भारत में रही हैं वो अनेकांतवाद की इस तथ्यात्मकता से परिचित नहीं थी और इस तथ्यात्मकता को अपने चिंतन में समावेशित करने का लोगों ने प्रयास नहीं किया। प्रोफेसर रघुनाथ घोष, जिन्हें हम लोग प्यार से दादा कहते हैं, वो बैठे हुए हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में कम से कम 3 ऐसी दृष्टियां मिलती हैं जिसमें अनेकांतवाद को समावेशित करने का, समायोजित करने का प्रयास किया गया। पहली तो एक दृष्टि स्वयं जैन दर्शन की है जिसको हम दृष्टि सापेक्षतावाद कहते हैं। दृष्टि सापेक्षतावाद। एक दूसरी श्रवण परंपरा की एक दूसरी धारा की दृष्टि है जिसमें अनेकांतवाद को एक दूसरे ढंग से समावेशित करने का प्रयास किया गया और उसे कहते हैं सर्वदृष्टि प्रधानवाद। जब हम सर्वदृष्टि प्रधान कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सभी दृष्टियों को नष्ट नहीं करते हैं, हम सभी दृष्टियों की निस्वभावता को मानते हैं और उसका अतिक्रमण करते हैं। तो सर्वदृष्टि प्रधानवाद के माध्यम से अनेकांत को समायोजित किया बौद्ध परंपरा और वेदांत की परंपरा ने सर्वदृष्टियानुग्रहवाद के माध्यम से अनेकांतवाद को समायोजित किया, सभी दृष्टियों के प्रति अनुग्रह करते हुए। इसीलिए वेदांत के लिए कहा जाता है कि सर्ववादानवसर नानावादानुरोधित, ये अद्वैत की दृष्टि होती है। सर्ववादानवसर नानावादानुरोधित। तो ये नानावादानुरोधिता जो है ना, यह अद्वैती तरीका है अनेकांत को समायोजित करने का। अब आप ये देखिए कि अनेकांत और मतभेद, ये 2 शब्दों पर आप विचार किए तो आपको लगेगा कि ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जहां अनेकांत होगा वहां मतभेद भी होगा, और जहां मतभेद होगा वहीं विचार का स्वातंत्र संभव होगा, और जहां विचार का स्वातंत्र संभव होगा संवादशीलता वहीं संभव होगा। तो अनेकांत, मतभेद, ये दोनों पर्यायवाची होने के चलते विचार का स्वातंत्र और विचारों में संवाद की संभावना को ये बहुत बढ़ा देता है। लेकिन जब हम मतभेद की बात करते हैं तो मतभेद में 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मतभेद में अक्रोध होना चाहिए और अमात्सर्य होना चाहिए। मतभेद हानिकारक और हिंसक तब हो जाता है जब उसमें क्रोध और मात्सर्य मिल जाते हैं। अगर मतभेद में अक्रोध हो और अमात्सर्य हो तो वह मतभेद हिंसक नहीं होता है।
कभी कभी ऐसा लगता है कि अनेकांतवाद जो है वो आग्रही होने का निषेध करता है। मतलब लगता है जैसे अनेकांतवाद में आग्रह का कोई स्थान ही नहीं है। यदि हम इस बात को स्वीकार करने का अनेकांतवाद में आग्रह के लिए कोई अवकाश नहीं है, तो यह भी मानवीय परिस्थिति के साथ न्याय नहीं करता है। हम जिस मानवीय परिस्थिति में रहते हैं उसमें आग्रह तो उत्पन्न ही होते रहते हैं, और वह आग्रह मुझे प्रेरित भी करते हैं, प्रतिबद्ध भी करते हैं, बांधते हैं। तब फिर आग्रह का अनेकांतवादी स्वरूप क्या होना चाहिए? यद्यपि आग्रह एकांतिक होता है, कोई भी आग्रह अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में ही एकांतिक होता है, परंतु एकांतिक आग्रह की अनैकांतिकता यह है कि वह पर परिहारक हो। पर परिहारक, जब आग्रह पर परिहारक होता है तब वह एकांतिक होता है। यदि आग्रह पर परिहारक न हो, मतलब आदर्श का निगेट करने वाला न हो, तो वैसा आग्रह अपने चरित्र में अनैकांतिक भी होता है। मतलब आग्रह भी है और उसमें अनैकांतिकता भी। प्रोफेसर रमानाथ पांडे जी का मतलब इस सेमिनार के पीछे जो ज्यादा बल था, जिस पर ज्यादा बलाघात था, वह यह था कि जैन दर्शन के इस मूलभूत सिद्धांत और जैन दर्शन के अन्य मूल्यपरक और मौलिक सिद्धांतों का शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में उनका विनियोग कैसे किया जाए। मतलब कैसे हम एक अनेकांतवादी शिक्षा दर्शन और उस अनेकांतवादी शिक्षा दर्शन का शिक्षा नीति में उसका विनियोग कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि इस पूरे 3 त्रिदिवसीय संगोष्ठी के पार्श्व में जो विचार काम कर रहा था वो यही था। अब इसमें मित्रों कठिनाई ये होती है कि जब हम अनेकांतवाद के सत्ता मीमांसीय और उसके ज्ञान मीमांसीय स्वरूप पर विचार करते हैं और उसके सत्ता मीमांसीय और ज्ञान मीमांसीय स्वरूप को ही सीधे सीधे जब हम शिक्षा दर्शन में लागू करने की कोशिश करते हैं तो बहुत प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सदैव हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अनेकांतवाद का शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमें उसके सत्ता मीमांसीय और उसके ज्ञान मीमांसीय जो कंसेप्चुअल एक्यूरेसी है उसके प्रति हमें थोड़ा लिबरल एटीट्यूड अपनाना चाहिए। हूबहू हम उसी को शिक्षा दर्शन में लागू नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षा दर्शन की जमीन ही अलग होती है और जमीन अलग होने के चलते हम अनेकांतवाद का उसी रूप में यहाँ विनियोग नहीं कर सकते जिस प्रकार के अनेकांतवाद का स्वरूप अनेकांत विजय पताका या श्यामवाद मंजरी या प्रमाण मीमांसा में प्रस्तुत की गई। तो हमें आखिर अनेकांतवाद को एक शिक्षा दर्शन बनाने के लिए क्या करना चाहिए। पांडे सर और प्रोफेसर सुप्रकाश पांडे जी बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अनेकांतवाद को शिक्षा दर्शन बनाने के लिए सबसे पहले अनेकांतवाद को जैन धर्म से मुक्त करना पड़ेगा। आप इस वक्तव्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि यदि आप अनेकांतवाद को शिक्षा दर्शन बनाना चाहते हैं और शिक्षा में उसका विनियोग करना चाहते हैं तो आपको अनेकांतवाद को सबसे पहले जैन धर्म से मुक्त करना पड़ेगा। धर्म से नहीं, रिलीजन से नहीं, जैन धर्म से। रिलीजन क्यों? जैन अपने को रिलीजन थोड़े कहता है, जैन तो अपने को धर्म कहता है। हम रिलीजन थोड़े कह रहे हैं, हम तो धर्म कहते हैं। तो अनेकांतवाद को जैन धर्म और धार्मिकता से हमें मुक्त करना पड़ेगा।
क्योंकि यदि अनेकांतवाद को लेकर शिक्षा दर्शन में आप जैन धर्म और धार्मिकता के नाम पर यदि जाएंगे शिक्षा दर्शन में, तो वो शिक्षा दर्शन के प्रति अनेकांतिक दृष्टिकोण नहीं रह जाएगा, बल्कि वो एकांतिक दृष्टिकोण हो जाएगा। इसलिए आपको उसको जैन धर्म और धार्मिकता से मुक्त करना पड़ेगा, और तब आप उसे शिक्षा दर्शन में सही तरीके से लागू कर सकते। कोई भी सिद्धांत होगा ना सर, बौद्ध धर्म का भी होगा तो उसको बौद्ध धर्म से मुक्त नहीं करना हो, किसी का भी होगा, तो एक जनरल चीज है ना। अनेकांतवाद को यदि आप जैन सिद्धांत बना के, वो नहीं बना रहा, वो सही बोल रहे। अनेकांतवाद को आप जैन सिद्धांत बना के शिक्षा दर्शन में उसका उपयोग करेंगे ना, तो उसकी अनेकांतिकता जो है वो एकांतिकता में बदल जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको अनेकांतवाद को आपको एक तटस्थ सिद्धांत के रूप में आपको शिक्षा दर्शन में उसका विनियोग करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ये विचार करना पड़ेगा कि अनेकांतवाद जो है उसका सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विनियोग जो होगा वह प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में होगा या मल्टीकल्चरल सोसाइटी में होगा। मतलब अनेकांतवाद जो है इट इंटेल्स टू ए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी और इट इंटेल्स टू ए मल्टीकल्चरल सोसाइटी। जब आप इस प्रश्न को उठाएंगे कि अनेकांतवाद की जो सुटेबिलिटी है, क्योंकि आप शिक्षा दर्शन को लेकर तो समाज में जा रहे हैं ना, एक सांस्कृतिक परिवेश में जा रहे हैं ना, तो आपको ये सुटेबिलिटी जज करना पड़ेगा कि वो जो सोसाइटी है ये अनेकांतवाद के माध्यम से हम एक प्लूरल सोसाइटी बना सकते हैं या मल्टीकल्चरल सोसाइटी बना सकते हैं। जब इस प्रश्न को आप उठाएंगे तब अनेकांतवाद का सिद्धांत सीधे सीधे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निहितार्थों के साथ जुड़ जाएगी, और तब ये देखना पड़ेगा कि स्वयं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत में एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का निर्माण करना चाहती है या मल्टीकल्चरल सोसाइटी का निर्माण करना चाहती है। मल्टी शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5 या 6 जगह हुआ है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग करने का जो संदर्भ रहा है वो मल्टीलिंगुअल, मल्टीडिसिप्लिनरी, इस प्रकार से रहा है। प्लूरल शब्द केवल 2 जगह पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयुक्त हुआ है, एक जगह प्लूरल सोसाइटी के रूप में और एक कोई अन्य जगह में प्लूरल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पहले हमें यह स्पष्ट होना पड़ेगा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्मायकों से यह पूछना पड़ेगा कि क्या स्वयं राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को लेकर भ्रम में तो नहीं है कि थ्रू दिस एजुकेशन पॉलिसी we have to create and involve and enrich a pluralistic type society or a multicultural type society। क्या ये प्रश्न स्वयं एक अस्पष्ट तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं उलझा हुआ तो नहीं है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के जो रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबसे पहले अपने विचार को इस बिंदु पर बिल्कुल स्पष्ट करना होगा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनाना चाहती है या मल्टीकल्चरल सोसाइटी बनाना चाहती है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर ये प्रश्न उठाएंगे तो अनेकांतवाद से सीधे जुड़ेगा, और तब ये जज करना होगा कि अनेकांतवाद की जो सुटेबिलिटी है
वो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के लिए है या मल्टीकल्चरल सोसाइटी के लिए है? आखिर ये प्लूरलिस्टिक सोसाइटी और मल्टीकल्चरल सोसाइटी में अंतर क्या होता है? इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। बहुत ही सरल और सपाट शब्दों में कहें तो मल्टीकल्चरल सोसाइटी के लिए उदाहरण दिया जाता है वो सैलेड का, सलाद का, जिसमें मूली भी होता है, गाजर भी होता है, मटर भी होता है, चुकंदर भी होता है, और सबकी अपनी अपनी अलग पहचान, अस्मिता होती है और वो एक तरह से असेंबलिंग की तरह होती है। उनमें कोई एक ऐसा चीज नहीं होता जो डोमिनेंट हो। जब इस तरीके से जब सामाजिक समूह होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। लेकिन जब प्लूरलिस्टिक सोसाइटी होता है उसमें कोई एक स्ट्रीम जो होता है वो डोमिनेंट होते हैं और बाकी जो सब स्ट्रीम्स होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं। और ये कहा जाता है कि जो माइनॉरिटी और इनका जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग बृहद परंपरा और लघु परंपरा एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में कहते हैं, तो ये बृहद परंपरा और लघु परंपराओं के बीच का जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है उससे एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनती है। अब इस मानदंड पर हमें भारत पर विचार करना चाहिए कि भारत के लिए कौन सुटेबल है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी का कंसेप्ट या प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का कंसेप्ट। तो आज आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विनियोग जिस तरह से किया जा रहा है उसमें आप देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा पर पूरे देश में बहस हो रही है, भारत बोध पर बहस हो रहा है और हिंदू स्टडीज खोले जा रहे हैं और IKS के सेंटर खोले जा रहे हैं। और इनमें आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं से ये इन सारे उपक्रमों में अनैकांतिकता नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं एकांतिकता है। और एकांतिकता आपको इसलिए दिखाई पड़ेगी कि इनको लगता है कि भारत की जो वैदिक परंपरा है वही भारत की एक बृहद परंपरा है और बाकी श्रमण आदि अन्य परंपराएं जो है वो माइनॉरिटी में है। इसके इम्प्लीकेशन में ये बात स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मित्रों इस समस्या पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और प्रोफेसर पांडे जी ने एक तरह से शिक्षा दर्शन के संदर्भ को ले मतलब ये जो प्रश्न उठाया, 3 दिन का जो परिचर्चा सत्र उन्होंने आयोजित किया, तो एक तरह से ये प्रयास है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विनियोग हम एक समग्रतावादी दृष्टि से करें और जिसमें भारत की ज्ञान परंपरा की सभी धाराओं को समान महत्व प्राप्त हो। ऐसा न हो कि कोई एक धारा डोमिनेंट हो जाए और दूसरी धारा एक माइनॉरिटी के स्टेटस में आ जाए और उससे डिमांड किया जाए कि ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो ये ऐसा भारत का चित्र नहीं है। सनातन भारत का जो स्वरूप है उसमें असहमतियों के लिए जितना मित्रों अवकाश है उतना शायद दुनिया के किसी भी बौद्धिक परंपरा में असहमतियों के लिए उतना अवकाश नहीं है। लेकिन शर्त यहां यह है कि आप भारत से असहमत होइए, लेकिन असहमत होने का भारतीय तरीका अपनाइए। असहमत होने का अभारतीय तरीका मत अपनाइए। साधु बहिष्कारियों, बहुत पहले संकेत किया था, साधु बहिष्कारियों। आप अपनी परंपरा में रहते, आप आपस में संवाद कीजिए, एक दूसरे की निजता का सम्मान कीजिए, एक दूसरे से असहमत होइए, लेकिन असहमत होने की जो भूमि हो वो भारतीय ही होनी चाहिए, अभारतीय नहीं होनी चाहिए। तो सर आपने इस उपक्रम के साथ जो आपने एक विचार यज्ञ संपन्न किया और इस विचार यज्ञ में मुझे भी कुछ अपने
अपनी नासमझी की आहुति देने का आपने जो मुझे अवसर दिया, मैं आपके प्रति बहुत ही आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोफेसर रघुनाथ घोष जैसे वरिष्ठ न्यायिक और अपने अग्रज वाले प्रोफेसर चित्रभाष पांडे जी के समक्ष मुझे अपने कुछ नासमझी को प्रकट करने का आपने अवसर दिया, और आप सभी लोगों ने इतने धैर्य और मनोयोग से मेरी नासमझी को सहा, इसके लिए आप सभी लोगों के प्रति साधुवाद व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायी अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। और अंतिम चरण की ओर बढ़ने से पहले मैं सर्वप्रथम अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी प्रोफेसर रमाकांत पांडे सर का। सर आपने इतनी क्यों बोलता है वैसा, कभी बता कोई रामनाथ बोलता है आज तो मैंने पूरा नाम ही प्रोनाउंस कर दिया, बहुत सॉरी सर। रमानाथ पांडे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर एंकरिंग करने का मौका देने के लिए, और मेरे नाम का सुझाव देने के लिए मैं प्रवीण कुमार यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और अंत में मैं सबसे बड़ा धन्यवाद अनीता मैम को देना चाहूँगी, क्योंकि इस संगोष्ठी के बारे में जो जानकारी है उन्होंने ही मुझे दी थी, और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि तुम पेपर लिखो और यहाँ वो पढ़ो। उसके बाद सर ने मुझे यहाँ एंकरिंग का मौका दिया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बैठे सभी विद्वज्जनों का भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि आप सभी को सुनने का मौका मिला और उससे ज्ञान में जो वर्धन हुआ है उसके लिए आप सभी विद्वज्जनों का, सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। और अंत में फाइनली औपचारिक रूप से वोट ऑफ थैंक्स के लिए यहाँ प्रोफेसर वी.एस. शुक्ला सर का को आमंत्रित किया गया था, किंतु वो किन्हीं कारणों से यहाँ उपस्थित नहीं है, तो उनकी जगह पर वोट ऑफ थैंक्स जो है वो डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव करेंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ। अरे ये तो बताइए है कौन, इनके बारे में बताइए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम नेतारम कर्मभूता ज्ञाताराम विशुद्धत्वानां वंदेतं तद्गुरुलब्धे। काफी दिनों के बाद हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं, और तीन दिनों में पहली बार मंच पे आया हूँ, क्योंकि अब इसके पीछे वजह रही है तो सर जानते हैं, बहुत अच्छे से मुझे मौका ही नहीं मिला। और सबसे पहले मैं आदरणीय मंच पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर अनिकांत शर्मा सर, प्रोफेसर रमानाथ पांडे सर, प्रोफेसर एस.पी. पांडे सर, प्रोफेसर रघुनाथ घोष सर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। गुरुजी ने बहुत सारी बातें बताई, मैं तो पूरी सेशन उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन प्रोफेसर अनिकांत शर्मा सर ने जो इसको समराइज किया पूरे सेमिनार को, उस सेशन को अटेंड करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पूरा मैं समझ गया कि इस दौरान हुआ क्या है। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ सर आपका। और सबसे पहले जो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन पार्टिसिपेंट रहे हैं, मैं व्यक्तिगत सबका नाम जानता हूँ, सबकी प्रोफाइल नोट मेरे पास है, लेकिन मंच सभागार में उपस्थित शरद जी, सचिन जी, प्रोफेसर अनिर्वाण मुखर्जी सर, अजिठान जी, मीनू तिवारी, सिद्धार्थ, अभिषेक, प्रीति, दिव्या, चारुल, राहुल, डॉक्टर राहुल राय, बड़े भाई अंकित जायसवाल जी, कमलेश, माजिद और आलोक, बड़े भाई डॉक्टर प्रखर कुमार जी, ऋषा किला जी, बड़े भाई डॉक्टर सुबोध श्रीवास्तव जी, अमित कनौजिया जी, और आप सभी। इसके साथ जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उनके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि यह एक हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि इसको किस तरह से एक एकेडमिक सेमिनार बनाया जाए। उसके लिए हर एक प्रयोग भी हमने किया बीच बीच में, कि क्योंकि वजह क्या है कि हम चाहते हैं कि चूंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं,
ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन की बात कर रहे हैं और स्वयं को अगर हम अनुशासित नहीं करेंगे, एक समय सीमा में, एक अनुशासन में नहीं रखेंगे तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। जो एजेंसी हमें फंड कर रही है, जो संस्था हमें सपोर्ट कर रहा है, पार्श्वनाथ विद्यापीठ शोध संस्थान में शोध सहायक होने के नाते, चूंकि हम लोग को हमारे यहाँ एक पत्रिका है, श्रवण पत्रिका, जिसमें बहुत से देश विदेश के लोगों का लेख आता है, उनको पढ़ने के बाद बहुत से ऐसे पेपर हमें मिलते हैं जिससे कि ये लगता है कि हमें क्या अभी करना है। तो उस पत्रिका के साथ साथ अगर जो हम संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं, उसमें भी हमें प्रयास है कि आज हम बहुत चैलेंज के दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि ये जैन इंस्टीट्यूट है, जिसमें हमारे श्रवण भी निवास करते हैं। सुबह आप लोगों ने सुना होगा उद्घाटन सत्र में हमारे महाराज जी लोग आए थे और अपने आशीर्वचनों से हमें आशीर्वादित किया था कि किस, चूंकि जैन संस्था के साथ साथ ये हमारी सनातन परंपरा भी है कि किस प्रकार से इनके उपदेशों को, संदेशों को अपने में आत्मानुशासित किया जाए और देश और वैश्विक स्तर पर अपने आप को किस प्रकार से एक विश्व गुरु तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विश्व गुरु की जो एक कल्पना है वो दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरी कल्पना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अपनी विचारधारा है, जो अपने आप में अगर एक संयमित तरीके से सब कुछ करे तो स्वयं विश्व गुरु है। विश्व गुरु होने से पहले आत्मगुरु होना है। आत्मगुरु के लिए जो गुरुजनों ने उपदेश दिया कि जो विभिन्न परंपराओं में सिद्धांत है, साथ ही जैन परंपरा में जो सिद्धांत है, त्यागवाद, अनेकांतवाद, अनर्थ, दंड व्रत, अनुव्रत, शिक्षा व्रत, इनकी जो बात की गई है उसको सबसे पहले अपने में आत्म समेकित करने की आवश्यकता है। बहुत से, मैं तो सभी लोगों को सुन नहीं पाया, लेकिन थोड़ा बहुत इनको सुना, उससे मुझे स्पष्ट हुआ कि बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया, तैयारी किया इस सेमिनार में प्रतिभाग करने के लिए, और बहुत अच्छे से पत्रों का वाचन भी किया। जिस हिसाब से मार्किंग की गई, मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा अपना पत्र पढ़ा। तो संस्था के एक सदस्य होने के नाते मैं अपने संस्था की तरफ से, संस्था के सभी एकेडमिक, नॉन एकेडमिक सभी लोगों की तरफ से आप सभी का आभारी हूं। और गुरुजनों के बारे में तो कुछ भी कहा जाए, मैं एक चीज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि कभी कभी हम लोग का सेशन बहुत लंबा चला है, तो क्षमा प्रार्थी तो होना नहीं है, क्योंकि ज्ञान की ये धारा है, तो इसमें कुछ देर तक गोता लगाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग बहुत रियल और रेयरेस्ट केस में हमको सुनने को मिलते हैं। तो इन गुरुजनों से आप लोग कभी भी ऐसा मत सोचिएगा, या आप हमेशा प्रयास करें कि कितना ज्यादा इनका हमको श्रवण करने का अवसर मिले। तो इसके साथ साथ मैं हमारी तरफ से, अगर हमारे कहने का तात्पर्य है कि हमारी संस्था, हमारे किसी भी सदस्य की तरफ से कोई गलती हुई होगी तो मैं स्वयं क्षमा मांगता हूं कि आप लोग ऐसा कुछ यदि महसूस किया हो तो। इसलिए मैं अंततः अपनी बात को विराम देने से पहले सरकार सभी गुरुजनों का हृदय से आभारी हूँ। हमारे कैमरा के जितने भी टीम मेंबर हैं, आप सभी का हृदय से आभार। आपने बहुत ही सक्रियता और तल्लीनता से इस त्रिदिवसीय सत्र को कवर किया और कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होने दी। अगर हमारी तरफ से भी कुछ गलती हुई होगी तो आप क्षमा करें। भोजन में कोई चूक हुआ होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसलिए बाकी आप सभी हाई डे के लिए आमंत्रित हैं। मैं हमारी तरफ से कोई पुनः गलती हुई तो माफ कीजिएगा।
बहुत रहा, बहुत माने अलग प्रकार का, जैसा कल्पना नहीं की उससे ज्यादा लग जाएगा वो है